on outcome-based education and curriculum, organized by State Board of Technical Education, Patna, Bihar, in association with National Institute of Technical Teachers Training and Research, Bhopal. Now, I would like to invite Dr. Chandrasekhar sir, Secretary, State Board of Technical Education, Government of Bihar, please come on the stage and address this gathering and the workshop. Sir, please. Thank you, madam. Good morning, everybody. Although formal inaugural session is slightly delayed by 11 a.m. but हम लोग अपना समय नहीं गंवाएंगे और ट्रेनिंग सेशन हम लोग अपने समय पर स्टार्ट कर लेंगे, because numbers of academic calendar issued by AICTE and all are changing minutes to minute behind us कि अपने समय पर हम लोग रहे, और टीचर का सबसे पहला काम है पंक्चुअलिटी, समय पे काम स्टार्ट हो जाए और समय पे काम कंप्लीट हो जाए. सो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लोग अपना ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे. ट्रेनिंग सेशन के पीछे जो स्ट्रैटेजी है दैट हम लोगों ने जो सिलेबस का बैकग्राउंड आप समझ गए होंगे. एग्जाम रिफॉर्म पॉलिसी 2018 जो AICTE के द्वारा एक मैंडेटरी एसेंशियल क्राइटेरिया रखा गया है इंस्टीट्यूशन को लागू करने का. आर यू अवेयर, एवरीबॉडी अवेयर? Is it essential or desired? Essential criteria or desired criteria? Essential criteria. Or everybody is aware that if you will not fulfill the essential criteria, AICTE may take punitive action against the institution. तो उस दिशा में हम अपने आप को तैयार करने के पहले एग्जामिनेशन रिफॉर्म पॉलिसी को समझेंगे. एग्जाम रिफॉर्म पॉलिसी सब आदमी को शेयर्ड है, ग्रुप में सब आदमी को शेयर्ड है. इस ग्रुप में ब्रांच वाइज गूगल क्लासरूम बनाए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, हर ब्रांच के कोऑर्डिनेटर हैं, and the rest of faculty member of that particular branch of all the institutions are member of that group. So I'll request all our respected principals to instruct their institutional faculty member to join the group as per their branch. Faculty members may be regular, contract and even guest faculty, because जिनसे हम पढ़वाते हैं और जिनसे अध्यापन का कार्य लिया जाता है उन सबको कोच करना ही हमारा प्राइम उद्देश्य है. जब तक हमारे टीचर इस आउटकम्स के बारे में नहीं समझेंगे, उसको लर्निंग प्रोसेस में, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में नहीं अंगीकार करेंगे, तब तक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती. सिंबॉलिक तौर पे हर ब्रांच के 4 टीचर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में फेस टू फेस जुड़े हैं, जो हमारे निटर भोपाल के विद्वान प्राध्यापकों के सहायता से करिकुलम को
रिमॉडल करेंगे ओबीई के अनुरूप, जो भी उसमें रैशनल है, कोर्स आउटकम्स है, प्रोग्राम आउटकम्स है, प्रैक्टिकल आउटकम्स है, ब्लूम्स लेवल टेक्सोनॉमी है, इन सारे चीज़ों को ऐड करेंगे ताकि वो हमारे सिलेबस में टेक्स्ट के रूप में दर्शाया जा सके, ताकि जो भी नए, अभी जो हमारे बीच more than 1,000 of faculty members are going to join from the Provincial Service Commission. They should aware कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस में सिलेबस लागू है और जिस सिलेबस से हमको पठन पाठन का कार्य कराना है उसमें इसकी महत्ता क्या है। जब तक इन सारे चीजों को नहीं करेंगे हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस को एनबीए का एक्रेडिटेशन नहीं मिल सकता, और जब तक एनबीए का एक्रेडिटेशन नहीं मिलेगा तो जैसा आप सभी जानते हैं, वाशिंगटन अकॉर्ड 2014 के सिग्नेटरी होने के नाते इंडिया ने अपना एक्रेडिटेशन बॉडी एनबीए बनाया, और जब तक इनका मान्यता संस्थान को नहीं है, उनके द्वारा प्रदत्त डिग्री की मान्यता इन सभी सिग्नेटरी कंट्रियों में नहीं मिलेगी। आगे के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको प्रदान किए जाने वाले जो डिप्लोमा हैं वो भरसक प्रयासरत हम लोग रहेंगे कि उनको एक एनबीए एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन से मिले। हमें उसके लिए बहुत प्रयास नहीं करना है, जिसके लिए बिहार फेमस है। आज से नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी के समय से हमारा शिक्षण व्यवस्था इंडिया के किसी भी स्टेट से अच्छा है। हमारे स्टूडेंट्स और टीचर का जो मेंटल एबिलिटी, जो एप्टीट्यूड है वो सबसे अव्वल है। जरूरत है डॉक्यूमेंटेशन की, जिस पार्ट को हम लोग लैक करते हैं। इनफैक्ट जब हम पढ़ाने जाते हैं तो हमें लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं इससे अच्छा कोई टीचर पढ़ा ही नहीं सकता है, तो फिर हमको क्लास नोट बनाने की क्या जरूरत है, और जो बना हुआ क्लास नोट है उसको फाइल में रखने की क्या जरूरत है, और जो फाइल है उसको हमको किसी दिखाने की क्या जरूरत है। बट जरूरत है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। वो डॉक्यूमेंटेशन हमें करना है कि हमने क्या पढ़ाया, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, हो सकता है आप सभी अव्वल हैं, आप सभी अपने विद्याओं में विद्वान हैं, आपके शिक्षण कला कौशल पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, परंतु आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो आपके साथ जुड़े हैं कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी, जो आपके साथ जुड़े हैं गेस्ट फैकल्टी, जो आपके साथ नए जुड़ने वाले हैं, इंडक्ट होने वाले हैं, नए आने वाली पीढ़ी है शिक्षक का, वो आपकी फाइल देख के वो अपना पैटर्न डिसाइड करे, और यही शिक्षक का काम है। इसलिए जब तक हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं कराएंगे तब तक एनबीए एक्रेडिटेशन नहीं मिलेगा। और कोई जरूरी नहीं है कि एनबीए एक्रेडिटेशन के लिए जो सेट पैटर्न है उसी का डॉक्यूमेंटेशन हम बनाए, जो आप रात दिन करते हैं उसका भी डॉक्यूमेंटेशन बनाए और आप एनबीए को शो करें। एनबीए के एक्रेडिटेशन में कहीं गूगल क्लासरूम या एलएमएस का जिक्र नहीं है, बट वी आर डूइंग, सो वी विल कीप दिस documentation ready for them. Yes, we are teaching the students in blended mode and we are using the Google Classroom even if we are taking the offline class for their submission of assessment, project work, project rubric, etc. हम सभी प्राचार्य महोदय से एक बार अनुरोध करेंगे कि अपने सारे फैकल्टी मेंबर को इंश्योर कर ले कि वो गूगल क्लासरूम से जुड़ जाएं, और अपने कोऑर्डिनेटर से गूगल क्लासरूम का उनको एड्रेस मालूम हो गया होगा, और जो लर्निंग पाथवे उसमें दिए जा रहे हैं, जो लर्निंग मटेरियल उसमें पोस्ट किए जा रहे हैं, तो उसको देख ले। क्योंकि सभी फैकल्टी मेंबर्स को एट ए टाइम हम लोग यहाँ नहीं बुला सकते, हमारे वर्क कार्य चल रहे हैं, पठन पाठन का कार्य सभी पॉलिटेक्निक में चल रहा है, समय की कमी है, हमें अक्टूबर से पहले सेशन खत्म करना है, इसलिए वो सभी अपने वर्क कार्य के बाद ऑनलाइन क्लास का फायदा उठाएंगे। जो हमारे ब्रांच कोऑर्डिनेटर हैं
मैकेनिकल के श्री प्रोफेसर आशीष गौरव, इलेक्ट्रिकल के प्रोफेसर नीतीश चौधरी, सिविल के प्रोफेसर राहुल रोहित, इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे नए एचओडी साहब डॉक्टर केएल पुष्कर, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर विनोद, बेसिक साइंस और ह्यूमनिटी के भी क्लासरूम अलग से बने हैं। बेसिक साइंस का है ना, और ह्यूमनिटीज का भी। कोई भी फैकल्टी मेंबर जो सिलेबस में सीओपीओ का प्रैक्टिस अपने क्लासरूम में कर रहे हैं, चूंकि नीटर भोपाल से उन्हें 2 फेज का इंडक्शन 1 और इंडक्शन 2 का ट्रेनिंग कराया जा चुका है, इसलिए सभी आउटकम बेस्ड एजुकेशन से अवगत हैं। जरूरत है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसको उसमें इनकॉर्पोरेट करना, सो दैट कि आप जो करेंगे वही स्टूडेंट्स और हमारी प्लेसमेंट एजेंसियां उसको देख के आगे का अपना स्ट्रेटेजी सेट करेगा। ये डॉक्यूमेंटेशन का कार्य हम लोग करेंगे। आज जैसे जैसे हमारा यहाँ आए हुए 4 व्याख्यातागण किसी एक ब्रांच के हर सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट का सीओपीओ मैपिंग करेंगे, और जो ऑनलाइन से जुड़े हैं उनका कोऑर्डिनेट करेंगे कि रेस्ट ऑफ द पेपर्स का वो करके आपको दिखाएं। कोई प्रॉब्लम होने पे हमारे जो विशेषज्ञ हैं निटर भोपाल के मैडम और सर आए हैं दीक्षित साहब, उनसे बात करेंगे और सॉल्यूशन निकाल के यहीं पे लैपटॉप में अपना फाइनल करेंगे। वर्ड की कॉपी भी उनको दी हुई है, पीडीएफ भी दी हुई है, यहाँ पे प्रिंटर है, किन्हीं को परेशानी होने पे प्रिंट करेंगे, साइन करेंगे। और हमारे सिलेबस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजय कुमार इज हियर फ्रॉम द स्टेट बोर्ड। You can hand over the final syllabus to him, so that after end of the session we can publish the final version revision 1 of syllabus 2020. हमारे समझ से हमने स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर लिया है। इस स्ट्रेटेजी में किसी आदमी को वैल्यू एडिशन करना हो तो is most welcome. Anyone? नहीं, कोई क्वेश्चन भी नहीं है। सो लगता है सब ठीक है और सब तैयार हैं। आज अगर आप टारगेट रखेंगे तो कुछ सेमेस्टर का कुछ पेपर आज शाम तक ही रिवीजन 1 वर्जन पब्लिश हो जाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू। Thank you so much, sir. Now, I would like to request the NITTR Bhopal team, Dr. Sharad Kumar Pradhan, coordinator of this program, Professor Mechanical Engineering, Dean Corporate and International Relationship, NITTR Bhopal, Dr. R.K. Dikshit, Professor Management, Department of Management Education, Dr. Anju Rawley, Professor and Head, Department, Curriculum Development, Assessment, Education, to start this session. Please. In between, I will start because all 3 cannot speak. Good morning. So we are from NITTR
Sir, be seated. So we are from NITTR Bhopal. Hope you are knowing this organization. It's a central government organization, basically meant to do training of teachers of institute. It has been established in 1965, and from last 65 years, we are catering to different states of our country. But from last 2 years, we are also in touch with the state of Bihar. Until now, almost 20 to 25 different programs through different platforms we have already organized. This NITTR is having a specialty in pedagogy and different educational reforms. We have got different departments, and those departments are being organized in such a manner to cater the different needs of technical education system, particularly when we talk of pedagogy. NITTR Bhopal has developed NITTR MOOCs system in which a fresh teacher can go through these 8 modules, and after going through these 8 modules, at least he or she will be in a position to deliver the content effectively. Because as you know, you people are intelligent enough. Why? Because you belong to the land which is known for knowledge center of our country. It was known as a knowledge center of our country, and we are like proud to be here to interact with you, to discuss something with you on education itself. तो मेरे लिए गर्व की बात है, मेरी टीम के लिए गर्व की बात है कि हम बिहार में हैं और हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं. Because it is known from last like many years that Bihar is the like key center, knowledge center, intellect center of the country, and not for the country, it is like globally known. So we are proud to be here. As far as NITTR is concerned, we have developed NITTR MOOCs, we have developed PG accreditation MOOCs, we have developed UG accreditation MOOCs, and we have developed diploma accreditation MOOCs. So all 3 MOOCs are available on our website and on the SWAYAM platform of Government of India. This particular program is related to outcome-based education and curriculum. So it is going to be an orientation for all of you to know what are the different OBC elements, outcome-based curriculum elements. Because if you are not knowing that there are 15 different elements which has to be taken care of. So those 15 elements are going to be incorporated in your curriculum. Then only your curriculum will become presentable in line with OBE and in line with NBA requirements. So this program is going to make you aware, going to orient you in that direction. Why we are doing it? Because the students are coming to your system. They are investing their 3 years or 4 years if they are doing UG. Their parents are investing money and efforts. As teacher, you are investing your 3 years dedicated intellect. In spite of all these sincere efforts, the product that we are producing, you and me both, is not good for industry. Industry is saying that they are not employable. It means we have to rethink over our complete procedure. And while rethinking, the country found that there is a need to transform from input-based education to outcome-based education. अभी तक जो हम कर रहे हैं वो इनपुट बेस्ड एजुकेशन है और उससे पैराडाइम शिफ्ट है, कंप्लीट शिफ्ट है टुवर्ड्स आउटकम बेस्ड एजुकेशन. एंड इन आउटकम बेस्ड एजुकेशन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन लाइन विद आउटकम्स. आपको हर चीज के लिए आउटकम्स बनाना है और जब आप बनाएंगे तो एनबीए कहता है डू, से, प्रूव एंड इंप्रूव इट. पहले आपको कहना है कि दीज आर द आउटकम्स, then you have to do it. You have to give teaching learning activities to complete those outcomes, and then you have to assess them because you have to prove it whether the outcome has been achieved or not. And once you are proving it, next year you have to improve it. So it's a do, say, prove it, improve it cycle, which is generally known as continuous improvement cycle. So everybody who is under OBE, under the umbrella of OBE, has to go through this say, do, prove it, improve it. And NITTR is there to help you out. This is not a like single workshop work. It is like huge work. But slowly and gradually, if we put efforts in a controlled manner,
definitely Bihar is also going to have its complete outcome-based curriculum within, say, 1 year. But that requires sincere efforts from your side. Because SBT or DST, they can make policies, they can fund, they can organize such workshops, they can call us, they can call you also. But to create outcome-based curriculum, your sincere efforts, knowledge, intellect is required. So for that, I would request all you to be sincere here, because this is a program with output. Because if we are talking of outcome-based education, this program has also got certain outcomes. And without fulfilling those outcomes, my colleagues are not going to be satisfied, and they will tell me at the end of the program, Pradhan, you are not successful and your program is a failure. So to keep my image up, it is your duty to make that thing successful. There are different outcomes that we have framed. I'm going to project that also. And if you put your sincere efforts, definitely we'll be able to complete everything. I am coordinator of the program. Coordinator means like looking after the different activities. Junior most with the team. Seniors are there to control me, monitor me, guide me. But if you have any problem related to the program, related to the content, related to certain expectations which are not being covered by us, you are most welcome. You can directly contact me and we will try to modify it according to your need. I am coordinator and I am also professor of mechanical engineering department at NITTR Bhopal and currently holding the post of Dean Corporate and International Relations. Because after this globalization and becoming signatory member of Washington Accord, as said by Dr. Singh, we have to look globally because we are not producing workforce for India. We are also producing workforce for complete globe. In fact, our engineers, our technicians, our researchers, they are going globally and contributing to their best. And that is why today we are claiming and we are proud to claim that as far as IT is concerned, computer science is concerned, India is at top. Because of our workforce only, other countries are prospering and growing. So I am Dean of Corporate and International Relations. Basically a mechanical engineer, did my BE, MTech, and finally PhD in mechanical engineering from IIT Delhi. Those who are from mechanical side, I am from design domain. So I am generally creating designs, and that is why I have got 5 patents. Got few SCI journal papers, and recently completed one Department of Science and Technology New Delhi project of road cum rail vehicle. It is a vehicle which can move on roads as well as rails for cleaning purpose. I have also contributed in UG accreditation, PG accreditation, and I am evaluator of NBA for South India portion of our country. So till now I have almost completed 35 visits as evaluator, and few chances I have got to become chairman also of the team. This is a brief introduction about me. With me, I am having senior professors, Professor R.K. Dikshit and Professor Anju Rawle. They are from Civil Department and Curriculum Department. I would request Professor R.K. Dikshit sir to please introduce himself so that the participants may be in a position to know that who are handling them, who are guiding them, who are like facilitating them with the knowledge. Professor R.K. Dikshit. A very good morning to all of you. आदरणीय सिंह साहब, प्रशिक्षण में भाग ले रहे सभी प्रशिक्षार्थी एवं YouTube से जुड़े हुए बिहार के सभी प्राचार्य, शिक्षक और बाकी तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को NITTR भोपाल और मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि प्रधान साहब ने बताया कि पूरी तरह से विश्व में बदलाव आ रहे हैं। आज से 20 साल पहले जो टेक्नोलॉजीज थी वो आज नहीं है। जब मैंने इंजीनियरिंग किया था और आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो कल वो एवरीथिंग हैज चेंज्ड। ना उस समय इंटरनेट था, ना कंप्यूटर से जब मैंने इंजीनियरिंग किया था उसमें कोई भी चीज़ नहीं थी, और आज सभी कुछ बदल गया है। और इस बदलाव में के समय यह प्रोग्राम होना एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं और उस बदलाव के बहाव के साथ हम जाना चाहते हैं, और इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत जो है वो है गुणवत्ता की। गुणवत्ता के बिना हम कहीं नहीं जा सकते,
और accreditation is nothing but a mechanism for quality assurance and improvement. तो ये प्रोग्राम बहुत सही समय पे आयोजित किया जा रहा है. जहाँ तक मेरा सवाल है, I am basically a civil engineer. I have done my MTech and PhD in geotechnical engineering from IIT Bombay. I had been there in civil engineering for a long time. उसके बाद मुझे मैनेजमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया because I have lots of experience in management of educational projects also. During these years, I have worked in industry as a geotechnical consultant. I have designed lots of foundation, done lots of geotechnical investigation, etc. Later on, I shifted from industry to education. तो उसके बाद मैंने 1995 में NITTR भोपाल को ज्वाइन किया, जिसके बाद मुझे बहुत सारी परियोजनाओं से जुड़ने का मौका मिला, जिसमें कि अगर आपको याद होगा 3rd टेक्नीशियन एजुकेशन प्रोजेक्ट जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा आयोजित था, उसकी डिजाइन मैंने की थी. उसके बाद टेक्क्यूब प्रोजेक्ट भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा असिस्टेड था, उसकी डिजाइन भी कभी पार्ट में था. तो आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन बोथ एक्रेडिटेशन एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स. जहाँ तक एक्रेडिटेशन का सवाल है, 2009 से मैं उनका इवेल्युएटर हूँ और करीब 100 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कॉलेजेस दोनों में एज ए चेयरमैन, ऑल्सो एज एन एक्सपर्ट इवेल्युएटर आई हैव गॉन देयर. वॉशिंगटन अकॉर्ड की 2 बार टीम आई है यहाँ पे अभी तक, एक बार 2013 में और एक बार 2019 में. दोनों बार मुझे एनबीए की तरफ से मौका दिया गया कि आई शुड डिफेंड इंडिया. I should go as an evaluator and we will be evaluated by the Washington Accord team whether India should be given Washington Accord or not, or it should be continued or not. So after 6 years for continuance also I had been there. So accreditation की जो terminology है, accreditation की जो process है, उसके बारे में आपको अगर कोई भी question पूछते हैं तो सभी लोग आंसर दे सकते हैं. पर अगर आपको कोई भी विजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या कोई और भी इस तरह के क्वेश्चंस की क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या चीज इवेल्युएटर्स देखते हैं, चेयरमैन देखते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी एनी क्वेश्चन. आई वुड try to do to the best of my ability to satisfy your queries. Thanks a lot. Thank you, sir. We are like feeling proud to have with you with our team. Now I would request Professor Anju Ravle madam to please introduce herself. Thank you, Dr. Sharad. Welcome all the participants, respected Secretary Sir, and participants who have joined online also. Myself, Dr. Anju Ravle. I am Professor and Head of Department of Curriculum Development and Assessment Education. I am in this institute for the last 32 years and had the opportunity to work in different multidisciplinary projects of curriculum, assessment, laboratory work, accreditation, and so many other projects. Recently, I have coordinated the curriculum development project of Chhattisgarh state for a 15 diploma program. So it was a huge project, and faculty, around 25 faculty from NITTR Bhopal were involved for design and development of the curriculum on the lines of accreditation. As Dr. Sharad was saying, that it's not this program is only an orientation workshop, or you can say the awareness workshop for design of the curriculum in lines with the NBA accreditation. So I think that you can do. Basically, I am a PhD in ceramics and refractory. I did my PhD from CSIR. And in this program, I think about this program, I just want to mention a few things. I think we had a lot of discussion on the last week regarding this program. So this program will be it would be a draft, you can say, whatever the existing curriculum you have, and we will be incorporating the philosophy of accreditation and integrating, trying to prepare the outcome-based curriculum. And definitely, because we have not incorporated the National Education Policy 2020,
but we would like to, means we were wanting to have the input on this also, because NEP requirement is also to be incorporated in the futuristic curriculum. So, okay, I will try to mention some 5 minutes when I would be taking my session. But every curriculum which is to be designed in near future, that has to be in line with the NEP, ICT norms as per the requirement of accreditation and other things. So I think we would be interacting in the different sessions. Thank you so much. Thank you, madam. And really, I missed that thing that NITTR has developed outcome-based education, outcome-based curriculum for 4 different states. We have started with Gujarat state, then Maharashtra state, then Chhattisgarh state, and again, like second cycle of Gujarat state is in line. And hopefully, with these efforts, you people will also be in a position to develop your curriculum in line with NBA. So this is all about the team, about NITTR Bhopal. The next step is to know about the program, how we have scheduled the different sessions, and what are the outcomes expected out of the program. And then I would request you people to introduce yourself. Can you please project? Just scroll it down for the direct schedule, third page, last. That's little bit up. So this is how we have planned these sessions. As I told you, this is related to, I would request all the participants to please switch off your mobile or put it on vibration mode or silent mode, so that the deliberations which are going to happen from this side or other side are going to benefit everyone. So this is what we have planned. As I told you, this is outcome-based education and curriculum-related program. It is going to talk about the different aspects of accreditation, and it will also talk about the outcome-based curriculum requirement for accreditation and outcome-based education both. So the very first session is your registration, inauguration, and program brief. Right now, I am going to tell you about the program. So that is called program brief. The second one is philosophy of outcome-based education and curriculum. So Professor Anju Rawle, she is going to talk about the philosophy of outcome-based education and curriculum, so that you can align yourself that what you feel is what you feel and what we have, try to match or map with that, that this is the outcome-based curriculum we are talking about. Then the next session is of Professor R.K. Dikshit. He is going to talk about the different key terms used by NBA, starting from vision, mission, POs, PSOs, PEOs, and COs. So he is going to tell you about the different terms which are going to be used in accreditation, particularly with NBA accreditation. Then the last session is going to be taken up by me. I'm going to talk about the different criteria of NBA. For diploma program, there are 9 criteria, so I'm going to talk about that. And I'm also going to talk about the award of accreditation for 3 years and 6 years. So if you complete all those 9 criteria, how you are going to get accreditation for 3 years and 6 years. Tomorrow, Tuesday, we are going to talk about the domains of learning. As you are already completed induction phase 1 and 2, so you are knowing that there are 3 domains of learning. Whenever you say anything, whenever you instruct to your student, the learning is happening in 3 different domains. One is cognitive, the second one is psychomotor, and the third one is affective. So I myself is going to take care of the cognitive part. So I will tell you the different cognitive taxonomy levels, and then we will try to frame classroom session outcomes. As I told you in outcome-based education, whatever you do, even if you are taking a class session, you must have some outcomes. नहीं तो आप पहले जब क्लास में जाते थे तो आपका इंटेंशन रहता था आज मैं 2 टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा. अब आपको 2 आउटकम अचीव करवाना है फ्रॉम योर स्टूडेंट. सो नाउ द फिलॉसफी हैज चेंज, ट्रीटमेंट इज गोइंग टू चेंज. आपको पढ़ाना नहीं है, आपको सिखाना है. सिखाना इज मेन आफ्टर ओबीई. पढ़ाने को तो सब लोग पढ़ा सकते हैं, इसलिए आजकल हम लोग जब बोलते तो हम बोलते हैं कि हम यहाँ सिखाने आए हैं. आप सीखे तो हमारा सक्सेस है, अदरवाइज हमारा फेलियर है. So under that session, we are going to tell you the classroom level outcomes that you have to frame for each session. For example, in one semester, you are having say 14 weeks. 14 weeks भी अगर ले लें, तो 14 weeks में suppose your course is having say 3 lectures. So 3 into 14, 42 sessions are going to be there.
42 सेशंस आप करीब करीब पढ़ाते हैं, 40 से 45 सेशंस आप एक सेमेस्टर में पढ़ाते हैं, और हर सेशन में अगर आप 2 आउटकम फ्रेम करेंगे तो आप करीब 80 सेशन क्लासरूम सेशन आउटकम्स यू आर गोइंग टू कंप्लीट ड्यूरिंग 1 सेमेस्टर फॉर 1 कोर्स. Then we have another session by Professor Anju Rawle again. She is going to discuss the affective domain and psychomotor domain. And again, you are going to be asked to develop learning outcomes for psychomotor domain particularly, और उसको हम बोलते हैं lab session learning outcomes. क्योंकि जनरली बच्चा 2 जगह आपसे ज्यादा इंटरेक्ट करता है, one is classroom, another one is lab. तो क्लासरूम में लर्निंग सेशन आउटकम्स मैं आपको लिखाऊंगा, और लैब के रिलेटेड लर्निंग आउटकम्स प्रोफेसर रावले इज गोइंग टू टेल यू. और जब हम लैब के लिए लर्निंग आउटकम्स लिखते हैं तो उसमें साइकोमोटर पार्ट डोमिनेटिंग रहता है और इफेक्टिव भी उसमें रहता है, बिकॉज दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दी सेफ्टी प्रैक्टिसेस, दी क्लीनलीनेस, दी पंक्चुअलिटी एंड अदर थिंग्स आल्सो. Then we have last 2 sessions which are very much important because I have already seen your curriculum, the current curriculum I have already seen. It has got certain gaps, उसमें कुछ gaps हैं, और मैं थोड़ा पोलाइटली कह रहा हूँ कुछ गैप है, कुछ थोड़े ज्यादा गैप्स हैं जिनको हमें फिल करना है, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू क्रिएट आउटकम बेस्ड करिकुलम. द वेरी फर्स्ट मिसिंग कंपोनेंट इज कोर्स आउटकम्स. आपने बना रखे हैं, उसके लिए वो नहीं है कि आपने बनाए नहीं है, आपने कोर्स ऑब्जेक्टिव्स भी लिख रखे हैं और कोर्स आउटकम्स भी लिख रखे हैं, बट हाउ टू राइट इट करेक्टली, बिकॉज अल्टीमेटली योर प्रोडक्ट शुड बी good for industry, should be ready for industry. So now we are going to write the same course outcomes keeping industry in mind. तो वो जो 2 सेशंस हैं उसमें हम आपके सीओज जो अभी सीओज हैं उनको करेक्ट करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू मेक देम करेक्ट फॉर पर्टिकुलरली आइडेंटिफाइड कोर्सेज. क्योंकि अगर आप एक ब्रांच ले लें, एक प्रोग्राम ले लें, फॉर एग्जांपल डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसमें 30 कोर्सेज होते हैं. 3 साल में आप करीब करीब 30 कोर्सेज अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं. 30 कोर्स का मतलब है अगर 5 सीओज पर कोर्स भी ले लें ऑन एन एवरेज, सो देयर आर 150 सीओज ही हैज टू कंप्लीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल और सिविल. करीब 150 सीओज वो कंप्लीट करेगा. उस 150 में से करीब करीब हम 30 सीओज, 30 कोर्सेज के सीओज तो यहाँ पर टेक केयर करेंगे, पर वो पूरे मैकेनिकल से नहीं होंगे. मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जहां से भी फैकल्टी है उससे रिलेटेड सीओज वी आर गोइंग टू टैकल. तो करीब करीब 3 डिफरेंट कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, एंड देन वी विल ट्राई टू डेवलप दी सीओज रिलेटेड टू दोज कोर्सेज. और उन कोर्सेज को हमें मॉडिफाई करना है. तो पहले हम आपको इनपुट देंगे कि एक अच्छा सीओ कैसे बनाते हैं, एंड देन यू आर गोइंग टू कंप्लीट इट. इसलिए वहां पर 2 सेशंस हैं. प्लीज स्क्रॉल इट अप. ऑन नेक्स्ट डे, दैट इज 31st of August, Wednesday, I am going to tell you the course articulation matrix, जिसको हम बोलते हैं COPO मैपिंग मैट्रिक्स. बड़ी फेमस है कि जो आपने CO बना लिए, अब आपको उनको PO से मैप करना है. और PO आप नहीं बनाते, PO इज ऑलरेडी गिवन बाय NBA एंड देयर आर 7 POs गिवन बाय NBA. तो वो जो 7 POs हैं और आपके जो 5 COs हैं, इन दोनों को मैप करना है, एंड दिस मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी प्रोनाउंस्ड एज कोर्स आर्टिकुलेशन मैट्रिक्स. तो हम कोर्स आर्टिकुलेशन मैट्रिक्स बनाएंगे उन्हीं कोर्सेज की जो ऑलरेडी जिनके हम सीओज कंप्लीट कर चुके होंगे, जिनके करेक्ट सीओज बन चुके होंगे, उसकी फिर ये कैम्स बनेंगी. तो अगर 30 कोर्सेज हमने सेलेक्ट किए फ्रॉम डिफरेंट programs, branches, then we are going to have 30 different course articulation matrices. Then we have course plan. Next section is course plan, because once you have completed with COPO mapping, then we must know the course plan, how to like implement it. तो फिर हमारे पास कोर्स प्लान रहेगा, और जहां पर भी लर्निंग टास्क लिखा हुआ है, सॉरी अपर वन, उसके बाद है सजेस्टेड फॉर्मेट फॉर करिकुलम. तो अभी जो आपका करिकुलम है, एग्जिस्टिंग करिकुलम, उसकी एनालिसिस करना है, उसके गैप्स देखना है. बट गैप या एनालिसिस आप तब कर सकते हैं जब आपको स्टैंडर्ड पता हो कि स्टैंडर्ड क्या है, सही फॉर्मेट क्या है. सो वी आर गोइंग टू टेल यू दी करेक्ट फॉर्मेट ऑफ आउटकम बेस्ड करिकुलम विद डिफरेंट एलिमेंट्स, और वो हम आपको समझाएंगे कि क्या एलिमेंट्स है और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच एलिमेंट. एंड विद दैट यू हैव टू एनालाइज योर करिकुलम कि आपके करिकुलम में कहाँ गैप्स हैं. धीरे धीरे हमको उसको फुलफिल करना है. दैट इज द इंटेंशन बिहाइंड सच वर्कशॉप्स. इन लर्निंग टास्क 5 यू आर एनालाइजिंग योर ओन करिकुलम, और वो तभी आप एनालाइज कर सकते हैं जब आपको स्टैंडर्ड, असली उसके पहले का गोइंग टू टेल यू द स्टैंडर्ड OBC फॉर्मेट. OBC मींस आउटकम बेस्ड करिकुलम. साथ में मैडम आपको, प्रोफेसर अंजू आपको ये भी बताएंगे कि स्टडी स्कीम और असेसमेंट स्कीम क्या होना चाहिए एज पर एग्जामिनेशन रिफॉर्म पॉलिसी. जो आप AICT की एग्जामिनेशन रिफॉर्म पॉलिसी 2018 सुन रहे हैं, उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट पे ज्यादा फोकस है. और फॉर्मेटिव अभी जो मैं आपका देखा हूं, उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए 2 चीजों को दिया है आपने. 1 इज 10 मार्क्स जो टीचर देता है, और 20 मार्क्स फॉर योर
मिड सेमेस्टर एग्जाम्स या जिनको आप क्लास टेस्ट बोलते हैं, तो 20 मार्क्स फॉर देम एंड 10 मार्क्स फॉर टीचर, तो 30 मार्क्स का आपने वेटेज दिया हुआ है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल फॉर्मेटिव असेसमेंट विच शुड बी देयर. It has got n number of components. उन components को समझेंगे. Then you will analyze your curriculum, and then finally we will switch over to course evaluation plan. Course evaluation plan means जो आपने formative और summative assessment के titles निकाले हुए हैं, direct and indirect both, then you have to plan them, then you have to give weightage कि attendance का इतना weightage है, micro project का इतना weightage है, seminar का इतना weightage है, classroom test जो आप ले रहे हैं या mid semester test ले रहे हैं उसका इतना weightage है, आप जो assignments देते हैं उनका ये weightage है. So all those things are going to be written down with their weightage so that we will create a complete evaluation plan or assessment plan which should be in line with the examination reform policy 2018 AICTE. Then we will have course plan. क्योंकि जब आपने सारी तैयारी कर ली तो आपको पता होना चाहिए कि how to implement it. So course plan is nothing but the implementation, but in line with OBE. इनपुट बेस्ड एजुकेशन पे नहीं, आउटकम बेस्ड एजुकेशन के हिसाब से कोर्स प्लान तैयार किया जाएगा. Then we will tell you accreditation part, that is called attainment. क्योंकि जब आपने COs बना लिए, आपने डू कर दिया, COs बना के LOs भी बना लिए, वो भी डू है, क्लासरूम सेशन दोनों के अब आपके पास अवेलेबल है. दैट इज कॉल्ड एज डू पार्ट, सॉरी से पार्ट. से के बाद आ रहा है डू पार्ट. तो डू पार्ट में आपने उसको पढ़ाया बिकॉज यू हैव गॉट द कोर्स प्लान. तो आपने डिफरेंट एक्टिविटीज यू हैव कंप्लीटेड इनसाइड द क्लास, इनसाइड द लैब. दैट इज डू पार्ट. Then prove part. Prove part means whether the outcomes are being achieved or attained or not. ये question mark. तो आप assessment करते हैं. So that part comes under attainment levels, setting targets, and attainment of COs. So Professor R.K. Dixit is going to tell you how to find out the attainment of COs. मैंने आपको course articulation matrix बनाया हुआ है. The same course articulation matrix is going to be utilized to find out the attainment of CO. So in this session we are going to do the attainment of different COs that you have already finalized. Then comes the program level, क्योंकि course के ऊपर program level है. If you look at the NBA hierarchy, you will find vision and mission on the top, then PEOs, then POs and PSOs, then COs, and then classroom outcomes and lab session outcomes. तो जब आप CO complete कर लेते हैं तो फिर PO की बारी है. So then I am going to tell you how to prepare program articulation matrix. Program level की एक matrix बनती है. If you take example of diploma in civil engineering, there are 30 matrices which are called as CAM, and there is one matrix which is going to be called as PAM, program articulation matrix. वो हम create करेंगे. After creating that program articulation matrix is going to be utilized to find out attainment of POs. तो PO attainment के steps हैं, procedure है. I am going to tell you those procedure. Direct attainment tools भी हैं, indirect attainment tools भी हैं. I am going to tell you both the tools. The last day, we are telling you how to prepare the course file. As suggested by Dr. Singh, you must know how to document the things. आप जो 6 महीने में एक सेमेस्टर में काम करते हैं, उसके लिए एक फाइल तैयार करना पड़ती है. Because when you are interacting with NBA evaluator, you are going to get only 5 minutes. As a faculty, you are only going to get say 5 to 10 minutes अपना वर्क दिखाने के लिए. In that 5 to 10 minutes, you cannot tell everything to that evaluator. आपके पूरे 20 साल या 6 महीने जो आपने पढ़ाया है, वो आप 5 मिनट में उसे बताना चाहते हैं. It is not possible without the course file. So you must have the course file, जिसको हम कहते हैं आपका पोर्टफोलियो. आप अपना पोर्टफोलियो ओपन करेंगे, आप बताएंगे सर दिस इज माय कोर्स, दीज आर द कोर्स आउटकम्स, दिस इज द करिकुलम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसमें सारे चीजें लगी होंगी और वो जो उसके अंदर आप मटेरियल रखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी इन लाइन विद अ लिस्ट. हमारे पास एक लिस्ट है which is going to tell you कि what are the ingredients of a course file. Course file के अंदर क्या क्या होना चाहिए. So you have to arrange everything, every material of yours which you have used during teaching learning to create your course file. Then comes the validation of draft course outcomes, draft sample course document, curriculum document. आपने जो curriculum document बनाया है, but here is like there is word of caution. मैंने आपको बताया कि curriculum document comprises of 15 different elements. उसमें से कुछ तो हम यहाँ कवर कर पा रहे हैं, कुछ छूट रहे हैं, पर जो हम कवर कर लेंगे we will try to align them, we will create a document from it, and then our team will try to validate it कि जो connection है वो आ रहा है या नहीं, the things what we want to bring that is there or not, that is called validation part. So under this session we are going to validate
नहीं तो आप समझ गए होंगे जो वर्क है वो है 30 कोर्सेज मल्टीप्लाइड बाय, अगर आप 4 प्रोग्राम्स के लिए भी जा रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 30 120 कोर्सेज के करिकुलम डॉक्यूमेंट बनना है, और एक कोर्स का एक करिकुलम डॉक्यूमेंट 15 पेज का होता है. So 15 pages multiplied by 120, this is the amount of work that is to be done in coming days. And for that you have to organize few offline workshops, few online workshops, so that the thing can be completed as per OBE. Then we are going to have one open session, and open session means if you have any other query which is not being completed in all these 5 days, you are most welcome. आपको अपना बताना है कि सर ये कुछ चीजें जो हमें नहीं बताई गई हैं, हम उसके ऊपर आपको क्लैरिफिकेशन देंगे. एंड इफ वी फील दैट इट इज गोइंग टू कंज्यूम मच मोर टाइम, we will request you to have another workshop to handle that particular thing. So open session is your session. उसमें आप टीचर बनेंगे, हम स्टूडेंट बनेंगे. आपको बताना है कि क्या चीज नहीं हो पाया है. And finally, we have got achievement test. क्योंकि जब आपने इतना सब कर लिया तो you must undergo one achievement test also. It's a simple achievement test of MCQs. So you have to undertake that. उससे आपके जो मार्क्स आएंगे उससे पता चलेगा whether the sessions are effective or not. And finally, we will have feedback and valedictory. We want to know from you about the program, about the sessions that we have conducted, whether we were able to complete all the outcomes that we have created or not. तो उसके लिए वो लास्ट सेशन है. जस्ट स्क्रॉल इट अप. मैं आपके 2 मिनट और लूंगा. अप टॉप टॉप ऊपर, मतलब हाँ वो थोड़ा अब स्क्रॉल डाउन कीजिए और डाउन कीजिए, डाउन डाउन, या this one. So थोड़ा सा, yeah, that's it. So there are in total 10 outcomes that we are fixing for this 5 days program. इस 5 दिन के प्रोग्राम के लिए 10 outcomes हैं जो आपको अचीव करना है. The very first is explain requirements of NBA accreditation and outcome based education. Second one is explain outcome based curriculum and its elements. Third one, formulate learning outcomes at classroom level as well as lab level, lab session and classroom session. Then formulate COs for your course. Then prepare course plan to achieve POs, PSOs and COs. Then prepare course evaluation plan. Perform analysis of existing curriculum. Prepare course articulation matrix and program articulation matrix. Comprehend attainment of COs and POs. COs और POs को कैसे attain किया जाता है उसका complete procedure we are going to tell. And finally, prepare course file, because once you prepare course file means you are ready to be launched. आप तैयार हैं launch होने के लिए. So these are the 10 outcomes we have targeted for this program. And I hope with the help of my team and with the help of you people, I will be in a position to achieve all these 10 at the end of the program. So this is all about the program, faculty, and NITTR. Now it is high time to know about you. क्योंकि अगर आपको किसी प्रोग्राम को सफल बनाना है तो आपको सब्जेक्ट या कोर्स पता होना चाहिए और जिसको पढ़ा रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए. Two things are required: know your subject and know your learner. आज की डेट में आप लर्नर हैं, so we want to know about you. 4 things are required from your side: your name, the polytechnic or institution you belong to, the course or the discipline you are handling, and years of experience. ये 4 चीजें आपको बताना है. If you have attended any other program of NITTR, अगर आपने कोई NITTR का प्रोग्राम अटेंड किया है तो वो लास्ट चीजें जो आप ऐड कर सकते हैं, that you have attended induction program 1 or 2 or some accreditation webinar series or accreditation online program, that you can add at the end. So I would request from say this end, चलो जाइए one by one. देखिए ये नहीं बोलेंगे कि आप बता दो. लीडर का मतलब है लीडर को खुद माइक लेना है और चालू हो जाना है. Good afternoon, sir. Myself Suprakash Singh. Great. From Electrical Engineering Department from BKPI Sitamarhi. I have 3-year experience in teaching and 2-year experience in industry. And Which discipline? so from Electrical Engineering Electrical side. Department. Great. Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Ji. Myself, Amit Nayan Misra from Badiuzuma Khan Polytechnic Institute, Pupri, Sitamarhi.
I am from Mechanical Engineering Department and handling the course Tool Engineering from fourth semester and Material Science in the third semester. Sir, have you attended any program from NITT? Yes, I have completed both the induction phase program from NITTR Bhopal and also I have successfully passed the 8 modules from the Great. NITTT. NITTT. Yes, sir. Good. And how many years of experience you possess? I have more than 4 years of experience in teaching and 2 years of experience in industry in Indian Railway. In railways. Yes, sir. Good. Thank you, sir. Pass on to, yeah. Myself, Dr. Alka Kumari, Faculty of Mathematics from New Government Polytechnic, Patna, Tera. And I have completed the induction phase 1 and phase 2 program and also 8 module course. And years of experience, madam? 4 years. 4 years. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. I am Dr. Ranjita Tiwari and I am from New Government Polytechnic, Patna 13. I teach communication skills. I have done IP phase 1, phase 2 and completed 8 modules from NITTR Bhopal. Good, great. I have 4.4 years of experience in teaching. 4.4. So whenever we are going to create course outcomes, and if you feel you are not comfortable with the language, we will take help of madam. Fine? Ji, go ahead. Good morning, everyone. I'm Dr. Asutosh Kumar, currently working in New Government Polytechnic, Patna 13. My discipline is automobile engineering, and mainly I'm handling the course automobile system, automobile engine. I have around 4.5 years of experience. I have completed phase 1, phase 2 of induction and 8 module and 2 other domain-based courses from NITTR Bhopal itself. Great, sir. Thank you. Good morning, everyone. Myself, Roma Rani, lecturer in Electronics Department from New Government Polytechnic, Patna, Tera. I have 4 years of teaching experience and I have completed induction phase 1, phase 2 and module 8 courses successfully. Thank you. और जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दें, एक हाथ बिल्कुल सीधा छोड़ दीजिए, जेब में डालने की जरूरत नहीं होती. I'm Anuradha Krishna. I'm presently in New Government Polytechnic, Patna 13. I am heading the Department of Electrical Engineering there. I have 10 years of industrial experience and 18 years of teaching experience there. My God. And I've completed CMI level 5, which is a joint initiative of UK and India, UKD, successfully last year. And I've also completed Mentor of Mentors, which is a joint initiative of all the NITTTRs. Thank you, sir. Thanks for coming, madam. Thanks. Please go ahead. Yeah. Good morning, everyone. I am Rohit Kumar from New Government Polytechnic from Civil Engineering Department. I have got 4 years of experience and I have completed both the induction phases from NITTR Bhopal. Presently, I am also a student of NITTR Chandigarh for ME modular course. Good. Great, sir. Good morning to you all. Myself, Dr. Anil Kumar Singh, Principal, Government Polytechnic, Chhapra. I have already 20-year experience and I have already worked with the TECU program in Engineering College. And I am pleased to inform that we have already faced the NBA accreditation in LNJPIT Chhapra. Due to some technical stuff, we have not completed in mechanical. Thank you and most welcome, sir. So, sir, thanks for joining the course. Number 1. Number 2, have you received NBA accreditation? Sir, we have already received, but due to some marks lacking, we have not completed in mechanical engineering. And we have already faced the... So, you are having accreditation with other programs other than mechanical? No. We have just applied for the mechanical engineering. But not got it? Not got it. Only for the... Now I understand. 40 marks we have lost this. Thank you. No issues. At least you have put in efforts to apply. That is the big thing. NB is not an easy task. Sir, go ahead. Good morning, everyone. Myself, Dr. H.K. Singh from Government Polytechnic, Gaya. I'm a principal in charge. So all principals are sitting together, I suppose. And 20 years of experience. Ji. Thank you, sir. Thanks for coming. Have you applied for NBA, sir? No. Why? I recently joined Bihar College. Recently, but otherwise also? Okay. But I worked in that NIF ranking college. And this kind of NBA I faced in our campus. Okay, sir. The Beltec University, Chennai, I worked there. Okay.
Yes, sir. Yes, sir. This is under NIF ranking. नहीं, The system you know very well. नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन, वो एनबीए क्रेडिटेड था या एनआईआरएफ रैंकिंग में था, क्या था? NIF ranking, NBA, NAC, all. अच्छा, all great, with all feathers in your Yes, cap. this is far. Good. Yes. So we know that the systems, we know that this is very aware of this. जी जी. Good morning, everybody. Myself, Dr. Thakur Sanjay Kumar, Principal Government Polytechnic. Sir, your voice is really good. Thank Impressive. you. Sir. Thank you. Go ahead. Yeah. Over, sir. So, okay. Over, sir. Sir, Kaushal Kishore Singh, Principal in charge, Government Polytechnic, Nevada. Okay. 25 years experience in textile engineering. Good. Thank you, sir. I am Dr. Anil Kumar Singh, Principal Government Women's Polytechnic, Patna. 25-year experience. So have you tried for accreditation? No, we are in the process. Good. Most welcome, sir. Good morning, sir. I am Dr. Rakesh Ranjan, lecturer in physics, Government Polytechnic, Patna, sir, and 18-year teaching experience, sir. 18 years of experience. Good, great, sir. Thank you. Good morning to all of you. My name is Siddhant Malik. Currently, I am working as a lecturer in Government Polytechnic, Saharsa. I have more than 4 years of experience. I have more than 1 year of experience in industry. I worked there in Delhi Metro Rail Corporation as a junior engineer there. And currently, I am teaching 2 subjects, thermal engineering 2 and refrigeration and air conditioning in my college. Thank you, sir. Thank you. Thank you. I would request everyone not to have cross talks. किसी का introduction चल रहा है, it's an honor for everyone. So cross talks are not allowed. जैसी session चालू हो जाएगा, तब आपसे बहुत सारी बातें करेंगे. We will try to know your intellect and wisdom. Good morning, sir. Myself, Abhay Kumar, lecturer in ceramic engineering from Government Polytechnic, Gulzarbagh, Patna, sir. I have 5 years of teaching experience and 2 years in industrial experience. I did phase 1 and phase 2 induction program from NITTR Bhopal. NITTR Bhopal. Yes. Thank you, sir. The good thing about you people is like you are having industrial experience. In other states, we are not having that type of situation. People are not having industrial experience. They directly jumped into education. Ji, sir. Very good morning, sir. Myself, Mohammad Ikram Arshad, currently working as a lecturer in the Department of Electrical Engineering at Government Polytechnic, Vaishali. I've been teaching for almost 4 years now, and I have done my induction phase 1, phase 2, as well as the hands-on training on SAR for the NBA accreditation program last year. And I have almost 1.5 years industrial experience. Thank you, sir. Thanks for coming. Hello. Good morning, sir. My name is Nikhil Patel from Government Polytechnic, Gulzarbagh, Patna, sir, in Mechanical Engineering Department. I have done IP1, IP2 from NITTR Bhopal, and I also completed 8 modules. And I have more than 4 year experience in teaching. So after doing this IP1, IP2, are you feeling that there is some improvement? Yeah, yes, sir. Improvement. Yes, sir. What type of improvement you have observed? Sir, when we are going to teach, before that, we think that just taking notes and going in doing lecture. But before taking lecture, I start that after this lecture, you will able to calculate this. Just suppose in mechanical engineering theory of machine, right? Length of belt required. Means before that, I will say, if you know the radius and length between the pulleys, then you will be able to calculate the length of the belt. This type of means before the outcome, what will you prerequisite you are informing. That's a good thing. That's really good. Thank you, sir. And you are not putting your hand in the pocket. That is also a good thing. Thank you. Because if IP1, IP2 participant is there, he will never play with the hand. So अपने hand छोड़ देता है. नहीं तो वो लोग ऐसे अंदर और पीछे और बाहर. Okay, go ahead. Next one. Thank you. Good morning, sir. Myself, Upendra Ravidas. Yeah, that's it. Great. My name is Upendra Ravidas. Working as a lecturer in Department of Physics and Government Polytechnic, Vaishali.
My teaching experience is 4 years. I have completed phase 1, phase 2 training and also completed 8 modules. 8 modules? Yes. Good, good. Very good, sir. Thanks for coming. Thank you. Next. Good morning to all the dignitaries present here. Myself, Akash Kumar from Government Polytechnic Vaishali. I have 4 years industrial experience and 3 years of teaching experience. Now I have completed IP1 and IP2 and enrolled in MTech program in NITTR Chandigarh. Also, I have completed 8 modules. Sir, you belong to which discipline? I belong to civil engineering discipline. Civil engineering. Good. Thank you. Thank you, sir. Next one. Yeah. Good morning, sir, and everyone. Myself, Abhishek Kumar Ranjan, working as a lecturer at Government Polytechnic Jahanabad. I have total 7 experience. 7 years. 4 years of teaching and 3.5 years of in industry as a technical consultant with Tata Power organization. Okay. I have passed both. I have completed both IP phase 1 and phase 2, NITTR 8 modules. Apart from that, I have completed 2 courses also from the SWAYAM portal, learning and instruction and outcome-based education. There are 2 courses which are earlier, so that I have also completed. Good. That is all about me. Thank you. So now you can like give input from this side. You are having so many courses completed from NITTR. Yes. So you are as good as faculty, so you can deliver lecture. But I can try for that one. Thank you. Okay. Thank you, Thanks sir. for coming, sir. Give it to, yeah. Good morning, sir. Good morning. Myself, Vinod Kumar, and I am from Government Polytechnic Kishanganj. And I have more than 6 years of experience. And before coming here, before joining here, I worked in a NBA accredited institute, and I gone through the process all of the accreditation. Good. And actually, I coordinating with the COPU mapping. So I know all the most of the things, but still I would like to improve myself. Yes. In this regard. Correct. Thank you. Thank you. And your discipline, sir? Sir, computer science engineering. Computer science. Yeah. Great. Good morning, sir. Myself, Jaranjan, lecturer in chemical engineering from Government Polytechnic Bhavani, Begusara. Right. I have almost 5-year teaching experience, and I have done induction phase 1 and phase 2 from NITTR Bhopal. Good selection, sir. Good. They are having this IP1, IP2 capabilities, so it would be easier for us to push the things. I am Abhay Kumar Giri from Government Polytechnic West Champaran. I am a lecturer of communication skill. Great. And I have the experience of more than 4 years in teaching. I have completed IP1 and 2 and also that modules. 8 modules also? Yeah, I have completed. Great. Thanks for coming. Good morning, sir. I am Rameshwar Pandey, lecturer mathematics, Government Polytechnic West Champaran. I have also completed induction phase 1 and phase 2 from NITTR Bhopal. I have 4 years teaching experience, and I teach mathematics 1 and 2 in our institutes. तो सर आप I have 4 year teaching experience. जी सर, तो अभी accreditation के लिए आपका इंस्टीट्यूट गया? अभी नहीं सर. अभी नहीं. अगर जाएगा तो आपका रोल क्या रहेगा? What I have learned from here. नहीं वो तो ठीक है, लर्निंग तो आप अप्लाई करेंगे. आप अपने कोर्स से रिलेटेड क्या करेंगे? अपने कोर्स से जो भी इंजीनियरिंग के पेपर्स हैं, सिविल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, किसी भी ब्रांच में मैथमेटिक्स 1 या 2 का क्या एप्लीकेशंस हैं जिससे कि बच्चे अपना इंजीनियरिंग के फील्ड में उस मैथमेटिक्स का यूज कर सकें, इसको हम ध्यान में रखेंगे और इसको ध्यान में रख करके ही अपना जो भी यहाँ पे करिकुलम डिजाइन करना है, अपने इंस्टीट्यूट को उसको फॉलो कराना है, कोर्स फाइल बनवाना है, उसको करेंगे सर. गुड सर, थैंक यू. थैंक यू सर. या अगर ऐसा सोचते तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं. Good morning, sir, and good morning, everybody. Myself, Rajkamal Prasad, working as Government Polytechnic Bhagalpur in textile department. I have total 14 years of experience, out of which 9 years in industries and 5 years in teaching. Sir, कौन सी इंडस्ट्री थी सर? Sir, I have worked in DuPont for 5 years and in Honeywell for 2 years and Abhishek Industries for 1 year. Okay, and you belong to which discipline? Textile engineering. Textile. Okay. Yes. Thank you. Thank you, sir. Thanks for coming. 9 years of industrial experience is too much. In fact, in Germany, without industrial experience, nobody is allowed to become professor or assistant professor or associate professor. That industrial training is mandatory. But in India, we have this
shortcut, you can directly jump into education pool. Good morning, sir. My name is Ranjit Raj. I am from Government Polytechnic, Jahanabad. My discipline is mechanical engineering. I have 4 years of teaching experience, and I have completed phase 1 and phase 2 from NITTR Bhopal. कौन ने पढ़ाया था सर आपको भोपाल में? Sir, I taught under Rowley Pradhan madam and ma'am एक चंचल मैडम थी. फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा. नेक्स्ट आगे करते हैं. तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि आप जी. Good morning, sirs. Myself, Ashutosh Kumar, lecturer, Government Polytechnic Shivar. My branch in civil engineering. I have 3 years of experience, and I have completed IP1 and IP2 from NITTR Bhopal. Thank you, sir. Thank you, sir. Good morning, sir. All of you. Myself, Mohammad Samsanadim, lecturer, Government Polytechnic Sheikhpura. I completed IP1 and IP2 in NITTR Bhopal and completed all 8 modules. I am also completed a FDP under your mentorship, sir, Goa 9 in 2020. Yes. Goa 9. Good. So, कैसा experience था? ठीक था? हाँ, very good. बहुत अच्छा रहा होगा. Wonderful. बहुत अच्छा रहा होगा. Yes. Thank you, Good. sir. तो मैडम के लिए मैंने इसलिए कहा कि I will convey my regards to wife. इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा. रोली मैडम के लिए. आगे सर. Good morning, sir. My name is Chandan Kumar from Government Polytechnic Sitamarhi, working as a lecturer in civil engineering department, and I have completed approx 3.5 year teaching experience. I have completed phase 1, phase 2, IP phase 1, phase 2 from NITTR Bhopal, sir. Good. Good morning, sir. My name is Digvijay Kumar, working as a lecturer in Government Polytechnic Sitamarhi in electrical discipline. I have 4 year teaching experience, and I have completed induction phase 1 and phase 2 NITTR Bhopal. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. Good morning, sir. I am Dr. Meenakshi. I am teaching chemistry in Government Polytechnic Gaya. I have a 4 year experience of teaching, and I have gone through phase 1 and phase 2 Very good. modules, and I have also completed 8 modules. Great. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thanks for coming. Good morning, sir. My name is Kamar Iqbal, lecturer civil engineering at Government Polytechnic Nevada. I have completed IP1 and IP2 training from NITTR Bhopal, and I have 4 years of teaching experience. Fine. Thank you, sir. Good morning, everyone. I am Manu Kumar, lecturer electronics engineering at Government Polytechnic Gaya. I have 4 years of experience, and I have completed induction phase 1, 2, and FDP on NV accreditation from NITTR Bhopal, and also completed all the 8 modules of MOOCs. Thank you, sir. Thanks for coming. Good morning, sir. Good morning. I, S.K. Mehta, Subodh Kumar Mehta, presently working as Joint Secretary, State Board of Technical Education, under Chairman of Dr. Chandrasekhar Singh. Okay. Secretary, sir. So, sir, you belong to which discipline? I am from electrical engineering, sir. Great. About 35 years of teaching experience I have here. I have completed MTech education 10th batch from NITTR Bhopal, sir. Dr. Aicte Dixit, sir, और मैडम मंजू रावले, my respected teachers. Guru. Sir. They are gurus. Sir. Good, great, sir. So you are from my family only. So whenever we need help, I will call you this side. I have also completed 3 months industrial training from Bihar State Electricity Board under NITTR Kolkata. Kolkata. Okay, good, sir. Thank you. आपके भी गुरु वही हैं जो मेरे गुरु हैं. Brijmohan Sharma, principal, GP Sheikhpura. I have 25 years experience in teaching. Great. And my faculties of this institution are doing the whole. They are present here? Phases. Acha. Okay. So I am trying to. Sir, your discipline, sir? Mechanical. Mechanical. Great. Thank you, sir. Thanks for coming. Good morning to everyone. My Anjani Kumar Mishra. I am Principal Government Polytechnic Vaishali. My branch is civil engineering and 40 years teaching experience. My God. Thank you, sir. Thanks for coming here, becoming part of this program. Thank you.
Good morning, sir. Yes. My name is Ashish Gaurav from Mechanical Engineering discipline, and having 2 years of industrial experience and 4 years of teaching experience. I have completed all the NITT 8 modules and induction phase training from NITTR Bhopal. For you, it would be a like difficult time. ये 5 दिन आपके लिए मुश्किल के होने वाले हैं. No, sir. नहीं, okay. So, who are the other coordinators? You are from mechanical side? Yes, sir. The electrical side coordinator? Nitish sir is the electrical coordinator, sir. Okay. And then civil? Yeah, great. Fine. Okay. Go ahead, sir. So, Gaurav, you have to work hard. Good. Good morning. Good morning, all of you. I am Dr. Rajesh Kumar, Department of Mathematics. I have 4 years experience. At present, Assistant Secretary SBT Bihar. Okay, Thank sir. you. Thank you, sir. Thanks for all your support and hospitality. Good morning to all the respected faculty members present here. My name is Nitesh Kumar Singh. I am presently working as lecturer in electronics engineering at Government Polytechnic Vaishali. I have a total 6 years of teaching experience and 2 years of industrial experience. Sir, I have completed induction phase 1 and phase 2 at NITTR Bhopal and 1 week short-term training program on NBA in NITTR Bhopal only. Okay. And sir, fortunately, during the phase 1 training, R.K. Dikshit sir was only the coordinator. Oh, he's so branch. famous. Present So I every am year. fortunate to be a part of this training also. Thank you very much. Thank you, sir. You are being like well known in Bihar also. Good morning, sirs. Myself, Sunish Chandra, lecturer in electronics engineering. Okay. GP Chapra. I have completed induction phase 1 and phase 2 training from NITTR Bhopal. Good. And I have 8 years of experience. Thank you. Great, sir. Thank you. Thanks for coming. Now I am seeing electronics guys also. Everybody over? Okay. Anybody left out as a participant, sir? Please here. My front first bench. The most sincere bench. Good morning, everyone. Myself, Dr. K.L. Puskar, HOD Electronics, New Government Polytechnic, Patna 13. I have 24 years of experience, 1 year industry, and we have more than 30 research paper in international journal. Great, sir. Thank you. Thanks. So you are also going to participate, sir? Yeah. Thank you. Then it's a tough time for us. My name is Dr. Sri Bhagwan Singh, Principal Government Polytechnic Gujarat Patna. And I have 35 years experience of the teaching. Sir. And I am actually electrical engineering. My branch is electrical engineering. Electrical. Yes. Thank you, sir. Thanks for joining the course. Myself, Dr. Ji, sir. Principal Government Polytechnic. Great, sir. Thank you. Thanks for joining the course, sir. Without any mic, he can address 60 persons. Quality of a teacher. Myself, Dr. B.K. Roy, Principal of Government Polytechnic Sitamarhi, Government Polytechnic Muzaffarpur, BKPIP Pupri. I am having 20 years of teaching experience, 2 years of industrial experience. My branch is mechanical engineering. I did MTech in CAD and PhD in thermal engineering. Okay, sir. Thanks for joining the course. Madam. Good morning, everybody. I am Lalita Singh, Controller of Examinations, SBT Bihar. And I have 5 to 6 years of experience in e-learning itself. So I am a bit aware of Bloom taxonomy, CO and PO mapping. And then here I have 11 years of experience in teaching, examination, evaluation, and conducting all sorts of. Thank you so much. And I guess because this is organized by State Board of Technical Education, and we are really privileged that at this juncture, when we are planning to revamp everything, starting from examination to conducting evaluation, your training would be of great help. Definitely. So I would really like to take out time and be a part of the training. Most welcome. Thank you so much. We will try our best. Thank you so much. Yeah, we will try our best. So we are done with this, I guess. Okay. So others are like supporting hands for the program, this side, this side. So we are being supported by a very
effective and efficient persons. ये support दे रहे हैं. Anyways, so we have got one thing that we have persons from humanities, chemistry, physics, mathematics, and then we have persons from mechanical side, electrical side, civil side, electronic side. Anything left? Computer, only one person. Two. Chemical and textile also. Yes. Automobile also. Correct. Fine. So it is going to benefit everyone. Okay, sir. So this is all about. So this is all about the program, about the team members, about the learners. Now it is time to have a break. कंप्यूटर से दो लोग हैं, आप भी हैं, तो आपको हाथ फट से उठाना चाहिए था सर. कंप्यूटर साइंस आप लोगों की तो बड़ी डिमांड है अभी, सारी ब्रांच बंद हो रही हैं, आप लोग फ्लरिश कर रहे हैं. गुड. So take a break of 5 minutes and then we will start our first technical session without wasting time. And 1 minute. There is a caution for everyone. Time means time. So if we say 5 minutes, by your watch, 5 minutes back so that we can start our session. Thank you. Thanks for attending this inaugural part. Go ahead.
Anybody else? Intended? What is the outcome? What is the objective? So we need to be very clear on actually what is soft copy and the curriculum. It is more of the, you have got the, I think, between the curriculum and the difference between so that everybody can understand. Okay, good. Anybody else who wants to say? Just ji sir. Summary and curriculum is a very broad, explained in very broad way, and also it is a standard based sequence of experiences, and actually it is a blueprint. Okay, blueprint of what? Of learning. Okay, blueprint in all domains. of learning. Okay, madam. No idea.
So I think because you all had undergone the induction phase 1 and 2, that's why I was just trying to interact and just trying to recall just what we have learned. To be more precise, because I'm not just showing you that the curriculum is, in the syllabus, it is more of the content outline. Okay, it is more of the teacher center, whereas curriculum is a comprehensive document which covers many things. I think Dr. Pradhan has mentioned about there are 15 elements in the curriculum document. Okay, so I think we had a session also on the format of the curriculum document. In this session, I'm not going to cover because I'm just going to give you the philosophy of the outcome-based education and the curriculum in this session. So it is a comprehensive document. Just a minute, please. I'm getting disturbed, sir. Please, there should not be any crosstalks. Sorry, sir, please. Curriculum is a comprehensive document which encompasses many things. The 15 elements, as Dr. Pradhan has said, and where you have the implementation strategies, scheme of studies, the outcomes, what you are expecting from the student, that is very, very specifically, objectively, and clearly written. Okay, so and that there would be focus on the attainment of that. We will be discussing on all the 15 points. It is more of the learner center. It is more of the learner centers, and many other things are being covered. I think I would be discussing on that. So it is, you will be able to know the depth and breadth of the content. Up to what depth and breadth we have to go in the curriculum. But in the syllabus, we will not be able to know the depth and breadth of the curriculum. Because the same topic can be there in the PG also, it can be there in the engineering also, at the ITI level also, at the diploma level also. Sometimes we are dealing the content, same content, very according to our convenience, not as per the requirement of the diploma program. Okay, so the depth and breadth of the content, how up to what extent we have to go in that particular topic or subtopic, that is very clear from the curriculum document. So I think there are many other things like a course evaluation. There are different components which we have already covered in the program brief. This is what we are covering. These are the different elements of the, even the assessment is an integral part of the curriculum instruction or the pedagogy, and the assessment is the integral part. We cannot say the assessment is different and the curriculum is different and the pedagogy is different. So these are the different elements you can say for the outcome-based education. Okay, so curriculum, pedagogy, and then assessment. There you can say, when we say the two sides of the coin, so it's a triad we can say, and these are all integrated, and that has to be dealt simultaneously. Okay, so I think we have now just tried to dissect what is the title of this session, the outcome-based education and the curriculum. And then in this session, I want you to, that you should be aware of, means I think I will be able to communicate what is outcome-based education, and then curriculum and all this thing. Next, please. So I will be talking about outcome-based education, outcome-based curriculum, and then what are the challenges? Okay, outcome-based curriculum, implementation, assessment issues, and challenges. So a little bit I would be talking hurriedly, as I discussed during the inaugural session also, that we have recently, Government of India, Ministry of HRD, they have launched the National Education Policy Document 2020 also. And the draft policy was submitted in 2019 by under the chairmanship of Professor Kasturi Rangan. Okay. I think you are all aware of the NEP 2020? Okay, definitely, good, very good. So whenever, because we are now at this, as we have discussed, that we are little late, but not too late for implementing and for means going towards the NBA accreditation.
I would suggest that we need to incorporate the different components, which is the gist abstract, which is given in the NEP 2020 document, that should also be incorporated, which is like multidisciplinary education, flexibility, holistic curriculum, accessibility, student support system, and so many other things are there. I think there is a soft skills development, technical skills development, many of the things I think we are already doing it. Like the courses on the entrepreneurship development, the Indian Constitution, entrepreneurship development, like these courses are also required to be integrated with all the curriculum, whether it is a textile or mechanical, electrical, civil, any. So cross-section of discipline, it is required to be integrated. Okay, because we are talking about the holistic development. Lot of things have been discussed about the incorporating the value education, ethical education, and so many other things. And then equity and access to all the students, that has also been discussed a lot in the NEP, whether it is a physically challenged student residing in the remote area, all should have the access to the education. And that's why the technology-enabled learning, that is also very much focused. Multidisciplinary education means it is talking about the blurring of boundaries between the engineering, management, humanities, and liberal arts and all these things. So we want, means even a student can opt for different, means the core area plus the interest area also. So there won't be any boundary, blurring of the boundaries. I don't want to take much time because I thought if I don't address it, I think I would be missing a very important component, and it's up to you, there's BT also, that whether they want to incorporate all this component into this, or because you are at the juncture of revising this curriculum. So as a curriculum professor of curriculum, I thought it's my duty to inform all of you that components also need to be incorporated in the SBT curriculum document also. Okay. So coming to this outcome-based education, next. So there are, you can say there are 4 pillars of the outcome-based education. Okay. So outcome-based education requires the outcome-based curriculum. Okay, we can only talk about outcome-based education when we have the outcome-based curriculum, and that is what SBT requires, outcome-based curriculum. Okay, we are planning, we are in the process of developing the outcome-based curriculum through this workshop. Maybe at the end of this workshop, this is just an awareness workshop for developing we will be talking about the different format, standard format, sample standard format, because as we have said, Dr. Pradhan has said, we have the experience of developing the curriculum for Gujarat, Maharashtra, Goa, Northeast, so many other Chhattisgarh, but it would be just, we would be presenting you at a sample format, incorporating the NBA and everything. So then we have a session, you will be analyzing your own curriculum, and then you yourself will see the reflection that how much gaps are there. Okay, so as it is very easy to say that you will be able to complete the document in just 1 week. Okay, let's hope the best. Maybe you have to work overnight and see that how much we can do it. So outcome-based education requires the outcome-based curriculum. Okay, so I think we would be talking on this. And then outcome-based curriculum, there are different, it's the third component is outcome-based teaching learning, or when the document is ready, it has to be implemented in the right spirit. Outcome-based teaching learning means the implementation of the outcome-based curriculum, which is again a big challenge for implementation. Okay, so because we are talking, I would be talking about this also. And then outcome-based assessment. Outcome-based assessment, because it's very easy, it means we are writing the COs, outcomes at the different levels, POs, COs, and all this thing. I think we'll be talking about this. Then how to assess the different outcomes at different levels, that is again a very big challenge. And for implementation and assessment, we need to have the comprehension of the different concepts
which is there by the every teacher. Many things are there, different concepts are there. I think I would be touching in the last part, third part of my presentation, what are the implementation, the assessment challenges, which are there, which should be known by every teacher, then only we will be able to implement the things, the outcome-based curriculum in the right spirit. Otherwise, it would be just a design and then putting it into action will not be possible. Okay, and then the purpose of preparing the whole curriculum document, that would be defeated. Okay, next. I think this is a standard slide which is given in the NBA document also. You all might have seen this. Only a few components I have written, vision, mission, and then program educational objective, program outcomes, then course outcomes. And the program outcomes are derived from the graduate attributes. And while designing the curriculum, we talk from bottom to top to bottom. Okay, so I think you might have formulated because I don't know, I think a vision, mission of the institute, and then from department, then we arrive at the program educational objective, then program outcomes, COs, and then session outcome, because course outcomes, NBA talks about only about the attainment of the PO, PSOs and COs. There is no, but definitely because COs cannot be developed and attained directly, because if you write 4 to 6 COs for a course and we have to teach for one semester. Okay, so directly tackling the 4 to 6 COs becomes very difficult, and that's why we fragment further these COs into the session outcomes. These session outcomes can be the classroom session outcomes, and then it can be the laboratory session, it can be workshop session, it can be the, suppose you are doing sampling in the field, so it can be the field session outcomes. Okay, so it can be whatever activities, the project outcomes. So whatever activities we are doing, that would be a part of the session outcomes, because all these activities will lead to the attainment of the COs, and then further all the COs, while integration, they will lead to the BOs, and then our mission would be achieved. Next. Now, this is very important, the difference between the content-based education and the outcome-based education, as I was discussing. I think this is really very much important to understand. When earlier, as we are practicing nowadays, okay, we are talking about the content-based education. Okay, as I said, the difference between the syllabus and the curriculum. We are talking about the outcome, contents, syllabus is only the content outlines are given. When we are talking about the curriculum, the outcomes are given. And outcomes should also have the impact. If the outcomes are attained, it means the employability will be enhanced. Your knowledge, your capabilities of the students, that also will be enhanced. It means we will be able to have the students with a specification which is really required by the Industry 4.0. Okay, means as per the latest requirement of the industry, all the capabilities would be developed. So that is the impact of the outcome development. Okay, so there is minimum gap. I don't say the no gap, but the minimum gap would be there. So when I'm talking about the content-based education, it is learners are passive. Okay, because it is one-way teaching. It is one-way teaching. Even you might have seen even in the AICTE model curriculum, when we develop the scheme of studies and scheme of assessment, it is written LTP. So do you agree with this? Whether L lecture method is used, means when I'm talking about the lecturing, it means it's only one way. It should not be L. It can be classroom interaction. Different methods can be used. Okay, so means it is just symbolic. Lecture cannot be the only method for outcome based education, for outcome development. Okay, you have to use different instructional and implementation strategies to develop the outcomes. Okay, so the learners are passive, here the learners are active. It's not a one-way teaching, I'm just keep on teaching and teaching. I don't know whether my students are understanding or not. It should not be like this. Okay,
Then the approach is examination driven. Okay, so more focus was on the summative assessment, more focus was on summative assessment, more focus on giving the preparation leave, which is not required. Okay, more focus on the, there is no focus, I would say the minimum focus or focus just by formality, I would say, on the formative assessment, because it is by design only. Okay, so the learners are assessed on the ongoing basis. So when we are talking about the outcome-based education, there should be focus on the formative assessment. Do you agree with me? What is formative assessment, sir? Why it is required? At the end of every unit, let's say, at the end of the unit, you can assess that whether the unit has been completed as per the expected outcome. So at the end of the unit, it can be? Okay. So what is the purpose, sir? What is the purpose of that? We can only then it can be assessed whether the outcome that we are expecting to be achieved by the students has been achieved or not. Okay, good. Madam. Okay, formative means synonymously you can say the continuous assessment. But what is the purpose? Why? To attain the learning outcome, because continuously when we are assessing the student, the purpose is just, you want to say something? Very good, very good. So when you identify the gaps, okay, so it means whatever means improvement, where is the gap? So whatever improvements can be done by giving the feedback, that can be rectified. Okay, so the purpose of the formative assessment is, it is derived from the word formation or the development of the concept. So when the students are at the stage of development of the concept, that time when we are giving the feedback to the student, the right learning takes place. Okay, so the formative assessment, that is must when we are talking about the outcome-based education. Okay, so it should not be the end semester or the focus should not be end semester examination, final examination, or the summative assessment. No concept of, there should be, the concept of the preparation leave should be abolished. If the student is doing continuously learning, you are giving the feedback, the teacher is with the students all the time during all the performances and giving the feedback, learning is going to happen. Okay, and then ultimately the summative results, summative assessment is also going to be very good. Okay, so learners are assessed on ongoing basis, and that's why we will just analyze, you yourself can see how much percentage, as Dr. Pradhan has also mentioned, how much percentage of formative assessment or continuous assessment or progressive assessment you have assigned in your curriculum. Okay, and what else can be done? That has to be very seriously thought of. Then here the rote learning is encouraged. We have seen that many of the students, they are getting 90-95% marks, but without any learning. Okay, even the question papers are not designed properly. Out of 10 questions, you have to do 5 questions. So even we are not covering the full coverage of the course. It is not a representative sample of the whole curriculum document. The question paper is not the representative sample of the whole curriculum document, and we are not asking what is to be asked, and we are just asking with the 50% of the curriculum, and then we are assessing the student based on that. Okay, so and by the rote memory or rote learning, they are attaining 90-95% marks. Okay, so and without any learning or with minimum learning, that should not be there. Okay. Then critical thinking, reasoning, reflection, and actions are encouraged. It is more focusing, as we have seen in the POs. I think there is a session, I don't want to enter into that, but you might have analyzed that out of the 7 POs, there are many POs on the problem solution and problem-based learning and critical thinking, reasoning, and all these things. These type of creative, innovative abilities development. Then the curriculum is outcome-based. Here the curriculum is content-based. Okay, next. Then
Focus on learning during curriculum implementation. Here, focus on teaching during curriculum implementation. Curriculum implementation means the third pillar. Third pillar is outcome-based teaching learning. I think I showed you the diagram. Okay. So the focus is on the learning during the curriculum implementation. So teachers need to be given the autonomy. It's not that you have prepared a schedule, okay, and you have allotted 8 sessions for the theory, or maybe 20 sessions for the theory and 10 sessions for the practical, and that is rigid. I think the heads of the department, the management should understand, because ultimately the focus should be on the attainment of the outcome, not whether you are taking the class or not. They should be given the autonomy, whether if I want to develop the abilities like project development, creativity and all these things, whether the teacher should be left to their wisdom that how these abilities, this outcome has to be developed. Ultimately, the purpose is the outcome development. Okay, so focus on learning during curriculum implementation. It's not the engaging the class or covering the sessions. Getting the point? So it's not that you have taken the session. Teacher should not be happy that I have covered all my content allotted to me as per the timetable distribution of the sessions. Okay? Teacher should be happy rather that the learning has really occurred in my student. You should not leave your students, you should not be satisfied unless your students have learned. Okay? Then more focus on the development of the practical outcomes, because when you are talking about the outcome-based education, definitely the focus on the what the students will be able to do, know and do. You can only do when you know something. Okay, so the focus is on the development of the outcomes, so ultimately they are industry ready. So ultimately they are industry ready with the minimum gap. Okay. Next. Learning is learner-centered. The teacher facilitates and constantly applies group work and teamwork to consolidate the new approach. Okay, so mostly it is learner-centered, and teacher's role is not only the teaching. Teacher's role is the facilitator, planner of the learning. They should not teach from A to Z curriculum. They have to analyze the curriculum and see what is to be taught, like the different conceptual, the complex conceptual things that has to be taught in the class, in the face-to-face. Many of the things they should be delivered in the maybe through with the help of the industry, industrial visit, industrial training, but that has to be properly and meticulously planned. Self-learning, because you need to develop many other abilities, lifelong learning, ethics, so many things are there that abilities are also to be developed as mentioned in the POs. Okay, so that is very, very important. And teamwork and individual tasks, that should also be given, because we are not preparing only some leaders who have scored the very good marks. We have to see that every student work as a leader and as a member of the team. Only the high achievers should not be motivated as being done in most of the institutions. Those who are good in academics, they are just dragged into the other activities also by the teachers and the management. That should not be done. Every individual should be promoted. The teacher sees the syllabus as rigid and non-negotiable. The curriculum is as a guideline for attainment of outcomes, and that curriculum should be dynamic, and they have a flexibility to adopt different instructional strategies, whatever I think we will be giving in the format. So whatever we are just prescribing, suggesting, it's a suggested instructional strategy, suggested implementation, everything is suggested. Okay. So that is also part of this, and inclusion of the content as per the word of work in the form of content beyond syllabus. Sometimes what happens, suppose we have developed the curriculum right this time, and maybe in the computer science or IT, there are certain advances in the technology which has taken place and which could not be included in the curriculum. So you can, as a curricular gap, you can identify certain component which is known as the content beyond syllabus, and that can be included as a part of the curriculum. The teachers, such provisions should be there in the curriculum, that component can be added, and that would lead to the attainment of the POs and COs. Okay, next.
Next. Learners take responsibility of their own learning and are motivated by continuous guidance and feedback by the teachers. Very important. Okay. If the teacher demonstrate and go away from the scene, okay, and if the teachers leave the class to the lab technicians or the demonstrators and then go away, then you cannot expect that the outcomes would be attained. You have to be there. It should become your passion that all students should be able to. You have to ensure the learning. Remember the word ensure learning. Your job is not the teacher. You are not teacher now. Okay, you have multiple roles to perform. Then focused on progressive and continuous assessment at different levels. Why different levels? I think you have all undergone through the taxonomy level of the different domains, so you know the different levels. So that's why it is written that at different levels. We are not only talking about at lower level, we have to go higher level. Why higher level? Because when we will go to the world of work, so the problems have to be solved by the students, and that problems would be at the application level and above level. Okay, so nobody is going to tell you which concept would be applied and which course. It may be integrated. That problem can be comprised of the different courses of the same discipline, or maybe the other courses also of other program. Got the point? So cross-disciplinary, and then even within the program also. Okay, so the problem should be, and you as a teacher should bring the problems, the task from the industry. You should visit the industry. I think we are really fortunate. The Bihar state is fortunate because so many of the teachers, as Dr. Pradhan has also said, they have the ample industrial experience. Okay, try to bring that industrial experience into the institution teaching. Try to bring the simulated problems into the institution, and your laboratories should work as a miniature industries. Okay, and try to bring the problems and see that these tasks are being solved by the students. Okay, you should not leave the laboratory work, the project or the micro project in the hands of the students only. That you go and select your own problem and then solve the problem, which is normally done by all the teachers we have seen in many programs. The program title, the project titles, the problems titles are being identified by the students. Those who don't have the knowledge, those who don't have the experience of the industries. Got the point? So that should be done by you. You should create a project bank, problem bank, and then that should be administered. Okay, next. Emphasis on what the learners will be able to know and do. I think I have discussed on this. Flexible time frame to allow learners to work at their own pace. Flexibility with the rigidity. Okay? Not 5 minutes late and 5 minutes submission late, and then because of that you are just exploiting the students for cutting the marks. That should not be done, as is done in the 3 Idiot film. That man, he prepared the drone, and he could not submit this thing in time, and then he was just demotivated by the management and the teachers, and was not at all encouraged, and ultimately he committed suicide. Okay, so definitely you should tell them the importance of the time limit, but also some flexibility should be given when we are especially talking about the problem-based learning. We are talking about the creativity, innovation. So for developing these ability, you also don't know what alternative solutions I have to try to ultimately create a product. Got the point? Okay. So then comment and input from the wider community is encouraged. That can be put on the website after developing the curriculum, and maybe because only 69 teachers are here, even you can take the feedback from the alumni, from the industry. I don't know whether you have taken the feedback from the industry, which is really required before developing the program structure. Because when we develop the curriculum, scientific curriculum, first step is the need analysis. And when we develop the curriculum, we take the feedback from the industries, from the alumni, from the teachers, experienced teachers, and the pass out students also.
Okay, and then the requirement of AICT, NBA, and then Board of Technical Education and all these things are norms. Norms has to be taken. Now the NEP is also been included, and we are talking about the Sustainable Development Goals also. So that also has to be taken consideration while developing the curriculum, while developing the program structure, which is the backbone of any curriculum. Okay, so I think we are not addressing much on this aspect because of the lack of time. In 1 week, it is not possible, but definitely we will just show you the scheme of studies and examination. Then focus on NRT, and here the focus is on CRT. What is CRT is criterion reference testing. Okay, so because when we are talking about the outcome-based education, outcome-based assessment, outcome-based implementation, we are focusing on the criterion reference testing. It means we are focusing on identifying the certain criteria of the performance, and the students would be assessed based on that criteria. Like COs, they are the criteria. For attaining one CO, for one task, one experiment, you have to identify certain criteria or the performance indicator, you can say. Okay, so the students would be assessed based on that criteria identified or predetermined criteria. Okay, so that is, we are doing a 1 week program on the assessment. I think it would be very difficult to complete everything in this session, but CRT focus, because for outcome-based education, CRT is must. Okay, we need not to compare one student from another. We have to see that whether this student, X student, has attained outcomes, means has developed the capabilities based on the certain predetermined criteria. And that's why identifying the criteria, the right criteria, that is a very tedious job. It's not a one person's job. It is a group work, lot of discussion, and that group work also those who have a deep knowledge on that particular task or the course. So even the identifying the course outcome, it's not as simple. Those who are knowledgeable, very much knowledgeable on that particular course, who are teaching for the last many years, then only they will be able to develop the course outcomes or the indicators, the criteria for any task. If you're preparing the task criteria for any project work, if you don't have the knowledge about how the project work should be carried out, you will not be able to prepare the criteria. You will be simply writing certain criteria, but that criteria will not be the valid criteria for the project work. So it would look like as a rubric or something. So that's why we are preparing the rubrics also, which would be very difficult to cover in this program, but definitely the rubrics are there. Okay, next please. And NRT means that's only when we are talking about, means we are comparing one student with another student. Okay, so we are not focusing on this. Even if we say that, because though we are talking about the outcome-based education, outcome-based curriculum, then our assessment should be outcome-based. It's definitely our assessment is outcome-based. Then even our mark sheet should also be outcome-based, but we are in the middle path. We are just trying to assess the outcomes also, but giving the percentage and grading. Okay, because drastic paradigm shift is also not possible. Okay, so maybe in the near future, definitely we may have the mark sheets in the form of outcomes also. Problems, outcomes. Okay, next. Students, I get a student for job or for any other purpose, then NRTs should be the better one. Because we have to judge in very short, very less student out of more. Yes, I got the point. Sir, just hold on. I think I just addressed this question. Maybe because for that, your teaching, learning, your assessment should be very valid. As I said, 90%, I just took the example, 90% of a student got more than 90% of marks, but they are not developed any capabilities. Okay, then NRT will not be useful. What the point? Okay. So I think we can discuss later on this, I think. But that result which is showing 90% of a student got 90%, that is not the valid thing.
It's not actually the true picture of the developing capabilities. Okay. Then coming to the curriculum. Ji. No, whether it is autonomous or it is not autonomous. Okay. There is no restriction. You have to develop the criteria for everything. Suppose if you are developing, assessing one single experiment. Okay. So how you are assessing the experiment? So it's not that only we have done the experiment and whatever result is there, it means it's you have to identify the criteria of the assessment during performance and at the end also the product assessment. Okay, about the safety precautions and all this, general behavior, so many things. So for every task you are assessing, there should be criteria. Last week only I had conducted a program, Dr. Pradhan has also conducted a program on the rubrics. Okay, so every task there should be a rubric or at least the checklist. Okay, so criteria is must when we are talking about the outcome-based education. Without that, there would not be any valid assessment. I think you know the validity, reliability, and objectivity and specificity because you have all undergone the induction phase 1 and 2. Okay, otherwise, unnecessary, we are just wasting time, engaging time, and then we are not reaching anywhere. Okay, and that criteria also should be very valid criteria, the keystone indicators, the milestones. Okay, so that's why you as a teacher need to do a lot of work. I think you need to prepare the rubric or the checklist to start with, at least the checklist and the rating scale. And then for each and every experiment of the 30 courses, you need to prepare the project bank. You need to prepare the question bank. So many things are there. Okay, under this examination reforms policy, which is written here, because we are focusing on the formative assessment. So I think if it is not there, definitely we will not be able to lead to the right assessment. Okay. Then coming to the second part, I think outcome-based education. You have understood what is outcome-based education. The focus is on the learning. Focus is on the learner-centered learning. Okay. Now coming to the second part, curriculum. I think I have briefed a little bit. Yeah, I have mentioned this also. The curriculum, you can say it is a backbone of the educational process. You say, lighthouse, you can say, which directs everything, which directs the teaching, learning, pedagogy, and then assessment. Okay. Sometimes people say curriculum is different and assessment is different. It cannot be there. It is an integral part. So curriculum, pedagogy, and then assessment, they are the integral part of they are just like a child. Okay. I think you can move. So curriculum, what is curriculum? Curriculum means you all persons, 69 persons are sitting here. So you are in the process of developing the curriculum. Okay, so ultimately a curriculum document would be prepared and that curriculum document may be around 150 pages or 100 pages for a particular program. Okay, of one semester, I am talking about one semester only. Means each and every course may have 10 to 15 pages around. Okay, so it has to be scientifically designed and developed and then only document. So it's a document. So after planning and design stage, after doing the need analysis from different stakeholders and then compiling the data and everything, you prepare a document and then curriculum document, it is to be implemented by rest of the teachers, 1,000, 2,000 teachers who are in the Gujarat state. Okay, so it's a document which is developed as a result of scientific and systematic planning and design of the specific program. I'm not going into detail of this because it will take a lot of time. And then, so you can say the curriculum means it's an educational program. When we are talking about the NBA, so instead of discipline, we say program. Okay, instead of subject, we say course. Okay, so it's an educational program designed means scientifically designed and implemented. Okay, implementation include assessment because when I am talking to you, I am also asking questions with you.
just to ensure whether learning is taking place. Okay, implemented to achieve specified outcomes. Specified outcomes means which you have already specified, mentioned, derived at different levels. Clear? So is it clear? It's an education program designed and implemented to achieve specified learning outcomes at the different levels. Next. I think rationale of the curriculum. What educational purposes should the institution seek to attain? Okay. Then what educational experiences? What can be the different activities? Okay. What educational experiences means the different activities which can be provided to attain these purposes. Purposes means why, the rationale. And then how these educational experiences can be effectively organized, sequencing of that particular content, and then strategies of implementation. Then it means, I think it's okay. Then next, curriculum is a set of courses. I think you all agree with this? It's a set of courses. You have seen the program structures, semester 1, 5, 6 courses, semester 2, so it's a set of courses. It's a program of study. It's a set of performance outcomes. Is a course of study, is a series of experience undergone by the learner. Next, next, next. So I think I've explained this. Curriculum planning, after the curriculum planning and design, you get the curriculum document. Okay, so maybe after this workshop, 1 week, you will get means you have to do a lot of work after this, then only you will arrive at the final curriculum document. Okay, so don't be in hurry to just call it as a final curriculum. Okay, that is my just suggestion. So the curriculum document, and then this curriculum document will be ready for implementation. It is just like a blueprint of the actions and all this learning. Okay, so it has to be implemented and the evaluation. Next. Curriculum planning means we just take care of so many things while designing the curriculum. I think you might have taken care of because we are going beyond this. So entry level qualification, what is the entry level, then what is the prerequisite knowledge and what is the duration, employment potential, whether it is a self-employment or the wage employment as a mechanical engineer or textile engineer, where these students will be employed, and if my students have to start their own enterprise, then what are the self-employment opportunities? Okay. So employment opportunities, that is very, very important. And then what would be the entry level knowledge, and then the competency, skills and attitude. Next. The output of the curriculum planning and design is the curriculum document. I think I have explained. This also I have explained. Implementation is putting into action. Okay. Then characteristic of good document, I think it should be dynamic as per the requirement of advancement in country. Maybe in the diversity last semester, 6th semester, you have put certain courses, advanced courses, and maybe it changes then as per the requirement of the latest updation in the industry 4.0, 5.0. I think you should be able to change the curriculum as per the requirement, so updated. It should be feasible. It's not that you have prepared so hi-fi curriculum and it is not feasible as per the requirement of that level. Whether you have prepared so hi-fi, it is required for the degree level but not the diploma level, which is very important point. You should take care of this. Then it should adequately communicate the aims of the program and rationale of the course and topics. I think when we will be discussing about the format, you will see this. It should guide in planning and strategies for implementation. If you have a very good curriculum document, you will be able to know what is the importance of this course, how it is to be implemented. So everything would be there. And then how to guide assess the students also, that will also be covered under the part of the, as I was talking about, the rubric, the checklist, that should also be a part of the, not rubric at least, there should be guidelines how to do the assessment. Your scheme of assessment should be so perfectly and meticulously designed, and then even your course evaluation plan, so that it assists you in planning and evaluating the students. Next.
It should follow the national policy directives, national education policy and other norms which are released day by day. Then because we are talking about multilingualism also, so it's not that your curriculum should be only in English, it should be in Hindi or other language, whatever the local language which is being taught, which is there. Then conform to the NBA, AICTE and AIBT and then SBET norms and all this thing. It should meet the societal concern, help in total personality development. I think as we have discussed that your curriculum should be holistic, comprehensive. And it is there because many of the POs, when I think Dr. Dikshit would be talking about the POs, so I think you will find that many of the POs are from the soft skill only. Okay, so it is taking care of the total personality development and take care of the future demand as far as possible. Very important. So whatever curriculum we are preparing, we have to envisage, we have to visualize what at least 5 to 10 years ahead. Okay, next. Then the stakeholders of the curriculum document. So the curriculum document, because we have seen the syllabus is mostly to be used by the teachers only. But the curriculum can be used by the teachers, professional organizations, employers, administrators, examiners, students. Okay, so students will be able to see what are the outcomes I have to attain. Okay, and suppose if I perform this experiment, then what are the checklists? Okay, what is the scheme of assessment? How much marks are there for the formative assessment? How much marks are there for the end semester examination? So everything are crystal clear if they know the interpretation of the curriculum. We have seen in many training programs, even suppose 69 persons are there, but out of this, many of the teachers, they are not able to, they are not referring the curriculum and they are not able to interpret the curriculum document, which is a very pity situation in many of the training programs, I would say, of different states. If you don't know the philosophy behind this, there should be definitely, when you are implementing or start implementing such outcome-based curriculum, there should be orientation program. It is a part of this development only. There should be orientation program for that, for implementing the outcome-based education and curriculum. Without that, it is incomplete. Okay, so otherwise teachers won't be able to understand the philosophy of this program, the concept, and so that they can implement this in the right spirit. Okay. Then it is clear for the teachers what they have to do, how they have to see that outcomes would be attained. The students will be able to know the things very transparently. The examiner will be able to know what are the outcomes to be assessed and what has been taught, what are the different outcomes at the different levels. Outcome theory level means classroom learning outcome, then practical learning outcomes, and definitely they can ask the questions in the Viva OC or even other things, even as an expert means other interactions accordingly. Okay, so the question paper is a valid question paper. Okay. Then administrators will be able to know how many teachers I have to employ, or how I have to set how many laboratories I have to set. Okay, so the curriculum, because there is a list of equipments and other things also, so the things would be very clear. So it will help the administrators also to arrange the resources, the human and the physical resources. Employers will know what are the outcomes they know. So whether this person, the students of IT or the computer or mechanical, are they suitable for my industry or not, because they have developed these abilities. Okay. Professional organizations also will be many of our faculty, they go for accreditation. So if the curriculum is properly designed, they will be able to know that these are the outcomes which are developed, and then when they show the evidence, when they go for an institution, and suppose if the teacher says that they have done the project work, so where is the project file, course file? Likewise, where is the project bank? Okay, how they have done, so they say the evidence. So these things, so the curriculum, it can be used by the many stakeholders. Okay, so that is very, very important. Next. Here the student is the allocation of the current batch students. Current batch students.
Okay. Yeah, because those suppose I am the learner. So if I see the curriculum, I would be knowing what is expected from me. What are the outcomes which is expected from me? If I have the checklist, if I have a rubric. So if suppose I take the communication example. So suppose five checklists I have prepared: listening, reading, writing, speaking. Okay, so I stand rating scale is good, very good, excellent, and all this thing. So in listening, I stand very good, but in writing, I am very poor, and then reading, I am good. So I know I can self-assessment. I can do self-assessment on reading. I have to improve from poor to very good. So I know I can see as a mirror. Rubric would act as a mirror for me. I will be able to know that where I stand in a particular criteria, to what extent. Okay, so it is very much helpful. The curriculum document, I would be able to know that suppose I am not attending the classes. So I will be able to know that so many tasks are there, so many marks are there for formative assessment, and I will be taken 3 tests are planned, practical sessions are planned, where the assessment is there. So I would have the clear picture that how I am going to assist. Okay, so it would be helpful from the point of view of the ongoing students who are those students who are learning. Okay, so I think when we will show you the scheme of assessment, it would be more clear. Okay, next, I think I have discussed on this. Please go ahead. Okay. This I just wanted to tell. Okay, so I have discussed about the outcome-based education, outcome-based curriculum. Now the challenges, some challenges before you. Okay, in the context of NEP, the outcome-based education, accreditation, these are very, very important. So interpretation of the outcome-based curriculum, which we have experienced over the different projects and through the different training programs. Interpretation of the outcome-based curriculum and its various elements, it is not there by every teacher. So we just divide the session. Unit 1 is to be taken by this teacher. Unit 2 is to be taken by 2.1. 3.1 has to be taken by this. Like this, we are just dividing the sessions, which is not the correct way. Okay, so that has to be interpretation, and the philosophy of the outcome-based curriculum should be there. There should be programs on this. Then only the curriculum should be implemented. Otherwise, the very purpose of introducing this outcome-based curriculum would be defeated. Then assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning, and assessment before learning. What is that? The assessment of learning. What is assessment of learning? Assessment of learning and the end semester examination of assessment of learning means whatever learning has occurred. Okay, so whatever learning has occurred. Shall I stop? Okay. So the challenges are whether assessment, I think the first is the interpretation of outcome-based education and the curriculum and its various elements. Okay, I think I have discussed on this. So unless all the teachers have the interpretation of the outcome-based education, the curriculum which we have developed, okay, they will not be able to implement in the right spirit. Okay, developing the curriculum will not serve the purpose of just implementation. Okay, because only sample teachers are involved in the design of the curriculum. Okay, so there should be mandatory training programs for the implementation and assessment of the curriculum document. The second is assessment of learning. I think there are different terminology: assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning, and assessment before learning. Okay, so coming to the first point, second point, the assessment of learning. Okay, as we have seen that in outcome-based education, we are not focusing on the assessment of learning. I think I have told about the summative assessment or the end semester examination. There should be minimum focus on the assessment of learning. Okay, so while we are preparing the scheme of assessment, there should be less focus on the assessment of learning. Okay, summative assessment and term examination. Is it clear now? Okay, coming to the assessment for learning. I think I have discussed on this. This is the formative assessment.
Okay, assessment for learning. So they should be focused on the learning. As we are talking about, the outcomes can only be attained when you are focusing on the learning. Okay, so the continuous assessment should be there by different tools. I think we'll be talking about this. Different direct and indirect tools of assessment in different domains should have to be used for ensuring that assessment for learning is taking place. Okay, so this is the must, very important, and we have seen in many curriculum of different state, because of the many reservations, there is a less focus on the formative assessment. Even if it is there, it is very limited and it is very biased. And if you prepare the checklist rubric, I think the biases would be removed. Okay, so the assessment for learning, I think, then assessment as learning. What is assessment as learning? Anybody? Madam? Just hold on. Madam, what is assessment as learning? Anybody? No? That is assessment for learning. Assessment as learning, self-learning. Okay, assessment as learning is self-learning. One of the POs is lifelong learning also. Okay, so there are different things I think we will be discussing on this. Self-learning, then lifelong learning, and then learning to learn skills. Okay, there should be focus on assessment as learning. I think I am getting late, so I am going little hurriedly. So assessment as learning, self-assessment, as I talked about, this rubric. Okay, so students will be able to know where I stand in a particular indicator, particular criteria. Got the point? So that is a self-assessment. They need to be trained for self-assessment also. Then, yes, that is, it is there, it is applicable everywhere. Okay. Then because we are talking about the learning student, it has to be done. Okay. Then assessment before learning. Not only the prerequisite, the gaps also. Diagnostic learning. So whatever, as I said about the entry-level knowledge, okay. So what are the gaps which are there that should be done before the start of the class? Okay, so that gap should be addressed, and that is the diagnostic teaching learning. So assessment for learning. Then design a good question paper aligned with the learning outcome. As I was saying, that 90% of a student getting more than 90% of marks, so it is not the true picture. Okay, so there is a question, there is a challenge on the design of the question paper. Okay, because the question papers are not, because out of 10 questions you have to attempt only 5 questions. So there is a big challenge there because we are not designing the question papers correctly. Valid question paper as per the requirement of the outcome, as per the achievement of the outcome, and that's why they are not aligned with the learning outcome. That's why this type of situation comes. Okay. इसलिए क्योंकि ये जो आप करें आउट ऑफ 10 क्वेश्चन we have to answer 5 questions. We have the internal options only. You cannot skip any question. Just like if we have 11 questions. Question number 2. Then it has the only internal option on. And that option also from the same. If it is there, if it is so, very good. But you have seen the curriculum. Okay. If it is so, there is no problem, sir. Yes, very good, very good. If I say. Whatever he is saying, whether it is there or not. It is there, sir. Secretary is just outside. It is there in our course, yes. So whatever he is saying is correct. Yes, correct, yes. मैडम बट आईटी ने हमें बताया गया था कि शॉर्ट नोट्स को अवॉइड करने के लिए Yes. लेकिन बट मैं आईटी चंडीगढ़ से चेक कर रहा हूँ वहाँ भी शॉर्ट नोट्स ही पूछते हैं We are not talking about the NITTR Chandigarh. तो वही A short note, okay. The theme, the gist is behind this is you can give the questions on the short note, but it should be structured. Okay, it should be structured. Just hold on. It should be structured. It should be criteria wise. Okay, if you are asking of some any question, so if you are just pinpointing on these points, you have to answer. Okay, if you are fragmenting a short note, let's suppose it is a 20 marks.
So one student can reply in one page, one student can reply on 2 pages, one on 4 pages. So how many marks you are giving? So there won't be any reliability in the assessment. There won't be any, because the question is not valid. Okay, if you just split this marks question, you make it a structured essay question instead of the short answer question, and then you are asking question on certain points. Okay, you're just structuring that question and asking on specific points on that theme only. Okay, and then distributing the marks like 2 plus 1 plus 3 for 4. Then it becomes then also you can give the short answer. There is no, so depending on how correctness is in your question paper. Question, that is very important, and again it should be valid also. मैम अगर ये मैं शॉर्ट नोट्स अगर पूछता हूँ तो उसमें मैं खुद ही मेंशन कर दूं कि पहले डिफिनेशन लिखना, फिर स्ट्रक्चर, फिर आप प्रोसीजर लिखना, फिर मेंटेनेंस लिखना, ऐसे करके मैं खुद ही मेंशन कर दूं कि स्टूडेंट ही को ये समझना होगा। कैसे समझना होगा बताइए ना। आप 50 लोग यहाँ बैठे हैं, 69% बैठे हैं। इफ आई एम आस्किंग यू कि तो देयर वुड बी वेरिएशन इन द आंसर, देयर वोंट बी एनी रिलायबिलिटी। हाउ स्टूडेंट माय एक्स स्टूडेंट विल इंटरप्रेट इन हिज ओन वे, and then Y student will interpret in his own way. So how a student can understand? The teachers need to be trained on the design of the question paper. This is very important. Okay. Then please go ahead. Alignment of learning outcome with the instruction and the assessment. Sometimes it is very important. The learning outcomes which are there, it is not aligned with the methods. Okay. And then the assessment. This is very important. Okay. We are using the appropriate method of teaching learning should be used according to the entry level knowledge, according to the size of the student. Okay. And then only you can think about the assessment. This is very important. Then ensuring reliability in the assessment, as I was talking, if you're talking about the checklist and the rubric, there would be validity. You can enhance reliability and validity to a large extent. But writing this type of questions, just vague questions, will not serve the purpose. And suppose what happens if I am assessing one student, and if even I am assessing, I may give 8 marks today, maybe after 10 days, if I assess same student, maybe I will give 4 marks because the question paper is not correct. The question is not correct. And even some another teacher will assess the same question, then there would be variation. So there is no reliability. So the question paper has to be designed specifically. Okay. Thank you so much. Welcome, sir. I, Shubha Sinha, Assistant Professor, cum Special Officer, Bihar Council on Science and Technology, wholeheartedly welcome you all present here on the behalf of Department of Science and Technology, Government of Bihar, on this occasion of implementation of AICT Examination Reform Policy 2018 for NBA accreditation on the theme of outcome-based education and curriculum. This is organized by the Technical Board, State Board of Technical Education, Patna, in association with National Institute of Technical Teachers Training and Research, Bhopal, from date 29 August 2022 to 2nd September 2022. Now, I would like to request to begin this session the all dignitaries on the dais come forward for lighting the lamp. Like to join the dais? No. So, our coordinator is there.
Thank you, sir, for gracing this occasion. Now, I would like to request respected Shri Lokesh Kumar Singh, Secretary, Department of Science and Technology, Government of Bihar, to felicitate Honorable Minister, Department of Science and Technology, Government of Bihar, Shri Sumit Kumar Singh, with shawl, memento and plant. Now, I would like to request Dr. Chandrasekhar Singh, Secretary, State Board of Technical Education, Patna, Government of Bihar, to felicitate Shri Lokesh Kumar Singh, Secretary, Department of Science and Technology, Government of Bihar, with shawl, memento and plant. Thank you, sir. Now, I request Dr. Santarpal Singh, Deputy Director, Computer, Department of Science and Technology, Government of Bihar, to felicitate Dr. Chandrasekhar Singh, Secretary, State Board of Technical Education, Patna, Government of Bihar, with shawl, memento and plant. Now, I would like to request Sri Santosh Rai, Assistant Director, Science, Department of Science and Technology, Government of Bihar, to felicitate Dr. Sharad Kumar Pradhan, Professor, Mechanical Engineering and Dean, Corporate and International Relation, with shawl, memento and plant. Thank you, sir. Assistant Director. Now, I would like to request again to Sri Santosh Rai, sir, to felicitate our principal, sir, Dr. Kumar Surendra, Bakhtiarpur College of Engineering, to felicitate with shawl, memento and plant. Now again, I am requesting to Sri Santosh Rai, Assistant Director Science, to felicitate the Dr. Bhagwan Singh, Principal of Polytechnic College. Polytechnic College. ये दो ही प्रिंसिपल कैसे बैठे हैं? हैं? क्यों? केवल दो ही प्रिंसिपल कैसे बैठा है? केवल दो ही प्रिंसिपल कैसे बैठा है? Thank you, sir. Now, it's my pleasure to invite Dr. Chandrasekhar Singh, sir, Secretary, State Board of Technical Education, Government of Bihar, on the dais to give welcome address and objective of this program on this occasion of implementation of AICTE Examination Reform Policy 2018 for NB accreditation. I would like to request all the members present here to please give a round of applause to sir. Good morning, sirs. Respected chief guest of our today's inaugural session of the training, Honorable Minister Sri Sumit Kumar sir, come Chairman, State Board of Technical Education, Bihar, Patna.
Sir, it's my great pleasure to welcome you on the event of implementation of AICT Exam Reform Policy 2018, which is utmost required for the NBA accreditation of all our 46 government polytechnics of Bihar. I welcome our departmental secretary, Sri Lokesh Kumar sir, in this inaugural function of outcome-based education curriculum reframing, which is required for NBA accreditation. We welcome Dr. Sri Bhagwan Singh, Advisor, Department of Science and Technology, to this inaugural session of training. We welcome Principal BC Bakhtiarpur, Dr. Kumar Surendra sir, in this session, and we heartily welcome Dr. Pradhan sir, the coordinator from NITTR Bhopal. As we know, this outcome-based education is a pedagogical model that entails the restructuring of curriculum, pedagogy, and assessment practice to reflect the achievement of high-order learning as opposed to a mere badging of course credit. I welcome all respected principals of all 44 polytechnics of the state to be a part of this August inaugural session. From where we start marching towards examination reform policy 2018. Sir, without your cooperation, the progressive assessment, as Madam has told just now, it is not possible to assess the students just by mere 3-hour in-semester examination. It is the progressive assessment in which we can assess our students' learning. So, from right now only, with the permission of our Chairman, State Board of Technical Education and Departmental Secretary, sir, we have implemented the practical examination system in the end semester. And we will depute the external examiner who will assess the learning of students during their practical examination, viva voce, and they will assess
बिहार के पॉलिटेक्निक का एनबीए एक्रेडिटेशन कराएं और इस तरीके से कराएं कि जिस राज्य में जितने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स एनबीए एक्रेडिटेड नहीं है उससे ज्यादा हमारे राज्य में हो। मैं एक बार और इस ट्रेनिंग सेशन पे मैं वेलकम करता हूं अपने माननीय मंत्री महोदय, सह अध्यक्ष बिहार राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, माननीय सेक्रेटरी साहब श्री लोकेश कुमार सिंह सर का, श्री भगवान बाबू का, श्री सुरेंद्र बाबू का और श्री प्रधान जी का। सर अपना वैल्यूएबल समय दिए, सीरीज ऑफ मीटिंग से समय निकाल के इस मीटिंग में आए, इस इनॉग्रल सेशन में आए आपकी हौसला अफजाई करने। उम्मीद है कि आप जो इवैल्यूएशन पैटर्न है उस पे सीओपीओ मेथड के साथ, ओबीई के साथ इस ट्रेनिंग में खड़े उतरेंगे। थैंक यू। Thank you so much, sir, for welcome address and sharing the insight information about implementation of AICTE Examination Reform Policy 2018 for NB accreditation. Now, I would like to invite Dr. Sharad Kumar Pradhan, Professor, Mechanical Engineering and Dean Corporate and International Relations, for sharing the important of this program, faculty development program on outcome-based education and curriculum. So please. Good afternoon. We are proud to be here, myself, Sharad Pradhan, and my team, Professor R.K. Dikshit and Professor Anju Ravle. We are really proud to be here on this land, which was known as knowledge center of our country. तो मैं इस भूमि को फिर से नमन करता हूँ. And with this young leadership and the talented faculty members of Bihar Polytechnic, I feel that we will be able to bring that glory back to Bihar state. Honorable Minister, Shri Sumit Kumar Singh ji, dignitaries on the dais, off the dais, and participants. As I told you, this is an outcome-based education program, so we have to bring outcome, maybe in the form of a draft curriculum for the identified courses. And why we are doing it? Because I told you, whatever you are producing is not acceptable to industry. It means there is some gap what we are putting in and what they want. To bridge that gap, the educationists, the academicians, the researcher of our country thought and analyzed that what we were doing earlier, it was input-based education. हम पढ़ा रहे थे. And now we want to have outcome-based education. हमें सिखाना है. So that at the end, we should not have a mark sheet. We should have abilities and competencies that these are the things which are there in my student. And if those are going to be there on the mark sheet, you won't believe that the industry is going to take your graduates with open hands. Otherwise, the marks on the mark sheet is not reflecting the ability of the student. He may be having 80% on the mark sheet, but if he is going to be put on the work under real world situations, he is a failure. So just to make him competent, able, skillful, this outcome-based education paradigm shift is happening in our country. And after becoming signatory member of NB in 2014, the focus is much more on the outcome-based education. And that is why we are here. Our team is here to orient you so that at the end of this program, you will be in a position to understand what is outcome-based education, what is outcome-based curriculum. And as mentioned by Professor Ravle in her presentation, that there are three pillars. One more pillar is there after NEP 2020. The very first pillar is outcome-based education, outcome-based curriculum, for which we are here. The second pillar is outcome-based teaching learning, that you must know how to deliver it. And finally, the outcome-based assessment, the examination reform policy. So three main pillars are there. And the fourth one is a student support system, which has arrived just because of NEP 2020. So with these four pillars, the country is marching towards outcome-based education. And we hope with this leadership and with your sincere efforts, it would definitely be a reality in coming future. But try to understand, the work is huge. It is not going to be completed within like 5 days. Continuous efforts from your side
and continuous monitoring from our side is required to have an outcome-based curriculum of Bihar State. So with these words, and I hope this, with whatever outcomes we are starting with, in the morning itself I have shown you 10 outcomes. So there are 10 outcomes of this program, and with these 10 outcomes, I hope that we will be able to achieve at the end of the 5th day. My good wishes are always with you and the Bihar State. If you are going to put in sincere efforts, honest efforts, definitely you will have outcome-based education in your technical education system. Thanks a lot. Thank you, sir, for your brief introduction. To know the importance of this program, definitely it will help to all present here. Now, I would like to invite Honorable Shri Lokesh Kumar Singh, IAS Secretary, Department of Science and Technology, Government of Bihar, to address and share his special remarks for the better implementation of this program. Sir, please. इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग श्री सुमित कुमार तो सिलेबस भी अकॉर्डिंगली आपका बहुत डायनामिक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बार सिलेबस आपने बना दिया और वही पर चले जा रहे हैं, जबकि चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बदल रही हैं। तो जब आपका सिलेबस जो है आज के डिमांड के अनुरूप नहीं चेंज करेंगे, तो फिर बच्चों का जो पढ़ाई होगा तो डिमांड
जो आज का रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है, उससे बच्चे वंचित रह जाएंगे। तो आपका रेगुलर अपडेशन ऑफ सिलेबस संभवतः उतना नहीं होता है जितना आपका होना चाहिए, पता नहीं। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में तो हमने देखा था कि इसको हम लोग बोल रहे थे कि इस बार थोड़ा सा अपडेट कराना है, डिपार्टमेंट को लगना है उसमें, यूनिवर्सिटी से कम थोड़ा कोऑर्डिनेट करके। तो अभी नया नया सब चीज़ चल रहा है, नए नए कोर्स आ रहे हैं, तो उसमें आपको अपने सिलेबस को अकॉर्डिंगली अलाइन करना चाहिए। आपको इवेल्युएशन में भी आप लोग को थोड़ा सा जो पुराना जो आपका ट्रेडिशनल सिस्टम है उससे भी थोड़ा अलग हट करके ऑनलाइन और रियल टाइम उस तरह में जाना चाहिए। इंटरनल असेसमेंट भी आप कैसे करते हैं, बहुत सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पर काम करने का बहुत स्कोप है। और मैं सहमत नहीं हूँ कि हमारा जो अभी का सिस्टम है वो मतलब कि एट पार विथ मॉडर्न मतलब अभी का रिक्वायरमेंट है। तो जो मेरा रिक्वेस्ट होगा, जो हम भोपाल से जो एक्सपर्ट्स आए हैं, कि एक बार हमारे सिस्टम को भी देखिए कि कैसे इवेल्युएशन करते हैं, करिकुलम क्या है। एक तो होता है कि पूरा बता देना चीज़ों को, लेकिन एक्चुअली कि गैप एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी का नीड क्या है और हमारे पास है क्या, दोनों का गैप है, उस गैप को मीट करना मेन तो यही है। अपडेशन तो कभी भी जीरो से स्टार्ट करने का चीज़ नहीं है, अपडेशन उसमें इंक्रीमेंटल एडिशन या कुछ डिलीशन का ही चीज़ होता है। तो उस हिसाब से आप अपना करिकुलम भी थोड़ा शेयर कर लीजिए इन लोगों से। और आपका जो इवेल्युएशन प्रोसेस है, कैसे इंटरनल असेसमेंट करते हैं, कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज का असेसमेंट करते हैं, फिर थ्योरेटिकल नॉलेज का करते हैं, तो इसको थोड़ा इनसे शेयर कर लीजिएगा तो ये लोग बता देंगे कि आपको किस लेवल पर और इसमें जाना है। और बाकी टीम है वो टीम इस पर काम करे। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये स्टेट बोर्ड ने इस दिशा में सोचा, और स्टेटस को मेंटेन करने से भी काम चल जाता है सिस्टम में। और क्योंकि एक्चुअली जब आपकी नौकरी पक्की हो, बच्चे एडमिशन लें या ना लें, नौकरी तो पक्की है, तो फिर बहुत डायनामिक बनने की लोग कोशिश करते नहीं है। तो इसलिए अगर ये प्रयास किया जा रहा है तो ये प्रशंसनीय बात है। तो इसको आप प्रयास करिए और इसको आप और बेहतर करने का कोशिश करिए। ये प्राइवेट में और हमारे में अंतर है। हमारे यहाँ जो टीचर आ गए तो डे 1 से उनको अपने पोस्टिंग के लिए उनको लग जाते हैं, सबको अपने घर में ही पोस्टिंग चाहिए। मतलब कि यहाँ तक की कोशिश से होनी चाहिए कि उनके घर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया जाए, ठीक है, मोहल्ले में ही खोल दिया जाए। घर तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वो भी एहसान करेंगे हम लोग पे, मतलब घर वाला बोलेंगे तो ही बोलेंगे सर इतना भी मत करिए, मोहल्ला में भी चलेगा। तो मोहल्ले में सबका खोला जाए तो दिन रात उसमें लगे रहते हैं। उसके बाद भी ग्रेड पे 6000 हो गया तो एमटेक कर लिया तो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, पीएचडी कर लिया तो 3 इंक्रीमेंट, इसके फेरा में दौड़ते रहते हैं। तो ये सब में ज्यादा लगे रहते हैं, क्योंकि बच्चे अगर कोई सीट भरी भी नहीं, खाली भी रह गई 30% सीट भरी, तभी भी उनकी नौकरी को तो कुछ होना नहीं है। तो इसलिए बहुत कम लोग होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होके सिस्टम में कुछ ऐसा मतलब चीज जो कि उनके परफॉर्मेंस से लिंक्ड ना हो, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव या परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रोथ अगर नहीं है, उसके बावजूद भी सिस्टम में मन लगा के काम कर रहे हैं और डेडिकेटेड हैं, ऐसे लोगों की संख्या सिस्टम में कम होती है। तो यहाँ तो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव और उसका ग्रोथ वाला तो है नहीं। यहाँ तो मोटा मोटी एक है कि इतना डिग्री ले लीजिएगा, इतना ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लीजिएगा तो इस लेवल पे आ जाइएगा, ये चीज़ है। तो इसलिए हमने देखा है कि ज़्यादातर यहाँ के लोग इसी में लगे रहते हैं। तो थोड़ा सा मेन है कि सबसे बड़ा चीज़ तो ये आउटकम बेस्ड असेसमेंट और सिलेबस करिकुलम का परिवर्तित होना, ये अपनी जगह एक डायनामिक चीज़ है, लेकिन ये एटीट्यूड को कैसे चेंज करिएगा, इसका कैसे असेसमेंट होगा, वो तो सबसे बड़ा जो चैलेंज मैं यही देखता हूँ। देखिए इंस्टीट्यूशंस बनता है टीचर और स्टूडेंट से। स्टूडेंट अच्छा आएगा तो टीचर को पढ़ाने में मन लगेगा, टीचर अच्छा होगा तो स्टूडेंट को पढ़ने में मन लगेगा। तो मिला जुला के उस पर बहुत काम करने की जरूरत है, मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ। तो इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि ये काम तो करिए ही, लेकिन कुछ ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करिए जिससे हमारे जो ये टीचर हैं इनको कुछ मोटिवेशन आए कि थोड़ा सा वो पढ़ाएं लिखाएं और ये करें। अभी हम लोग एक चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में अभी एक मीटिंग करा रहे थे, इसीलिए हम लोग देर से आए। वो नेशनल अप्रेंटिसशिप जो पोर्टल है उस पे जो बच्चे इनरोल्ड होते हैं तो ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए 1 साल जो
डिप्लोमा और जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं उनके लिए। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि हर डिपार्टमेंट कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 2.5% से 15% के बीच में उतना अप्रेंटिसशिप का वो जो है लोगों को बच्चों को दे, हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों को। तो काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चों को जैसे वो ग्रेजुएट करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, बीटेक करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, तो 1 साल के लिए उनके पास कुछ एंगेजमेंट रहेगा और उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो जॉब रेडीनेस में उनका सहायक होगा और फर्दर इंडस्ट्री में इंगेजमेंट में सहायक होगा। तो हम लोग इस लेवल पर भी सोच रहे हैं। लेकिन वही जब सारी बातें होती हैं तो फिर जब देखते हैं कि मतलब पढ़ाई लिखाई में मतलब जो इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है टीचर के द्वारा, तो वहीं जा कर के सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर सारा डिमोटिवेशन हम लोग में भी आ जाता है और कई बार मन इच्छा होती है कि इतना क्यों किया जा रहा है, कोई फ़र्क तो इन लोगों को पड़ना नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये तो है ही अपनी जगह और ये होना ही चाहिए, साथ में एटीट्यूड चेंज करने का भी कुछ कोर्स कराइए। और आप लोग अगर कुछ ऐसे में मदद कर सकते हैं तो उसका भी कोई मॉड्यूल डिजाइन करिए और उसका तो हम सबका करा देंगे। ये वाला में तो रैंडम है, चलिए 7 आ गए ब्रांच, 4 ब्रांच से 7 आ गए, 28 आ गए, तो हम सेटिस्फाई न, चलिए लोग कुछ करके सिलेबस बनाएगा। पर वो वाला जो मॉड्यूल करिएगा तो उसमें ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट को बुलाया जाएगा, तो उसको अगला फेज में वो कराइए। ठीक है, थैंक यू। Thank you so much, sir, for your valuable suggestions. It will be helpful and beneficial for all the faculty as well as for all respected principals of polytechnic institutions. Now, I would like to invite Honorable Shri Sumit Kumar Singh, Minister, Department of Science and Technology, Government of Bihar, to address the audience and give your insightful remarks of the program. Please, sir. एसबीटी द्वारा संचालित कार्यक्रम में उपस्थित विभागीय सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह जी, NITTR से आए हुए श्री शरद प्रधान जी, डॉक्टर RK दीक्षित जी, डॉक्टर अंजू जी, एसबीटी के सचिव श्री चंद्रशेखर जी, पूर्व सचिव श्री भगवान सिंह जी, श्री सुरेंद्र जी, उपस्थित सभी प्राचार्यगण, शिक्षकगण, विभागीय पदाधिकारीगण, प्रिंट मीडिया एवं मल्टीमीडिया के सभी साथीगण, आज इस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। प्रथम पहले हम लोग ये इस बात को जान लें कि बिहार पूर्व से ही बिहार राज्य में सरकारी क्षेत्र में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना सहित वर्तमान में NIT पटना के रूप में उत्क्रमित 3 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित थे। 15-16 में राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय कार्यक्रम आरंभ होने से पूर्व राज्य में सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों की संख्या 7 थी। NIT पटना को छोड़कर 15-16 में माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके फलस्वरूप 15-16 के बाद 31 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों की स्थापना की गई। वर्तमान में 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय कार्यरत हैं। इनमें 23 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय अपने भवन में संचालित हैं। 12 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय दिसंबर 2022 तक अपने भवन में स्थानांतरित हो जाएंगे, जबकि शेष 3 अभियंत्रण महाविद्यालय के भी इसी वित्तीय वर्ष में अस्थायी भवन में स्थानांतरित करने की योजना है। पूर्व से बिहार राज्य में सरकारी क्षेत्र में कुल 10 जिलों में 13 पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित थे। 15-16 में राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय कार्यक्रम आरंभ होने से पूर्व राज्य में कुल 13 जिलों में 16 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित किए गए। 15-16 में 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिला में 1 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके फलस्वरूप वर्ष 2015-16 के बाद बिहार राज्य के 15 जिलों में 15 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। वर्तमान में 38 जिलों में 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान कार्यरत हैं। इनमें 39 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान अपने भवन में संचालित हैं। 2 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान दिसंबर 2022 तक अपने भवन में हस्तांतरित हो जाएंगे, जबकि 3 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों की भी इसी वित्तीय वर्ष में स्थायी भवन में स्थानांतरित करने की योजना है एवं 2 नवसृजित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान अस्थायी परिसर में संचालित हैं। वाशिंगटन अकॉर्ड 2014 के सिग्नेटरी देश के रूप में भारत
में तकनीकी शिक्षा के शैक्षणिक गुणवत्ता के स्तर पर मूल्यांकन हेतु MBA एक्रेडिटेशन पद्धति लागू है। इस हेतु AICTE एग्जामिनेशन रिफॉर्म पॉलिसी 2018 को बिहार अंतर्गत सभी तकनीकी संस्थानों में लागू करना अनिवार्य है। राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद बिहार में वर्तमान सत्र 2022-23 से लागू किए जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण के द्वारा राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद बिहार पटना का मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण आउटकम बेस्ड एजुकेशन के मानक के अनुरूप एजुकेशन रिफॉर्म पॉलिसी 2080 को आगामी परीक्षाओं के प्रभावी की जा रही है एवं इस हेतु बिहार राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान के व्याख्याताओं को प्रशिक्षण पूर्व में भी दिया जा चुका है। पाठ्यक्रम को OBE के मानक के अनुरूप NITTR भोपाल के सहयोग से अद्यतन किया जाएगा। पॉलिटेक्निक संस्थान में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को वर्तमान उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप उच्च स्तरीय एवं नई तकनीक वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 के तहत राज्य के प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थान में नए एवं उभरते हुए तकनीक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आदि में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के माध्यम से कुल 97 करोड़ मात्र की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करवाई जा रही है। नए एवं उभरते तकनीकी क्षेत्र से संबंधित पाठ्यक्रम यथा अभियंत्रण महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, माइनिंग इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, रोबोटिक इंजीनियरिंग, नेटवर्क, सिविल इंजीनियरिंग विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन, 3D एनिमेशन एंड ग्राफिक्स एवं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों तथा स्नातकोत्तर स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, वेब टेक्नोलॉजी, इमेज प्रोसेसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग तथा डेटा साइंस पाठ्यक्रमों को आरंभ किए जाने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त हो गया है। उक्त पाठ्यक्रम का पठन पाठन वर्तमान सत्र 2022-23 में आरंभ किया जाएगा। पॉलिटेक्निक संस्थान में भी फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी, माइनिंग इंजीनियरिंग तथा फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन पाठ्यक्रमों को आरंभ किए जाने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त हो गया है। उक्त पाठ्यक्रम का पठन पाठन वर्तमान 2022-23 में आरंभ किया जाएगा। राज्य में 2 नए पॉलिटेक्निक संस्थान यथा राजकीय पॉलिटेक्निक बाढ़ एवं राजकीय पॉलिटेक्निक भागलपुर को वर्तमान सत्र 2022-23 से आरंभ किए जाने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हो गया है। उक्त दोनों संस्थानों में वर्तमान सत्र 2022-23 से पठन पाठन का कार्य आरंभ किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन संचालित 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय तथा 44 पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उक्त संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क 100 Mbps इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई एवं प्रति संस्थान 2 स्मार्ट क्लास की स्थापना एवं 5 वर्षों तक अधिष्ठापित उपकरणों के रख रखाव एवं अनुश्रवण के लिए 69.11 करोड़ मात्र की स्वीकृति दी गई है। अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए प्राचार्य सहित कुल 2241 पदों तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए प्राचार्य सहित कुल 988 पदों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गई है। आयोग द्वारा कुछ पदों का नियुक्ति की अनुशंसा के साथ अन्य पदों के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त हो रहे अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति की जा रही है एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। ये तो हो गए हमारे विभाग से संबंधित सभी बात जो हमने आपको जानकारी दी। उसके पहले हमारे विभाग के सचिव महोदय ने भी आपको संबोधित किया और काफी कुछ आपको जानकारी दी, मैं सुन रहा था। इसमें मेरा भी एक सुझाव है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। शिक्षकों को
अभिभावक बनकर बच्चों का लालन पालन करना होगा और ये सोचकर कि हम लोगों को उन बच्चों को इस तरह से बढ़ाना है, इस तरह से नॉलेज करना है कि वो बच्चे आगे जाएं और कुछ अच्छा करें, अपने महाविद्यालय का और अपने समाज का और हमारे बिहार का नाम रोशन करें। उसमें कुछ थोड़ा सा ये करना होगा हम लोगों को, जैसे कि जो जैसे बच्चे अच्छे करते हैं वो टॉप करते हैं, तो उस तरह से हमें शिक्षकों के लिए भी करना होगा कि जिस कॉलेज के जो प्राचार्य हैं या जो शिक्षक हैं जो अच्छा करें, उसमें भी उत्कृष्ट शिक्षक, उत्कृष्ट प्राचार्य, उनका भी एक ये निकाला जाए कि किन के कॉलेज से बढ़िया हो रहा है और हर साल के हिसाब से परफॉर्मेंस भी देखा जाए। हमारा भी ये मानना है कि चूंकि विभाग में हम लोग रहते हैं तो बैठे बैठे से बहुत सारे आइडियाज आते हैं, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से एक ही जगह पे जैसे ये हो, हम लोग भी देखते हैं कि बहुत तरह की राजनीति चलती है। स्वाभाविक है, बिहार तो ऐसे भी राजनीतिक जगह है, यहाँ पे वैसे व्हाइट कॉलर वाले के अलावा अन्य लोग भी राजनीति करते हैं, शिक्षक भी राजनीति करने पर लगे रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कोई लिखते हैं, कोई शिकायत करते रहते हैं, तो उससे सचिव महोदय हम लोग अवगत रहते हैं, हम लोग कई बार चर्चा भी करते हैं। लेकिन जब से मैं हूँ विभाग में और जब से ये सचिव हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, इस तरह की चीजों पर हम लोग विशेष ध्यान नहीं देते। हम लोगों का मेन फोकस रहता है कि विभाग कैसे आगे बढ़े, कॉलेज कैसे अच्छे से चले, हम लोग अच्छे से पठन पाठन का कार्यक्रम कैसे ठीक से। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग इधर उधर के बातों पर ना जाएं और अपने अपने कॉलेज पे हम लोग एकदम फोकस्ड रहें और अच्छा करें और बच्चों के, ताकि बच्चों के जो ये क्या कमियां आ रही हैं, क्योंकि जितनी फैसिलिटीज हम लोग दे रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज में समझिए कि मुफ्त पढ़ाई है, इंजीनियरिंग कॉलेज में मुफ्त पढ़ाई है, ऐसा ये सुविधा कहाँ मिल रहा है, हमें ये बताएं। ये सुविधा कहीं उपलब्ध नहीं है। इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी अगर हम पिछड़ रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। सिर्फ ये मंत्री और सचिव या विभाग के जो पदाधिकारीगण हैं उनका ही दायित्व नहीं बनता है, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं हर किसी का अपना दायित्व है और अपने दायित्व का उनको निर्वहन करना पड़ेगा। और हम लोग जब अपने दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे तो स्वतः उत्कृष्ट हो जाएंगे, उसमें हमें नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमें इस उद्देश्य से काम करना है कि हमारा कॉलेज सबसे बढ़िया हो, ताकि अगले बार आप लोग जैसे बोलते हैं कि हमारी चॉइस पोस्टिंग यहाँ होनी चाहिए, हम लोग बैठ के बात करेंगे, जिनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा, उत्कृष्ट प्रदर्शन रहेगा, हम लोग उनके चॉइस पोस्टिंग की भी बात करेंगे। तो जहां चाहेंगे हम लोग देखेंगे कि भाई आपकी इच्छा के अनुरूप ही हम लोग ये करें कि आपको जहां सहूलियत हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for your informative and special remarks. Now I would like to invite Srimati Lalita Singh, Controller of Examination, State Board of Technical Education, for concluding remarks and vote of thanks. Madam. Revered Chief Guest Sri Sumit Kumar Singh, Minister, Department of Science and Technology, Government of Bihar. Shri Lokesh Kumar Singh, Secretary, Department of Science and Technology, Government of Bihar. Dr. Chandrasekhar Singh, Secretary, State Board of Technical Education, Bihar. And the most valuable speakers on the dais, the team of NITTR Bhopal. I, Lalita Singh, COE, SBT Bihar, feel my honor and a very proud privilege to propose vote of thanks on the behalf of State Board. Before that program is announced accomplished, let me acknowledge my gratitude to the most dynamic Chief Minister of Bihar, Shri Nitish Kumar Sir, under whose patronage, since 2015, Bihar's technical education has achieved milestones. In Bihar, the number of engineering colleges has increased from 7 to 38. The number of polytechnics has also multiplied 3 times, that is from 13 to 46. A special mention here is to Sri Sumit Kumar Singh, sir. Sir, I extend my sincere thanks to you. Your incessant endeavor to provide quality education to each corner of our state is really inspiring. And your commitment to implement AICTE, Examination Reform Policy 2018, is also inspirational. Further, I would like to express my heartfelt thanks to Secretary DST, Government of Bihar. He has been one of the first persons to talk about the recommendations of AICTE, and he was also a pushing force behind us
and he actually encouraged State Board to blend our examination reform and evaluation also. So he was, we can say, the encouraging factor who pushed State Board to work more harder. And so hopefully under his guidance, we would try to, do something new from this session. And further, we are indebted to NITTR Bhopal team, who will help us transform from our input-based education to outcome-based education. Now, I must also mention my deep sense of appreciation for Secretary SBTE, and who has a very, very, very strong vision of revamping our examination and evaluation process. Lastly, my grateful thanks to all the participants and supporting staff. Thank you so much. Thank you, madam. Now I would request to all the faculty members and principals, sir, to please take your lunch, and after that in second half, again the session will start. Thank you.
challenges. So the ensuring reliability in assessment and ensuring validity in assessment, I think we have discussed on this. Excuse me, please. I think there should not be any crosstalks. Excuse me, please. So I think we have already discussed about the ensuring reliability in assessment and then ensuring validity in assessment. We have talked about the checklist and rubric. Then ensuring objectivity in assessment. I think one participant raised about the short note questions. So we have to ensure that objectivity and specificity is there in the assessment. Then process and product assessment. We don't have to focus only on the end result. We have to focus on the, when we are talking about the experiment conduction, so there should be focus on the process and the product assessment. Use of appropriate tools of teaching learning, that is very, very important, and assessment for cognitive, psychomotor and affective domain. Use of appropriate tool for appropriate type of outcome, that is very, very important. I think when we will be talking about the course evaluation plan and when we will be talking about the scheme of assessment, we will talk in detail about the different tools of assessment for this. Then portfolio assessment, that is one type of assessment, one tool of assessment. I think as you are preparing the course file where you are keeping all the different things, that is the portfolio assessment. Next, please. Then these are the different tools: self-assessment, checklist, rating scale, pen, paper, skill test, observer. These are the different tools of assessment. Next. Quizzes, assignment. These are the different tools of assessment for the cognitive, psychomotor and affective domain that has to be used appropriately for the type of outcome. Okay. Then assessment of seminar, presentation skills, assessment of each laboratory experiment of each course of each program, as I was discussing. Then reforms in certification also, it has to be there, as we are talking about the outcome attainment, but we are giving the percentage also. So, but we have to see that whether the outcome is being attained or not. So we will be discussing about the course attainment and the program outcome and PSO attainment. Next. Holistic and comprehensive assessment. I think we have a session on the program PO and PSOs. So the POs are comprising of that. So that has to be seen that there is a holistic development, which is also focused in the National Education Policy 2020. Then assessment across the courses, as I have already discussed about that, within the program and across the programs, within many programs. So the project can be from there. Then assessment of learning, for learning, self-learning, lifelong learning skills. So there should be focus on developing these skills in the students and how can we propagate this things, and then how to develop these skills in the students and how can we assess this skill. So maybe you have to give certain handouts or self-learning material. You can prepare a very good self-learning material and then develop their learning to learn skills and self-learning skills in the student. Then assessment of performance in online teaching learning, that is also a big challenge because we have seen the COVID situation also, and then how to assess the learning in online situation. Then paradigm shift of content-based curriculum to outcome-based curriculum. I think we have been talking about this, and then more focus on the progressive and formative assessment, as our secretary has also focused on this, and there is a need to develop a system, holistic system for that. That is very, very important. Next. I think it's a design of appropriate tools. I think I have discussed on this. Then percentage weightage of the formative and summative assessment. Again, it is a part of the course scheme of assessment for different COs and different then percentage weightage across the process and product assessment for the different kinds of experiences, laboratory experiences under each course.
Okay, so that has, and then you have to write the checklist or milestone indicator for the same. I think it's all, this is, I think, last slide. Okay, thank you so much for patient listening. And I think you might have understood in totality what is outcome-based education, what is outcome-based curriculum, and what are the challenges in implementation of the outcome-based curriculum and assessment, and what is our institutional preparedness for the same. So we all teachers need to develop a holistic concept, different concept related to the implementation assessment, as Dr. Pradhan has also talked about the three pillars like curriculum, outcome-based curriculum, then implementation and assessment. Then there is a need to have an orientation program on that, because everything cannot be covered in just a very short duration of time. So like we have done the project for other states. So after the development of the curriculum, we conducted many implementation workshops and the assessment workshops. So this should be there should be a part of the development. So thank you so much. If anybody is having questions. Different scheme, then how to normalize this all schemes in the one platform? How can we judge of two states and two universities? The two states की तो बात अलग है. Now the NEP is no. I think if we are talking about two states, okay. I think if we do it for SBT only, that would be a great thing. Okay. So but the implementation, whether you have the best of the curriculum, best of the teaching scheme, best of the assessment scheme, but sometimes that is also not implemented in the right spirit. Okay, so it depends on the teacher how you are going to implement this. Sometimes the component, the formative assessment is not reflected in the scheme of assessment, but still those teachers who are very passionate, very inquisitive, I would say very innovative, very proactive, they just try to see, though there is no component of the formative assessment, still they see that because the learning should occur, so they are by default they are increasing the component of the formative assessment. Make it dissatisfaction because two evaluators, maybe two faculty may give different evaluation to the two different students. So they may get dissatisfaction. So, sir, I think there are so many things, there are so many issues. I think I have discussed a lot. I think you might have got the answer. So there is a need to develop a holistic assessment system. I think I have talked about different concepts. So unless that system is perfectly developed, the students' queries about the reliability, which is very important. Sometimes because why there should be system of revaluation. If there is a system of revaluation, and sometimes when the students apply for revaluation, so by chance he got 5 marks out of 10, but after revaluation he got 8 marks. Okay, so why it should happen? It's a stigma on the system. So it means there is no reliability of our system. So there should not be such kind of things. If your system is perfect, your system is reliable, such things should not happen. Okay? Okay, thank you so much. Thanks to one and all. Thank you. So this is next session, which is going to be taken care of by Professor R.K. Dikshit. He is going to talk about the terminology related to NBA and their significance, because finally, if you know the terminology in correct spirit and sense, then only you will be able to formulate it for your course. So it is very much connected with course outcomes. It is also very much connected with learning outcomes. So try to understand what he is going to tell you related to NBA terminology for vision, mission, PEOs, PSOs, POs, and COs. Before you start, there is just
a suggestion from my side. Those who are sitting on the back side and not having anything table to write, they can come forward. There are chairs left out. Empty chairs are there. नहीं तो आप ऐसे सिर्फ बैठे रहेंगे, लिखने का कभी कुछ होगा, कभी मन किया कुछ लिखने का, तो you would not having the facility to write. So please come forward, because right now like we are in actual mode of training. जितना inauguration होना था, celebration होना था, everything is over by now. We should also come back to academic environment, because we are here for some purpose. थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, we are here for some purpose. और आपको पता है जब आपका सेक्रेटरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलता है that there is some problem with attitude, effective domain भी डेवलप करना है. And India is known for all this. सबसे ज्यादा संस्कारवान हम ही लोग थे. Right from मोहनजोदड़ो हड़प्पा, we are observing all sort of संस्कार. अगर सुबह माँ टीवी चालू करती है तो आस्था टीवी, संस्कार टीवी, पता नहीं कितने सारे टीवी चलते हैं जो हमें संस्कार सिखाते रहते. तो मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक तो आप यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में हैं, सो ट्राई टू चेंज योर मूड फ्रॉम समथिंग एल्स टू दिस. मैं समथिंग एल्स नहीं बोलना चाह रहा. एंड वेन एवर वी हैव पोस्ट लंच सेशंस, वी मस्ट टेक वर्किंग लंच, not the full lunch. Otherwise, what will happen after eating too much? It is going to be converted into glucose, fructose, and finally alcohol. And alcohol, you people are quite aware of. मजा ही अलग है. हाँ, उस अल्कोहल के बाद जो मजा आता है वो आने लगता है फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल बन चुका होता है और वो रिवर्स मारता है, और वो जब रिवर्स मारता है तो आंखें आनंद में चली जाती हैं. दैट आनंद की अनुभूति वी आर नॉट गोइंग टू बी एक्सरसाइज्ड हियर. क्योंकि आपको अगर आप बाय चांस हमारे एंड पे होते, हमारे वेन्यू पे होते, तो आपको एक टेबल एक चेयर स्टूडेंट की तरह मिली होती और आप वर्किंग मोड में दिख रहे होते. अभी थोड़ा सा एक कॉन्फ्रेंस मोड टाइप दिख रहा है कि कॉन्फ्रेंस में आए हैं, बहुत सारे डेलीगेट्स हैं, अपने अपने विचार रखेंगे, देश का भला होगा, बिहार का भला होगा. ये सब यहाँ नहीं हो रहा है. टू दी पॉइंट, यू आर द ग्राउंड मिलिट्री. जो यहाँ से बातें होती हैं वो बहुत अलग रहती हैं. इसको थोड़ा समझिएगा. आप हैं जिनको फाइनली आउटकम बेस्ड करिकुलम इंप्लीमेंट करना है, और यहां से बोलने वाले बोल के जाता है इवनिंग तक एक करिकुलम बन भी जाएगा. दिस इज व्हाट इज दी लाइक स्टेटमेंट दैट बाय इवनिंग यू विल गेट अ करिकुलम, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. माइंड इट. नहीं, जो भी वट एवर इट इज, बट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है तो कम से कम उसका 10% तो हम कर दें. नहीं तो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं, और आप अगर जिस स्पीड से चल रहे हैं, जैसा अभी माहौल है, उसमें इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव इवन अ कोर्स करिकुलम डॉक्यूमेंट ऑफ सिंगल कोर्स. इसलिए हमने कुछ अचीवेबल टारगेट्स रखे हैं, और वो अचीवेबल टारगेट्स ये हैं कि हर फैकल्टी एक कोर्स आइडेंटिफाई कर लेगा, द कोर्स इन विच ही इज कंफर्टेबल. आइदर ही इज टीचिंग एट हिज प्लेस और हर प्लेस, या तो उसे पढ़ा रहा है, या वो पढ़ा चुका है, या वो उस कोर्स में कंफर्टेबल है बिकॉज ऑफ हिज क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन. वो एक कोर्स आपको ऑप्ट करना रहेगा. इसलिए मैं आपके बिल्कुल क्लियर कट आउटकम्स बता दूं, और वो आउटकम्स जब आएंगे देन ओनली इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज क्लोजिंग ऑफ द प्रोग्राम. नहीं तो ये ओपन छूट जाएगा. आपको अपना एक कोर्स ऑप्ट करना है, उसी कोर्स में आपको सीओस बनाना है, उसी के सीओपीओ मैपिंग बनाना है, और उसी से रिलेटेड जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है आपके पास, उसको आपको एनालिसिस करके चेक करना है वेयर इज द गैप. जब मैडम आपको पूरा फॉर्मेट देंगी आउटकम बेस्ड करिकुलम का, तो आपको पता चल जाएगा कि देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर टू बी इनकॉर्पोरेटेड. तो आप क्या करेंगे, जो कोर्स आपको अलॉटेड है उसकी वर्ड फाइल ले लेंगे. अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ से वर्ड कन्वर्ट करके अपने लैपटॉप पे ऑन कर लेंगे. ऑन करने के बाद जो हमने नए सीओस बनाए, दे आर गोइंग टू बी देयर. पुराने सीओस को आप येलो कर देंगे, नए सीओस आ जाएंगे. सेकंड, सीओपीओ मैपिंग मैट्रिक्स आ जाएगी. उसके बाद जो जो भी सजेशंस या इनपुट्स यहाँ से आते जाएंगे वो उसमें फिलिंग करते जाएंगे. फॉर एग्जांपल एलओ फॉर क्लासरूम सेशंस, एलओ फॉर लैब सेशंस. All these things are going to be embedded in that curriculum itself, so that by the end of the program on Friday, before lunch, we will be ready with some document, and then that document is going to be projected here one after another, and then everybody is going to comment on it whether it is okay or not. तो ये सब कुछ होने वाला है. तो आपसे एक करिकुलम का डॉक्यूमेंट 5 दिन बाद निकलना है. इट मे नॉट बी द करेक्ट वन, फाइनल वन, बट मे बी अ ड्राफ्ट वर्जन. भाई पहला ड्राफ्ट बनता है, फिर और थोड़ा प्रयास करेंगे, अच्छा बनेगा. 2 या 3 इटरेशंस में वी विल बी हैविंग अ करेक्ट 15 पेज परफेक्ट करिकुलम कोर्स डॉक्यूमेंट फॉर योर कोर्स. तो एटलीस्ट आप ये बोल पाएंगे कि सर ये मैं कोर्स पढ़ाता हूं और ये मेरा करिकुलम डॉक्यूमेंट है. एंड अगेन देयर इज सजेशन फ्रॉम माय साइड,
आपस में डिस्कस कर लें, आप लोग राउंड टेबल पे हैं, कोर्स ओवरलैप ना करें कि नहीं सर मैं भी यही बना रहा था, ये भी यही बना रहे थे और ये भी यही बना रहे थे। दैट शुड नॉट हैपन। वी ऑल आर टीचर्स, वी अंडरस्टैंड कि कैसे हमें वर्क डिवाइड करना है। तो अगर आप यहाँ 30 लोग हैं एज पर माई लिस्ट, जो भी मैं रोल कॉल करूंगा, देर आर 30 पर्सन ऑन माई लिस्ट प्लस 1 and 2 here and there. 30 means 30 courses. You have to opt one course of your choice. आपके ऊपर चॉइस है। और फिर मैं यहाँ से वो लिख भी दूंगा कोर्सेस नाम के आगे, और हम पूछ लेंगे कि इज देयर एनीवन हु इज आल्सो हैविंग द सेम कोर्स। अगर ऐसा है तो हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपने अपना कोर्स ऑप्ट करने के बाद उसकी वर्ड की फाइल अपने साथ ले आइएगा, कल मॉर्निंग में चालू हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दी सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर कोर्स। नहीं तो आउटपुट नहीं आएगा 5 दिन। हम इसी तरह से हम भी, और हमारे लिए बहुत ईजी है बिकॉज वी आर हैबिचुअल ऑफ सच थिंग्स, तो हम आराम से टाइम पास कर सकते हैं। आपको थोड़ा टाइम लगेगा छुपने में, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम आराम से टाइम पास करेंगे। वी हैव गॉट गुड एकोमोडेशन जस्ट ऑन द 5th फ्लोर हियर इटसेल्फ। हम जाएंगे, आराम करने लगेंगे। हमसे अगर आप कुछ चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी सिंसियर होना पड़ेगा। और जनरली जहां भी हम जाते हैं, हम बिना काम किए कभी नहीं लौटे। हमारी जो वर्क फोर्स है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम आके बोले कि यार मजा नहीं आया, कोर्स हो नहीं पाया। कैसा भी पार्टिसिपेंट मिले, हम उससे काम करा के लेंगे। दिस इज अवर मोटिव। हम इतने ज्यादा मोटिवेटेड है इंटरनली कि हम लास्ट डे 30 कोर्स करिकुलम डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, हम उस पर नोट ऑफ डिसेंट लिख देंगे कि सर वी आर नॉट रेडी विद दिस, क्योंकि दी फैकल्टी, पर्टिकुलर फैकल्टी इज नॉट कोऑपरेटिंग विद अस। हम यही कर पाएंगे। सो इट इज बेटर कि हम पहले दिन से ही करेक्ट हो जाएं। वी शुड हैव अ स्मॉलर लंच सेशंस, बिगर एकेडमिक सेशंस। और लंच का भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं देखता हूँ फिजिबिलिटी कितनी है। अगर हम ये सेटअप ही कहीं और कर लेंगे तो एटलीस्ट जो 30 में से 25 लोग या 20 लोग ऑन हो चुके हैं, उनका नुकसान ना। नहीं तो अभी क्या हो रहा है, ये पूरा जो डिले है इसमें सबका नुकसान होता है। तो आप अपने चॉइस का, मैं भी यहाँ पर नाम ले रहा हूँ, आप अपने चॉइस का कोर्स अपने नाम के आगे लिख लीजिए। Within 2 minutes, I will finish this exercise. Then I will request Professor Dikshit to continue with his session. The very first name is Professor Mohammad Ikram Ahmed, Ikram Arshad. Sir, आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं? इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स, सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर। मैडम प्रोफेसर शिव प्रकाश सिंह, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर। प्रोफेसर अभिषेक कुमार रंजन, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमेस्टर 4 3rd। प्रोफेसर दिग्विजय, ग्रेट, कितना क्लियर है देखिए। इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क, 3rd सेमेस्टर, एक स्ट्रोक में। इतने ही करिकुलम डॉक्यूमेंट पक्का निकल के आएगा। प्रोफेसर रंजीत राज जी, टूल इंजीनियरिंग, सेमेस्टर 4। प्रोफेसर अमित नारायण मिश्रा, प्रोफेसर सिद्धार्थ मलिक, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, सेमेस्टर 5th 6th। प्रोफेसर निखिल पटेल, TOM and machines, theory of machines and mechanisms, semester 4। Dr. Ashutosh Kumar, sir, automobile system, 4th semester। Professor Kumar Iqbal, MOM, mechanics of materials, 4th semester, 3rd semester। फिर लिख दीजिए। प्रोफेसर आकाश कुमार, प्रोफेसर चंदन कुमार, प्रोफेसर आशुतोष कुमार,
Sir. Hydraulics. Only hydraulics. Hydraulics. Fourth semester. Professor Nitesh Kumar Singh. Sir. Linear integrated circuits. Fourth semester. Professor Abhimanyu Kumar. Sir. Digital electronics. Third semester. Digital electronics. Third semester. Professor Roma Rani. Sorry. Professor Roma Rani. Yes. इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क्स. किसी और ने तो नहीं ऑप्ट किया था? वो इलेक्ट्रिकल में था, तो दोनों पेपर अलग है. नहीं, कंटेंट अलग. ऐसा किसी को कोर्स सेम हो? इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क और दूसरा इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क. आपका वाला इलेक्ट्रिक सर्किट कर दूं, नेटवर्क हटा दूं? मैडम यहाँ से इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क हमें यही करना है. वी शुड नॉट हैव ओवरलैप. ये देखिए, आप किसी भी आदमी से बोलेंगे, मैं भी कहीं से भी बच्चे को डाउन से पूछूं इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क इलेक्ट्रिकल, तो बोलेगा सर 80% तो सेम ही होगा. तो वी शुड नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप. हम अपना कोर्स अलग कर लें. एंड नेटवर्क इलेक्ट्रिक सर्किट No issues. Professor Sunish Chadha. Chandra, sorry. I am sorry for the wrong pronunciation. Microcontroller and applications. Professor Santosh Ray. Professor Santosh Ray. Okay, remove it. Professor Vinod Kumar. प्रोग्रामिंग इन पाइथन. और देखिए, एक काम याद रखिए, ऐसा कोर्स सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें आप कंफर्टेबल और सीओस फ्रेम कर पाएं. प्लस दैट कोर्स मस्ट नॉट बी वेरी ट्रिवियल, कि बहुत ही छोटा कोर्स है, क्योंकि ज्यादातर इसमें थर्ड सेमेस्टर के कोर्सेज आ रहे हैं. फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही वो लोग ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक मैकेनिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक कंप्यूटर साइंस, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये सब करके निकल जाता है. तो थर्ड सेमेस्टर के अगर आप कोर्स ले रहे हैं तो अच्छा हो कि थोड़ा सा बेटर कोर्स ले लें, फोर्थ तक तो जाएं, बिकॉज वी आर हेयर टू सपोर्ट यू. अभी अगर आप हमारे साथ थोड़ा कुछ डेवलप कर लेंगे विच इज लिटिल बिट डिफिकल्ट कोर्स, तो बाद में इजी रहेगा. प्रोग्राम इन पाइथन थर्ड सेमेस्टर फोर्थ. प्रोफेसर दीपक कुमार, डेटा स्ट्रक्चर थर्ड सेमेस्टर. प्रोफेसर मोहम्मद अफरोज, लियन मैन्युफैक्चरिंग. यान, ओके, यान मैन्युफैक्चरिंग. यू आर फ्रॉम टेक्सटाइल. जी, फिफ्थ सेमेस्टर. जी. प्रोफेसर सूर्यनाथ चौधरी, फैब्रिक स्ट्रक्चर एंड डिजाइन 1. बाद में हम ये भी समझेंगे कि जो डिजाइन 1 हमारे मैकेनिकल में भी. जी, फोर्थ सेमेस्टर. बाद में हमें ये भी समझना होगा कि जो हम बोलते हैं मैकेनिकल में भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 1, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2. अब सोचिए, मैथ्स 1, मैथ्स 2 इंडस्ट्री वाले के पास गया, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 1 या 2 इंडस्ट्री वाले के पास गया, वो क्या समझता होगा 1 और 2 से? है ना कंफ्यूजन? तो हम थोड़ा कोशिश करें वो नाम लिखें जो उसमें है, उससे रिलेट कर दें, राधा देन ये 1, 2, 3. ये पहले होता था विक्रमादित्य प्रथम द्वितीय, अब नहीं होता है. कोर्स में कोर्स ही लिखना पड़ता है, सो दैट दी सेम थिंग कैन बी कम्युनिकेटेड टू दी एम्प्लॉयर्स. ठीक है सर, थोड़ा कोशिश करेंगे, पर ये बड़े लेवल पे चेंज है. मैं आपको ये वो गैप्स बता रहा हूं जो अभी आपके एग्जिस्टिंग करिकुलम में है, विच आर टू बी रिपेयर्ड इफ यू आर कॉलिंग इट आउटकम बेस्ड करिकुलम. ये मतलब आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे भी चेंजेस लाना पड़ेंगे. जी सर. इलेक्ट्रॉनिक्स का 20 to 30% सिलेबस सेम है. कोई बात नहीं, बाकी 70 अलग है. ग्रेट, यू आर ऑनेस्ट, यू विल गेट मार्क्स फॉर ऑनेस्टी. प्रोफेसर राज कमल प्रसाद, टेक्सटाइल टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, QC, टेक्सटाइल टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल.
4th semester, 6th, great. Dr. Meenakshi, applied chemistry. Semester 2nd, 1st, दोनों में, great. सेकंड वो एक ही होगा जो ऑफर किया था, कभी सेकंड में कभी फर्स्ट में. The curriculum will say. Professor Jay Ranjan, sir. Process in transfer. Heat transfer, अच्छा. Process heat transfer. ये heat and mass transfer. Heat transfer only. और आगे? Process heat transfer. 6th, 4th. Professor Upendra Ravidas. जी. Applied Physics 1. Semester, sir? First semester. Professor Rameshwar Pandey. Professor Rameshwar Pandey. जी सर. जी, मैथमेटिक्स फर्स्ट. 2 नहीं करेंगे आप? 2 भी तो पढ़ाते हैं, इंट्रोडक्शन में बताया था. अच्छा अच्छा, चलिए कुछ उनके ऊपर कृपा हुई. गुड. सेमेस्टर 1. ओके, पब्लिक 2 जी. प्रोफेसर अभय कुमार सर. Ceramic and raw materials. Ceramic and raw materials. सेमेस्टर कौन सा बताया सर? 3rd. Professor Abhay Kumar Giri, English. Communication skills in English. Professor Ranjita Tiwari. There is only one course. There is no another course, technical English. No. Okay. There is another like gap. Term works, but theory papers. Okay, no issues. So be seated, madam. So there is another gap, like we must have 2 English. One is like communication in English, this, and then technical English also. We have that. We used to have, but finally it has been dropped. Okay, We want communication. very Here good. we had communication skills 1 and communication skills 2. So we had theory part in 1 and technical and yeah. Generally, many universities, because we are also preparing curriculum for different boards, so they are having business communication also, technical communication also. So those things are also there. But anyways, right now, मैडम इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी है लैंग्वेज लेवल, तो आप उसको क्रिएट कर लीजिए, तो जिससे कम से कम आपका पूरा सेट कवर हो जाएगा सर और आपके साथ. सर कोऑर्डिनेशन से थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ शुड बी कंप्लीटेड. ग्रेट. सो फाइनली दीज आर द दिस इज द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो पूरे कंप्लीट हो गए. एनीबॉडी हु हैज लेफ्ट आउट? इसमें छूट गया ऐसा कोई आदमी है? नहीं. जो लोग एक्स्ट्रा हैं वो कौन है सर? अदर देन दिस लिस्ट, please raise your hand who are like extra. 1 2 1 2 3 4 5 5 लोग और हैं. ओके जी, आप भी हैं 6. ओके, आप मैडम क्या देख रहे हैं? कोऑर्डिनेटरशिप ऑफ व्हाट? गूगल क्लासरूम. मैथमेटिक्स का. हाँ, प्लीज क्या बता रहे हैं? मैथमेटिक्स के भी कोऑर्डिनेटर हैं और गूगल क्लासरूम जो बना है सारे. अच्छा, तो मैथमेटिक्स के टीचर्स अभी एक आप हुए, एक सर हुए, तो फिर मैथमेटिक्स 2 आ गया कि नहीं आया इसमें? तो 2 को बना लीजिए, थोड़ा सा 2 को मिलके बना लेंगे तो अच्छा हो जाएगा. Fine. So right now I have got a list of almost 30 faculty members who are going to contribute in curriculum development of 30 different courses. इसमें कोई भी कोर्स ओवरलैप नहीं हुआ, that is the good thing. तो हमारे पास ये फाइनल लिस्ट आ गई है. From tomorrow जी. अच्छा, हाँ कर लीजिए ना. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड मैडम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हमारा नहीं.
ये वाला जी मैडम बोलिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। किसी ने लिया तो नहीं, ये किसी ने लिया तो नहीं, मेरे को लिया है। कौन सा सेमेस्टर? थर्ड सेमेस्टर। तो कल मॉर्निंग में आपके पास इसकी वर्ड कॉपी होना चाहिए। जब हम सीओस क्रिएट करेंगे, एलओस क्रिएट करेंगे, इसमें पहले फिट करते जाएंगे। जब मैडम आपका सेशन लेंगी सजेस्टेड फॉर्मेट पे, जो फ्रेश फॉर्मेट होगा हमारी तरफ से, वो वर्ड का फॉर्मेट हम आपको दे देंगे। तो यू हैव टू ट्रांसफर एवरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर टू दिस न्यू वर्ड फॉर्मेट। जहां जहां गैप आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वहां खाली गैप छूटेगा, दैट विल बी द गैप विच इज गोइंग टू बी देयर। उसके लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेंगे आफ्टरवर्ड्स। इन दीज 5 days इट इज नॉट पॉसिबल। और ये मैं आपके सीनियर्स को, ऑफिशियल्स को भी कम्युनिकेट करूंगा कि ये पॉसिबल हो पाया इन दीज 5 days। एंड दीज आर दी 30 कोर्स करिकुलम डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट वर्जन जो 1 बोल रहे हो। वर्जन 2 में द फिलिंग अदर पार्ट इज गोइंग टू बी डन। देन वर्जन 3 में कुछ दूसरे कोर्सेज चालू किए जाएंगे। जनरली व्हाट वी आर डूइंग एट अदर प्लेसेस, हम सेमेस्टर 1 के लिए एक वर्कशॉप रखते हैं, डेवलपमेंट वर्कशॉप, जिसमें सब मिलकर डेवलप करते हैं सेमेस्टर 1 ऑफ ऑल दी ब्रांचेस। देन सेमेस्टर 2, देन सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, 6 हम वर्कशॉप्स रखते हैं फॉर डेवलपमेंट। और 6 वर्कशॉप्स होती हैं पैरेलली, वन आफ्टर अनदर, वैलिडेशन। तो पहले फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपने करिकुलम डेवलप किए डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड, उसी की वैलिडेशन में, वैलिडेशन वर्कशॉप में वो वैलिडेट होते हैं। एंड द सेम थिंग इज गोज विद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर। तो जब आप 6 सेमेस्टर का कंप्लीट कर लेते हैं तो 6 सेमेस्टर के हम वैलिडेट कर लेते हैं और फिर एक लास्ट वर्कशॉप रखते हैं टू वैलिडेट द कंप्लीट करिकुलम। दिस इज हाउ द थिंग्स लाइक आर प्लान्ड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग द कंप्लीट करिकुलम डॉक्यूमेंट फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांच। एक प्रोग्राम के लिए करिकुलम डॉक्यूमेंट डेवलप करने के लिए ये हम प्रोसेस लगाते हैं। मैडम हैज गॉट फ्यू सैंपल्स आल्सो जो हमने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के लिए डेवलप किया है। तो आपको पता चलेगा इट्स अ बिग बुक, स्पाइरल बुक रहती है। अब आप खुद ही लगा लीजिए, देयर आर 30 कोर्सेज एंड 15 पेजेस और से 10 पेजेस पर कोर्स। सो 10 into 30, 300 पेज की एक बुकलेट होगी स्पाइरल, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज करिकुलम डॉक्यूमेंट ऑफ दैट प्रोग्राम। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। इस तरह का सिचुएशन होती है। ये तो अभी कुछ कम सेमेस्टर की है, ये एक सेमेस्टर की बुकलेट है। ऐसी 6 बुकलेट्स मिलके कंप्लीट डॉक्यूमेंट बनता है। दूसरी बुकलेट भी मैडम पे है। दिस इज ओनली फॉर 1 सेमेस्टर। उस सेमेस्टर में जितने भी कोर्सेज होते हैं उनसे रिलेटेड इसमें डॉक्यूमेंट होता है। ऑलमोस्ट 14 to 15 पेजेस लगते हैं। देन ओनली इट वुड बी अ गुड करिकुलम, आउटकम बेस्ड करिकुलम। तो दिस इज ऑल। हम इसी टाइमलाइन पे रहेंगे। कल से थोड़ा सा लंच सेशन कम रहेगा और हम टाइम से लंच फिनिश करेंगे। और मैं आपको बताऊं, देखिए एटिकेट्स या जिसको आप कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स, वो हमें खुद ही में होती हैं, वो कोई सिखा नहीं सकता। कोर्सेज तो बहुत से ऑफर कर देंगे, हमें पैसा मिलेगा तो हम ही ऑफर करने लगते हैं और हम बहुत से लोगों को पैसा लेके करते हैं। लेकिन हम जो करते हैं उससे मोटिवेट कर सकते हैं, थोड़ा ठीक कर सकते हैं, बट वी विल नॉट बी एबल टू इनकलकेट गुड हैबिट्स और एथिक्स और समथिंग लाइक दैट। और एक पूरा का पूरा पीओ है एथिक्स से रिलेटेड। पीओ नंबर 5 इज, लास्ट वन इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, 6th वन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, 5th सस्टेनेबिलिटी, सोसाइटी एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो जब हम खाना खाएं तो हम क्विकली लाइन से आएं और क्विकली उसको लेके निकल जाएं और हम कहीं दूसरी जगह सेटअप कर लें, जिससे यहाँ पर टाइम से सेशन स्टार्ट हो सके। यहाँ बैठ के खाना खाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि हम यहाँ खाना खा रहे हैं, यहीं प्रोफेसर पढ़ा रहा है और यहीं करिकुलम भी डेवलप होने वाला है। गुरुकुल में भी अलग अलग जगह होती थी हर चीज की, मिक्स नहीं कर सकते अपन, है ना। तो विद दिस इंटेंशन आई वुड रिक्वेस्ट प्रोफेसर दीक्षित टू प्लीज स्टार्ट हिज सेशन। आप लोग अपने आप को थोड़ा ऐसा अलाइन कर लीजिए कि आप लिख सकें। कुछ सीट्स यहाँ खाली हैं। देखिए, लाइक माइंडेड प्रोफेसर अगर एक साथ बैठते हैं कोई बुराई नहीं है, पर थोड़े समय के लिए अलग भी बैठ सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि दोस्ती यहाँ भी कायम रखी जाए। थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। मैं आपको अपना LNT का सेटअप भी दिखाऊंगा जो हम लोग जो यूज करते हैं ट्रेनर्स के लिए, और वो ITI इंस्ट्रक्टर्स। और आप बिल्कुल मानेंगे वो अपने अपने सर्कल्स पे रोज उसी जगह बैठते हैं और बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ कंप्लीट करते हैं। मैं आपको शो करूंगा, कुछ फोटोग्राफ्स मैंने लिए थे। इन दिस सिमिलर मैनर वी शुड ऑल्सो शो दी प्रोफेशनल एटीट्यूड, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, कि हम एक साथ बैठ जाएं। सर, ओवर टू यू। Okay, very good afternoon to all of you. एक सेकंड। हेलो, मैं भी बिजी हूँ और पटना में हूँ। 5 चैप्टर के बाद आता हूँ। तो okay, this session is about introduction to NBA
accreditation for diploma programs of our polytechnics. So we are next. We are going to learn many terms here because many terms are used in NBA accreditation. So at the end of the session, you will be able to explain terms related with NBA accreditation, such as vision, mission, program education objectives, program outcomes, program specific outcomes, and course outcome. We will discuss about these terms. What is the meaning of these terms? What is the importance of these terms? What do they actually mean for your diploma programs, and how are they going to be there in your curriculum document? Now, if you have to ensure quality of technical education or engineering education, what are you going to look for? एक सिंपल केस लीजिए, आपके अपने बच्चे को या इंजीनियरिंग कॉलेज या डिप्लोमा में एडमिशन देना है, दिलाना है, तो आप क्या देखना चाहेंगे, क्या देखेंगे वहां पे? हाँ, प्लेसमेंट प्रोफाइल, एक चीज प्लेसमेंट प्रोफाइल हो गई, और सिर्फ प्लेसमेंट प्रोफाइल देखेंगे? कॉलेज का अप्रूवल है कि नहीं, ये आईसीटी अप्रूवल है कि नहीं, ये भी देखेंगे। एक्रेडिटेशन नहीं देखेंगे, सिर्फ अप्रूवल है चल जाएगा। और क्या देखेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। पॉलिटेक्निक के लिए एनआईआरएफ रैंकिंग नहीं है वैसे, पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए है, ठीक है। तो एनआईआरएफ सभी को रैंक नहीं करता, सिर्फ टॉप कुछ कॉलेजेस को रैंक करता है। एनआईआरएफ रैंकिंग भी है, वो भी एक तरीके का पैरामीटर। और क्या देखेंगे? करिकुलम देखेंगे, वेरी गुड। और प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स मैडम ने बोल दिया है तो रिपीट मत करिए। प्लेसमेंट प्रोफाइल, प्लेसमेंट सैलरी पैकेजेस, वो सारी चीज एक साथ आ जाएगी। वो एनआईआरएफ में भी रहता है, मीडियम सैलरी पैकेजेस। और किस चीज? एज ए पेरेंट जब एडमिशन कराना है, हाँ, तो करिकुलम कैसे देखेंगे? कोई पेरेंट तो किसान भी हो सकता है, तो करिकुलम तो नॉर्मली उनकी वेबसाइट पे ही रहेगा। आपके भी करिकुलम वेबसाइट पे होंगे। मेरा मतलब है कि वो कैसे समझेंगे? एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉलेज देखेंगे, कॉलेज का क्या होगा, जैसे मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे मालूम है कि क्या देखना है। वैसे मैं अगर आर्ट्स, जैसे मैंने अपनी लड़की का एडमिशन आर्ट्स कॉलेज में कराया था, तो मैं उनके भी करिकुलम अच्छे से स्टडी की थी कि क्या उनका करिकुलम है, व्हाट आर द असेसमेंट प्रैक्टिसेस, व्हाट इज द टीचिंग लर्निंग, वो सब। तो जिसको इंटरेस्ट होता है, आपको, आप ऑटोमोबाइल में नहीं होंगे, लेकिन अब आप बाइक खरीदने जाएंगे तो आप ऑटोमोबाइल का पूरा समझ के जाएंगे, क्या माइलेज होता है, 2 स्ट्रोक इंजन है कि 4 स्ट्रोक इंजन है, वो सब आप समझ लेंगे। जबकि ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं है, मेजॉरिटी लोग करते हैं। क्योंकि आपका इंटरेस्ट किसी चीज में होगा तो आप कोशिश करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा चीज पता कर सके। क्योंकि क्या है, एडमिशन आपने दिलवा दिया, अब हर साल नए कॉलेज में नहीं दिलवाएंगे एडमिशन। एडमिशन से लॉन्ग टर्म, 4 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा या 3 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा करना चाहेंगे ना। जब आप अपनी लड़की की शादी करते हैं तो काफी अच्छे से देखते हैं, पूरी सब चीज पता कर लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि दिस इज वन टाइम अपॉर्चुनिटी, यू आर नॉट गोइंग टू हैव कि हर साल नई मैरिज करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए भी अब बच्चे को एडमिशन करा रहे हैं तो अब देखेंगे ये चीज। और क्या देखेंगे? कैंपस बोल दिया, एडमिशन, हाँ, कैंपस फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिया है। हाँ, टीचिंग एनवायरनमेंट, ठीक, क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर ये देखेंगे। और वेरी गुड, एटलीस्ट समबडी हैज सेड अबाउट फैकल्टी। मेरे को लगा था सबसे पहला चीज तो आप लोग ये बोलोगे, आप सब फैकल्टी मेंबर्स हो ना, तब ये बोलोगे हम तो ये देखेंगे जहाँ की फैकल्टी सबसे अच्छी होगी, सब MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड से होंगे या IIT से होंगे, वहां पे हम भेजेंगे। पर एनीवे, फैकल्टी भी आ गया। तो ये सब तो ठीक है, आपने ये सारी चीजें देखी। नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट करते जाना, पूरा करते हो। मुझे तो पूरा बोला नहीं आ जाए ना, इसलिए मैंने फैकल्टी सबसे पहले देखा था। सम ऑफ द थिंग्स आई मेंशन्ड हियर, कई चीज जो आपने बोली है, AICTE अप्रूवल एक्सेट्रा, वो गवर्नेंस में आ जाएगा, उनके सारे रिकॉर्ड्स हैं कि नहीं है। फैकल्टी सबसे पहले लिया था फैकल्टी, बिकॉज फैकल्टी किसी भी इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा क्वालिटी का एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिसके कारण प्लेसमेंट अच्छे होंगे। फैकल्टी पुअर है तो प्लेसमेंट भी पुअर रहेगा। तो स्टूडेंट, प्लेसमेंट, सैलरी, करिकुला, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, infrastructure, processes, governance, there are large number of things which you will be looking into. तभी आप अपने बच्चे का एडमिशन वहां पर कराएंगे। तो these are the things you will look for in a good institution. तो लेट्स से आपके बच्चे का एडमिशन IIM अहमदाबाद में हो गया या IIT बॉम्बे में हो गया, तो अब जाके देख के आएंगे क्या फैकल्टी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, देखेंगे।
देखेंगे कि भेज देंगे भाई हार्वर्ड, अब देखेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, हैं? अगर MIT में है, MIT यहाँ का कोई MIT नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट MIT US का, या स्टैनफोर्ड है, या हार्वर्ड है, या IIT बॉम्बे है, IIT कानपुर है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर ब्रांड इन देमसेल्व्स। तो जब आपका कोई, हाँ, और फैकल्टी, कौन सा क्राइटेरिया देखेंगे फैकल्टी? फैकल्टी में सबसे पहले तो उनका कॉम्पिटेंस देखेंगे ना, कि वो कहाँ से पढ़ के आए। अगर वो अच्छे एनवायरनमेंट से पढ़ के आए, जैसे कोई IIT की फैकल्टी है, या हार्वर्ड से आया हुआ है, ऑक्सफोर्ड से आया हुआ है, तो आप एक इम्प्रेशन बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन मिलना आसान नहीं होता, उनको बड़े मुश्किल से एडमिशन मिलता है। किसी भी ये जो यूनिवर्सिटीज के नाम ले रहा हूँ मैं, इनमें अगर फैकल्टी देखेंगे बड़े मुश्किल से मिलता है। तो अगर किसी के बहुत सारे IIT या बाहर की अच्छी फैकल्टी है, तो यू विल लुक फॉर केस की क्वालिफिकेशन अच्छी है, तो दे विल बी हैविंग गुड नॉलेज, क्योंकि पास भी होके अच्छे से नहीं आ सकते फिर। ठीक है, एडमिशन मिल भी गया किसी तरीके से, तो पास होना मुश्किल हो जाता है। मैनी पीपल ड्रॉप आउट। IIT में PhD की ड्रॉप आउट रेट 50% है। 50% लोग कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि दे कैन नॉट गो थ्रू दैट रिगरस प्रोसेस जितनी। और बाकी जगह आपको 2.5-3 साल में PhD मिल जाएगी। किसी भी IIT से अगर आपको PhD करनी है, प्रधान साहब तो हैं ही, उनको मालूम है कि बाकी जगह से करते तो 2.5 साल में 3 साल में प्रोफेसर बन जाते हैं, उनको 5 साल लगा, क्योंकि वहां पे आपको टाइम लगता है। दैट रिगरस प्रोसेस टेक्स टाइम, दैट्स हाउ द क्वालिटी इज built into the product. So next, there are basically 2 ways of ensuring quality. One is you become a brand name. ब्रांड नेम है तो कोई पूछने वाला नहीं है। मैडम थोड़ा शक्की मिजाज की है, इसलिए वो जाके IIT को चेक करके आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टी ठीक ठाक है कि नहीं। पर अगर किसी बच्चे का IIM में या MIT या हार्वर्ड में होगा, they will not waste their money to even go and check कि फैकल्टी है कि नहीं है, शॉर्टेज तो नहीं चल रही है, पढ़ाई होती कि नहीं होती है, गोल तो नहीं लगते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो there are only 2 ways of ensuring quality. One is an institution becomes so established, then nobody questions, virtually nobody questions that. So that is something like IIT, IIM, MIT इस तरीके के हैं। या दूसरी चीज है, क्वालिटी इज सर्टिफाइड बाय एक्सटर्नल एजेंसी, जैसे NBA है, पिछले वाले में रखिए, दैट इज कॉल्ड एन एक्रेडिटेशन एजेंसी। जितनी चीज आपने बोली, चाहे आपने फैकल्टी बोला हो, चाहे प्लेसमेंट बोला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बोला हो, चाहे गवर्नेंस बोला हो, AICT की बोला हो, ये सारी की सारी चीजें NBA के क्राइटेरिया में आ जाती है। इवन वो ये भी देख लेते हैं कि आपका AICT का अप्रूवल है कि नहीं फॉर द लास्ट 3 years, जब प्रोग्राम को हम असेस कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी उसमें आ जाती है। तो देयर आर ओनली 2 ways ऑफ इंश्योरिंग क्वालिटी। वन इज आइदर यू बिकम ब्रांड, और ब्रांड बनने में बहुत टाइम लगता है। हार्वर्ड कोई 5 साल या 10 साल में ब्रांड नहीं बन गया। हार्वर्ड आपको मालूम कैसे शुरू हुआ था? हार्वर्ड वाज अ मिशनरी कॉलेज। उनका बेसिक जो एम था वो क्या कहना चाहिए, रिलीजियस पर्सन प्रोड्यूस करने का था, जो कि चर्च उस समय काम कर सके। बाद में जब उनकी डिमांड बढ़ी तो उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐड किए। आजकल वो लिबरल आर्ट्स का बहुत बड़ा कॉलेज माना जाता है, बट दैट टुक 200 years टू डेवलप। इवन IITs 5 साल में IITs नहीं बनी। जब उनके स्टूडेंट अब्रॉड में चले गए, मेजॉरिटी ऑफ द टॉप ऑर्गेनाइजेशंस आर बीइंग हेडेड बाय देम। और तो और न्यूयॉर्क टाइम्स में कार्टून स्ट्रिप निकलती है जो IITs के नाम पे, कि हाउ IIT people behave. So very comic and very funny strip. So then you become a brand. When everybody knows you, yes, then nobody questions you actually. The second thing is there should be an external agency which certifies your quality based on ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया। क्राइटेरिया जो भी होते हैं वो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट होते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए 10 क्राइटेरिया हैं, और डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए 9 क्राइटेरिया हैं। उसके बारे में प्रोफेसर प्रधान बताइए। अच्छा, मेरे प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड हैं जिनको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज आई विल बी अपलोडिंग मेनी ऑफ द स्लाइड्स। अब मेरा टाइम भी रिस्ट्रिक्टेड है, तो जो इंपॉर्टेंट स्लाइड है आई विल डिस्कस देम, एंड अदर्स आई विल जस्ट अपलोड देम सो यू कैन रीड देम। ओके, नेक्स्ट। तो NBA के डॉक्यूमेंट में पहले इन्हें एक्रेडिटेशन को जनरली डिफाइन किया है, व्हाट इज एक्रेडिटेशन, देन दे हैव डिफाइंड व्हाट इज NBA एक्रेडिटेशन। तो व्हेन दे हैव डिफाइंड जनरल एक्रेडिटेशन, दैट इज accreditation for any educational institution in general means that the institution, department or program
meets the standard of quality as set by the accreditation agency in terms of its performance related to वही सारे criteria, educational processes, outcomes, curriculum, teaching learning process, evaluation, faculty, research, infrastructure, learning resources, organization, governance, financial well-being, and student service. ये सारे के सारे criteria हैं which are integrated in to 9 and 10 criteria. ठीक है? तो accreditation किसी भी institution के लिए, अब accreditation कई तरीके का होता है. यहाँ पे हम NBA के accreditation की बात कर रहे हैं, which is basically a program accreditation. तो कोई भी institute को accredit नहीं करता. Even all the programs are accredited. It is not called that institute is NBA accredited. It is only the program that is accredited. This other agency, NAC, जो कि आपके institutional और departmental, उनके accreditation का काम करती है. Next. Now NBA in its general manual defines what is NBA accreditation. NBA accreditation is a process of quality assurance and improvement. आज मैंने मॉर्निंग में भी बोला था गुणवत्ता की हम कैसे गुणवत्ता लाएं हमारे प्रोग्राम्स में. तो NBA accreditation is a process of quality assurance and improvement whereby a program in an institution is critically appraised to verify that program continues to meet and exceed the norms and standards prescribed by appropriate designated authorities. तो ये NBA accreditation की definition है कि वो critically appraise करते हैं सभी criteria को जो उन्होंने already define किए हुए हैं. जैसे एक criteria है pre-qualifier. अगर आप प्री क्वालिफायर को पास नहीं करते हैं तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर एक्रेडिटेशन. तो ये सारे के सारे ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया है. उसमें लिखा हुआ है कि कितना आपको स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो चाहिए या कितना एडमिशन चाहिए. ये सारी चीज बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से बताई गई है. ठीक है. नेक्स्ट. सो इन समरी व्हाट वी कैन से इज इट इज अ काइंड ऑफ रिकॉग्निशन दैट इंडिकेट्स a program fulfills certain standards. जो जहाँ जहाँ accreditation हुआ है, so that is minimum quality assurance is there. कम से कम ये quality जितनी minimum quality चाहिए program की वो quality है. और in summary we can say accreditation is a process of quality assurance and improvement. ठीक है? Anybody has a question about accreditation? What is accreditation? And how it is different in approval? आपने सुना होगा ना AICTE approval होता है और NBA accreditation होता है. तो what is the difference between AICTE approval and NBA accreditation? बताएंगे कोई? AICTE भी जो अप्रूवल देता है प्रोग्राम की ही देता है, इंस्टीट्यूट की भी देता है, पर इंडिविजुअल प्रोग्राम्स की भी देता है. और हर साल वो आपका रिन्यूअल भी करता रहता है LOA. हाँ. NBA basically check the quality assurance given to the students or stakeholders. और अप्रूवल क्या होता है? AICTE gives administrative approval to any organization to run such program. Yes. Some infrastructure of labs and necessary. AICTE भी देखता है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी देखता है. So what is the difference between approval and? जैसे AICTE में अप्रूवल दे दिया, ठीक है, तो मैं जा सकता हूँ NBA accreditation के पास? नहीं सर, पहले सेटअप करना होगा, सब कुछ करके 2-3 साल, 2 साल बाद सेटअप किया जा सकते हैं. अब हमको NBA accreditation program नहीं, तो we would have discussed the policy also. At least 2 batches should be passed. क्योंकि क्वालिटी कहाँ से देखेंगे? क्वालिटी अपने ग्रेजुएट्स की क्वालिटी क्या है? 2 बैच पास आउट होंगे तो पता लगेगा कि एम्प्लॉयमेंट हुआ है, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारी चीज, उनकी एक्टिविटीज किस तरह की थी, क्या उनका स्टूडेंट्स का कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज हो रही थी, मैगजीन निकल रही थी. तो बेसिकली वंस अप्रूवल हैज बीन गिवन एंड प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड, एटलीस्ट 2 बैचेस हैव पास्ड आउट, तो देयर इज सफिशिएंट रिकॉर्ड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. वो AICTE नहीं देख सकता क्योंकि तो अप्रूवल ही दिया, अभी तो चालू ही नहीं हुई टीचिंग लर्निंग. तो जो चीजें NBA देखता है वो AICTE नहीं देख पाता है क्योंकि उस समय प्रोग्राम शुरू ही नहीं हुआ था. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तब देखेंगे ना जब चालू हुई है, तभी मार्क्स देखेंगे, आपके असेसमेंट स्कीम्स क्या है, आउटकम्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. हाँ या जब EOA हम लोग अप्लाई एक्सेशन पर अप्रूवल अप्लाई करते हैं उस टाइम तो वो सारा इंफॉर्मेशन में दिखाते हैं AICTE पे. क्या आप EO फैकल्टी भी आपकी नहीं होती उस समय? क्या आप
अप्रूवल के लिए देते हैं, कोई नया इंस्टीट्यूशन शुरू करते हैं, तो आके आपके सब क्लासरूम मेजरमेंट करते हैं, ये देख लेते हैं कि फैकल्टी का एडवर्टाइजमेंट निकल गया कि नहीं निकल गया, रिक्रूट नहीं होती उस समय तक। तो मेरा कहने का मतलब जब मैं इंस्टीट्यूट से मेरा रन कर रहा है, हाँ। काम रन कर रहा है, तो जब सेशन ऑफ अप्रूवल अप्लाई करते हैं उस टाइम तो हम सारा डिटेल्स को देते हैं। हाँ, डिटेल्स देते हैं, पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं देते हैं आप उसमें, इसमें आउटकम्स नहीं देते। आउटकम्स एक्चुअली ये पूरा एक्रेडिटेशन जो है आउटकम बेस्ड एक्रेडिटेशन है, तो इट इज बेस्ड ऑन सम वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसके बारे में आज मैडम ने बात किया, आउटकम बेस्ड एक्रेडिटेशन। ये पूरा एक्रेडिटेशन है आउटकम बेस्ड एक्रेडिटेशन। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आउटकम शुड बी अचीव्ड। तो थोड़ा सा एक हमें समझना चाहिए व्हाट इज नॉट एन एक्रेडिटेशन। पहला चीज तो है इट इज नॉट अ रैंकिंग प्रोसीजर। यहाँ पे कोई प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर इस तरीके की चीज नहीं दी जाती। इट इज बेसिकली या तो आपको एक्रेडिटेशन मिला है या नहीं मिला। इट कुड बी यू मे गेट फॉर 3 years, यू मे गेट फॉर 6 years, बट देयर इज नो ग्रेडिंग एज सच। जैसे ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग ए बी सी ऐसा का नहीं है, या गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज नहीं है, या 1 2 3 इस तरीके की ग्रेडिंग नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस इस तरीके की कोई ग्रेडिंग एनबीए एक्रेडिटेशन में नहीं है, नेक के एक्रेडिटेशन में है। एंड जब हमारी न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंप्लीमेंट हो जाएगी तो वहां पे भी ग्रेडेड एक्रेडिटेशन आ जाएगा। ये अभी के लिए एट प्रेजेंट देयर इज नो रैंकिंग प्रोसीजर, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो ये न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो कहती है कि हम ऑटोनॉमी देंगे सबको, एंड दैट ऑटोनॉमी विल बी लिंक्ड विद ग्रेडेड एक्रेडिटेशन। तो जिस ग्रेड का एक्रेडिटेशन है उस ग्रेड की ऑटोनॉमी मिलेगी। बाय 2035 we will reach a stage where all institutions would become autonomous. After that, accreditation process will become binary. जो अभी है, या तो आपको accreditation मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। Binary का मतलब ये होता है yes and no. बहुत सारे कंप्यूटर वाले हैं यहाँ पे, तो binary is yes and no. पर वो national education policy implement हो जाएगी, and when all institutions become autonomous, that is every day achieves the highest grade, उसके बाद yes and no में चलता रहेगा। ठीक है। दूसरा, इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, इट इज नॉट बेस्ड ऑन सर्टेन कंप्लेंट्स कि किसी ने कंप्लेंट की इंस्टीट्यूशन की उसके कारण एनबीए एक्रेडिटेशन की टीम आएगी। इट इज प्योरली वॉलंटरी। आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक्रेडिटेशन के लिए, आपको प्री क्वालिफायर भरना पड़ेगा, आपको एसआर भरनी पड़ेगी, उसके बाद टीम आएगी। तो इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, दिस इज नॉट इवन रेगुलेटरी प्रोसेस। वो आपके जैसे एआईसीटी का रेगुलेशन होता है ना, वैसा नहीं, वो आगे सब चीज चेक नहीं करेंगे इस तरीके की, क्लासरूम का साइज ये सब। तो रेगुलेटरी बॉडी फॉर टेक्निकल एजुकेशन इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एनबीए इज ओनली फॉर क्वालिटी assurance, that is accreditation. थर्ड, इट इज नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ डिग्री और डिप्लोमा। एक्रेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हम डिग्री या डिप्लोमा हटा रहे हैं, डिग्री एंड डिप्लोमा विल कंटिन्यू। ओनली थिंग इन दोस सर्टिफिकेट, इन डिग्रीज एंड डिप्लोमा, अगर कोई प्रोग्राम एक्रेडिटेड है तो मेंशन किया जाएगा उसके उसमें एक्रेडिटेड बाय एनबीए। क्योंकि स्पेशली जो टियर 1 कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देन दैट डिग्री बिकम्स एक्सेप्टेबल टू ऑल वॉशिंगटन अकॉर्ड सिग्नेटरी कंट्रीज। ठीक है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक्रेडिटेशन इज नॉट एन ऑडिट। एकेडमिक ऑडिट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एक्रेडिटेशन। ये मत सोचिए कि एकेडमिक ऑडिट हो रहा है, ये हमारी एक्रेडिटेशन 9 क्राइटेरिया पे हो रहा है which are different. Academic audit is a very small part of it. Okay, next. Yeah. So, in general, accreditation provides quality assurance that the academic aims and objectives of the institution are honestly pursued and effectively achieved. यहाँ पे एक बहुत important चीज है honestly pursued. बहुत सारे लोग टारगेट सेट करते हैं कोर्स आउटकम का, प्रोग्राम आउटकम का, उनको लगता है अगर हम नहीं मीट कर रहे हैं तो हमें एक्रेडिटेशन नहीं मिलेगा। ये एक भ्रांति है, ऐसा नहीं है। वो ये देखते हैं कि वेदर योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर ऑनेस्टली परस्यूड, आपने एफर्ट की नहीं की है, एंड इफेक्टिवली अचीव्ड बाय द रिसोर्सेज अवेलेबल, एंड द इंस्टीट्यूशन हैज डेमोन्स्ट्रेटेड कैपेबिलिटीज ऑफ इंश्योरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स ओवर द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एक्रेडिटेशन। वो ये भी देखता है, क्योंकि एक्रेडिटेशन आपको बैकडेट से नहीं मिलता, ये मिलता है नेक्स्ट 3 years के लिए, नेक्स्ट 6 years के लिए। तो अगर 6 years के मिल रहा है तो ये एक चीज देख लेते हैं कि 6 साल तक आपकी क्वालिटी ठीक रहेगी कि नहीं। आपको एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, पर 6 साल का उसी समय मिलेगा जब आपके
क्वालिटी इस तरीके की होगी 6 साल तक आप क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे, तो यू आर बेसिकली यू आर डूइंग वंडरफुली वेल। 3 साल का देंगे उसका मतलब यू आर नॉट डूइंग दैट वेल, बट एनीवे 3 years इज गिवन, 3 years लेटर विल कम बैक अगेन टू चेक। ऐसा तो नहीं आपके स्टैंडर्ड्स लोअर हो गए। ओके, 2 मिनट के लिए हम लोग सेशन को रोकेंगे सर, फेलिसिटेशन के लिए। हाँ ठीक है। Facilitations. 2 मिनट के फैसिलिटेशन के लोग यहाँ पर मेरा फैसिलिटेशन जरूरत नहीं, लेकिन Good evening, everyone. We are stopping for 2 minutes for felicitation program, and then we'll continue the session. I would like to request Secretary SBT Dr. Chandrasekhar Singh to please felicitate Dr. Aicte Dikshit sir, Professor Management, Department of Management Education, NITTR Bhopal. Please give the round of applause for the felicitation. नीचे उतर Yes. Now I would like to request Dr. Lalita Singh, Registrar SBT, to felicitate Anju Rauli ma'am, Professor and Head DCDA NITTR Bhopal. Please give a round of applause. Thank you. Now we'll continue the session. Thank you, everyone. so there are various benefits of accreditation. Almost everybody who is associated with college gets benefited from it. Institution gets benefited because they can declare our programs. बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा हमारा इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेड डिप्लोमा या NIRF का भी लेते हैं, अगर इसका है तो NIRF किसी कॉलेज की रैंकिंग है तो बड़े प्रोमिनेंटली मेंशन करते हैं, बिकॉज एनी रिकॉग्निशन बाय एक्सटर्नल एजेंसी if it is there then they mention it, then students get benefited. They will go and take admission in those colleges and programs which are accredited, because employers भी उनको देंगे, employers भी वहाँ पे ज़्यादा आएंगे, वो उनका placement अच्छा होगा, salary packages अच्छे होंगे, so students also get benefited. Employers भी चाहते हैं कि उन colleges में जाएं जो कि जहाँ पे accredited programs हों. जब ये NBA accreditation नहीं था तब क्या करते थे employers? हाँ, एक तो ये था एलुमनाई से पता करते थे. बहुत से इंस्टीट्यूशन ने, आपने सुना होगा इन्फोसिस, TCS, इनने अपनी खुद की एक्रेडिटेशन प्रोसेस बनाई थी, एंड दे यूज्ड टू गो टू ओनली दोज इंस्टीट्यूशन व्हिच फुलफिल्स दोज एक्रेडिटेशन क्राइटेरिया. अब क्योंकि NBA accreditation is widely recognized, so they do not have to do the same thing. Otherwise, every employer will create his own process. So now they also get benefit. Then public at large, because now what is accreditation? In 2 words, quality improvement and assurance. Simple quality improvement and assurance.
So public will get benefited by it because we are getting better quality of engineers or diploma holders from our accredited programs. So almost everybody gets benefited by this external verification of quality by NBA. Next. Next. There are basically 4 purposes. This slide I'll not go through. You can read it. Next. Now we come to the other terms which are related with accreditation. Okay. I have not discussed purposes of accreditation. This PowerPoint will be uploaded. You can go through that. Otherwise, we'll be just wasting lots of time. And Professor Pradhan will also have to take one lecture. And he will not get enough time for that. So accreditation starts with topmost process. That is vision and mission of the institute. पूरी आउटकम बेस्ड एजुकेशन में हम डिजाइन जब भी करते हैं सिस्टम की तो टॉप डाउन करते हैं एंड व्हेन वी इम्प्लीमेंट इट बॉटम अप. तो सबसे पहले हम विजन एंड मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूट बनाते हैं. बेस्ड ऑन दैट विजन एंड मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, विजन एंड मिशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट इज, let's say one polytechnic has 3 departments, civil, mechanical and electrical. This is just a fictitious example. So all those 3 departments will have vision and mission separately, and this vision and mission will be in tune with the institutional vision and mission. Then every program will have a department may be running 2 programs, 3 programs, many programs it may be running. Every program will have its own program educational objectives. Okay. Let's say civil engineering is running diploma in civil engineering and diploma in construction technology and management or construction management, or maybe post diploma in something. So both the program will have separate program education objectives. Then from those, to achieve those program education objectives, we will have program outcomes and program specific outcomes. All these terms we will discuss in detail slightly later. And to achieve these program outcomes and program specific outcomes, you will have a number of courses. These courses could be theory courses, these courses could be laboratory courses, these could be project, it could be industrial training, it could be seminar, any type of courses will be there which are required to achieve the program outcomes and program specific outcomes. And each of these courses will have its own course outcomes. NBA prescribes normally 3 to 6 program course outcomes should be there for each course. So this is the design part. So when you design, you will design from vision mission, then departmental vision mission, PEOs, then program outcome and program specific outcomes, then course outcome for all courses. Not only the identified courses, all courses. Because in NBSCR, you have to identify 6 courses and upload that. But when the visit comes, expert will come there, they will ask for all programs, all courses. And when we do the implementation of outcome-based education, we implement course outcome and courses. And once the course outcomes are attained, program outcomes attainment is calculated. Then we believe these program outcome and program specific outcomes will lead to achievement of program educational objectives. And the program education objectives of all the programs running by the department is achieved, then the departmental vision and mission will be achieved. When the departmental vision and mission of all department is achieved, you will have achievement of vision and mission of the institute. So this is the basic philosophical model of outcome-based education in the context of accreditation. Next. Back. Now we come to the first concept. That is the vision. What is vision? विजन का मतलब क्या समझते हैं विजन से? हाँ नहीं, वो नहीं होगा विजन. सर विजन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक विजन ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, डिपार्टमेंट का हो सकता है, इवन इंडिविजुअल का विजन भी हो सकता है. तो व्हाट इज विजन बेसिकली? या लॉन्ग टर्म टारगेट, maybe 10-20 years later, what do we want to become? Where do we want to see ourselves? What is our dream? Where do we want to go? 20 साल बाद हम क्या बनना चाहते हैं? हम भी चाहते हैं जैसे आज हम ग्रेजुएट होकर निकले तो 20 साल बाद मैं एमडी बनना चाहता हूँ,
या हो सकता है I want to become an entrepreneur like Adani, Ambani or somebody like that. That could be my personal vision. But institutes will have different vision. Companies will have different vision. So vision is something next. Next. Vision is something what you are going to achieve in a longer term. And long term is not 2 years, 3 years, 4 years. It is minimum of 8, 10 years. Normally it is defined for 10 to 20 years. Normally you do not change your vision every 5 years. It's a long-term thing, what you want to become. Like Google has decided its vision long back when it was a small company. It has not changed its vision even now. And I'll just show you some examples of private companies, how they define their vision. So vision 10 to 20 years later, what your institution will become. Maybe today, your institution may be in a rented place, but 20 years later, you would like to have a sprawling infrastructure, very good quality faculty, your alumni placed in all top companies. That could be your vision. So vision is something what you want to become in a long period of time, maybe 10 to 20 years. And it is developed using all stakeholders. Next. Now, purpose of vision statement is, it tells you where you are right now, where you are going, and where you will reach if you achieve your vision. Okay. Second thing, it motivates all people. It keeps you focused. The target होता है ना, it keeps you focused. क्योंकि हमें ये बनना है. Third is, it attracts the commitment and energizes people. Once we have developed our vision, all stakeholders will be committed towards it. Faculty will be committed towards it, staff will be committed towards it, management will be committed towards it, even directorate or whatever, all the stakeholders, alumni will be committed towards it. Yes, we want to take our institution in this particular direction. That is why a motivating vision is very much important. You must have seen very large number of donations in good colleges. अभी 2-3 दिन पहले ही टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था एक कॉलेज का, उसका कुछ हार्वर्ड से भी ज्यादा $1 ट्रिलियन में उनका, क्योंकि उनकी जो अलुमनाई है आई थिंक टेक्सास की कोई कंपनी है, टेक्सास यूनिवर्सिटी के, बिकॉज उनकी जो अलुमनाई दे आल्सो आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दिस विजन. सो इवन IIT बॉम्बे every year they get lots of money. I think 2 weeks back, the whole department of economics was created by one single individual. जो 93 का पास आउट है, उसने 10 करोड़ दिए इसके लिए, because they want to take their institute in that direction. We'll discuss the vision of IIT Bombay. Then it establishes a standard of excellence. कोई भी ऐसा विजन नहीं बनाता है कि कोई बेकार बनना है. हर कोई ये चाहता है कि मैं बिल्कुल राजा बनूंगा. We'll be the best. We'll be the leading institute. We'll be the one of the best in this region, or maybe one of the best in the country, or some of them may have one of the best in the world. So it basically sets a standard of excellence. This is where we want to reach. Nobody says we are here and our vision is to go down. Nobody does that. It always sets a standard of excellence. Next. करते जाइए 2, 4, 5. Initially, when we set our vision, it looks it's unreachable. जब गूगल ने जो विजन बनाया था, मैं आपको दिखाऊंगा वर्ड की फाइल में, तब लगेगा ये तो क्या है. या फेसबुक ने जो विजन बनाया था, I have around 15-16 companies vision also. In this PowerPoint, I have taken only education institutions vision, but that will show you the clarity they have made. Almost the things they wanted was unreachable, but because they had set that vision, it became reachable. पर अगर आप अपना टारगेट ही ऊपर नहीं रखेंगे तो आप नहीं करेंगे, नहीं पहुंचेंगे. अगर अपना टारगेट IIT रखेंगे तो हो सकता है आपको NIT मिल जाएगा, क्योंकि आप बहुत मेहनत करेंगे IIT के लिए. ये भी हो सकता है आपको IIT मिल जाए, तो IIT नहीं मिलेगा तो कम से कम NIT तो मिलेगा. तो इफ यू कीप योर टारगेट्स हाई, यू आर लाइकली टू रीच. जितना आप ऊंचा टारगेट रखेंगे उतना ऊपर आपका तीर जाएगा. विजन प्रोवाइड्स अ कॉमन लैंग्वेज एंड मेक्स अवेलेबल योर शेयर गोल. एक और चीज है कि विजन जब बनाते हैं तो उसको हम ताला चाबी में नहीं रख देते. इट इज वेल डिसेमिनेटेड. हर जगह आपके इंस्टीट्यूट में हर जगह विजन रहेगा, आपके वेबसाइट में रहेगा, आपके सारे स्टेक होल्डर्स के पास रहेगा, अलुमनाई के पास जाएगा, एम्प्लॉयर के पास जाएगा, आपके करिकुलम डॉक्यूमेंट्स में रहेगा विजन. आप जो फाइल्स एंड फोल्डर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर जगह कोई भी पैम्फलेट रहेगा उसमें विजन आपका रहेगा. इसलिए विजन शुड बी सिंपल.
so that it can come in everywhere. And this provides shared goal to all stakeholders because ये vision सबके पास है, स्टूडेंट को हर जगह मिल रहा है, करिकुलम में मिल रहा है, फाइल्स में मिल रहा है, लेबोरेटरी मैनुअल में मिल रहा है, तो दे विजन को आत्मसात कर लेते हैं. It gets imbibed in the personality of all stakeholders. It leads to creative and empowering organization. It is a shared future map of an organization. Obviously, whenever we decide some target, obviously we will be deciding some strategies also. वहां पहुंचेंगे कैसे? जैसे आपने अगर डिसाइड किया दिल्ली जाना है, कुछ तो सोचेंगे आप, एयर से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, तो यू विल मेक सम रोड मैप फॉर दैट. Somebody may make this okay, I'll walk through, but that will also be a road map. And somebody may go by bike also, but that road map will be clearly mentioned in your mission statement. Vision से ही mission statement आते हैं. Next करो. 9, 10, 11. So once you have developed your vision and mission, it develops trust, collaboration within the institutional members by encouraging and basically क्या हो जाता है जब आप विजन एंड मिशन बना लेते हैं अपना, तो हर डिसीजन आपका विजन एंड मिशन से ही फ्लो होता है. एक्चुअली इसमें हमने वो सारी चीज इंक्लूड नहीं की है. विजन मिशन से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स बनाते हैं. उन गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं. हर अच्छे इंस्टीट्यूशन का स्ट्रेटेजिक प्लान आपको उसकी वेबसाइट में मिल जाएगा, विच इज डेराइव फ्रॉम देयर विजन एंड मिशन. नेक्स्ट, अब मैं एक इंस्टीट्यूशन का दिखा देता हूं आपको, आईआईटी बॉम्बे का विजन स्टेटमेंट. टू बी ए लीडिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी that provides a transformative education to create leaders, innovators, and generate new knowledge for society and industry. This is their vision. Because IIT Bombay is in that level where it can think about globally. And let's say a polytechnic is there. You should not make it vision like this one, a global. अब एक विजन बना दीजिए कि हम रीजनल लेवल पे होंगे. जब रीजनल लेवल पे यू आर द बेस्ट पॉलिटेक्निक, मेक इट एट नेशनल लेवल. Every 10 years you can change your vision, and then once you become a national top level polytechnic, you can think about becoming global. फ्रांस में एक पॉलिटेक्निक है जो वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आता है. तो ये हमें सोचना नहीं चाहिए कभी कि जस्ट बिकॉज वी आर ए पॉलिटेक्निक विल नेवर बिकम बिग. बहुत से पॉलिटेक्निक बाद में इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन जाते हैं, यूनिवर्सिटी बन जाते हैं. इस पॉलिटेक्निक की बात कर रहा हूँ फ्रांस की, तो पॉलिटेक्निक से शुरू हुआ था, एंड दैट इट बिकेम वर्ल्ड की टॉप 10 रैंकिंग्स में आता है. आईआईटीज भी रैंक नहीं आते उस रैंकिंग में. वैसे आईआईटी रुड़की जो है बहुत पहले कभी पॉलिटेक्निक ही था, ओवरसीयर कॉलेज था, आज आईआईटी रुड़की. तो इट्स नॉट, इफ यू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर एंड बेटर, ऑब्वियसली देयर विल बी funding will be there, people will be motivated. So once you make your vision, become committed towards it, then sky is the limit. Next. Now we come to mission statement. What is mission statement? What do you think about mission statement? बहुत से लोग विजन और मिशन में बहुत हम ड्रीम बन करेंगे, फिर आंख बंद करके सो जाएंगे, then that vision is a dream only. That vision is not a vision. Vision is basically a management tool in which you make your vision, you make your mission, you make your objectives, goals, work objectives, and specific plan. The complete management process to achieve your. हम यहाँ पे सिर्फ विजन और मिशन की बात कर रहे हैं, तो these two terms are going to be used in MBA. Next. MBA states that mission statement are broad approach to achieve aspiration stated in the vision statement. So ये MBA की definition है कि mission basically are broad approaches, broad pathways to achieve your next.
Now we look at IIT Bombay research. अपने विजन देखिए था कि global technology university बनना चाहते हैं, which will create leaders, innovators, and they will contribute in big ways in research, creating new knowledge. उसके लिए क्या कर रहे हैं? How can you create leaders? How can you create new knowledge? How can you create innovators? So, to create an ambience in which new ideas, research, and scholarship flourish, and from which leaders and innovators of tomorrow. जो चीज लिखा था अपने विजन में, leaders and innovators बनाएंगे, पढ़ा था? क्लियरली मिशन बता रहा है कि अगर लीडर्स एंड इंडिविजुअल्स बनाना है तो पहले हमें क्रिएट एन एम्बियंस जहाँ पे नए आइडिया जनरेट जब फ्रस्ट्रेटिंग एटमॉस्फेयर होगा वहाँ पे नए आइडिया जनरेट किए होंगे, नए आइडिया जनरेट किए होंगे तो आपकी इनोवेटर्स नहीं बनेंगे, लीडर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे, सिर्फ 4 मिशन स्टेटमेंट those 4 clearly indicate the broad pathways how they will achieve the next to address problems faced by the nation and the world through a talent in nurture and research we do. अगर आपने लास्ट वाला पार्ट देखा होगा विजन स्टेटमेंट आईआईटी का, to solve problems of society, world, nation and world. उसके लिए सेकंड विजन स्टेटमेंट. They will address problems faced by the institution, by the nation and the world. Talent, जो उनकी talent है, वो हर जगह top organizations. They are solving the problems of not only India, they are solving problems of world. Nandan Nilekani is product of IIT Bombay. There are so many products of IIT Bombay are there, which are heading and solving problems in different ways. और सिर्फ इंजीनियरिंग में नहीं, some of them are great NGOs. They are running great NGOs, providing technological solutions to rural areas. Next. To provide an education that transforms students to rigorous coursework. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिगरस कोर्सवर्क. इसीलिए लगा कि वहां पर ड्रॉप आउट रेट 50%. क्योंकि everybody cannot go through that kind of rigorous coursework. And by providing an understanding of the needs of society and so they interact a lot more with the industry and society. इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, बहुत सारे रिसर्च के प्रॉब्लम्स लेके आते हैं. इसलिए अगर आप उनका देखेंगे प्रोजेक्ट, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट, स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, देयर आर ह्यूज नंबर्स. That's why they are always in 1 to 3 in NITTR. So they are getting huge funding, and that funding is solve the problems of society and industry. And fourth is to collaborate with other academic and research institutes around the world to strengthen the education and research ecosystem. तो ये उनका MOU पार्ट है, जिससे बहुत सारे वर्ल्ड की लीडिंग यूनिवर्सिटी के MOUs हैं, जहाँ वो फैकल्टी एक्सचेंज करते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज करते हैं, रिसर्च एक्सचेंज करते हैं, बहुत सारी चीज एक्सचेंज करते हैं. तो these 4 are the broad pathways. और इसमें से आप लिखेंगे जो भी उन्होंने कहा है विजन में, इन चारों से पूरी तरह से अचीव है. जब हम अपना विजन विषय बनाते हैं तो हम ऐसा नहीं बनाते, हम कहीं से कॉपी कर लेते हैं विजन, तो फिर कुछ विजन में लिख लेते हैं स्टेटमेंट, and then there is hardly any match between vision and mission. Next, मैंने आज ही वेबसाइट में सर्च कर रहा था. I will not make any comment. I'll just show you. Maybe they may not be correct because this is internet. Internet will not believe all the time. So I found GP Patna, the vision. I think Gujarat is Patna. This is the vision of good. Aims to be a premier technical institution to pursuit of excellence in teaching, research and innovation for inclusive and sustainable development of the nation and the region in particular by nurturing and developing competent technical. I'll not make any comment because we are not here to discuss vision and vision. Only we are talking about it. We should have a simple vision. I'll show you some more vision statement of company. Next. Vision statement to encourage the faculty for enhancing their capabilities, to inculcate the spirit of entrepreneurship and innovation, to achieve excellence in emerging technologies, to continuously strive for professional ethics and social values. ठीक है. Next, एक और किसी पॉलिटिकल में दिया जहानाबाद. We will develop self-reliant, versatile, lead-driven, and positive motivated scholars and transform them with engineers, multidimensional technical abilities. ये engineering college है, polytechnic.
क्योंकि जिस तरीके की लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, वो स्कॉलर्स हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मे बी दे हैव अ vision to become engineering college. That's right. There's nothing wrong in the vision. What is, we have pathways to achieve that. I've told you that one of the top leading universities in the world, top like France के पॉलिटिकल करके नाम मुझे उसका, मैंने उस काफी रिसर्च में पढ़ा था कि जियोग्राफिकल बेसिकली काम करता है। मैंने पीएचडी की थी तब काफी उसके पेपर्स देखे थे। आज देखता हूँ that polytechnic has become one of the top 10 universities. It is not impossible. रुड़की भी अक्सर पॉलिटेक्निक का आ जाएगी। ये उनके विशेष स्टेटमेंट्स हैं। So what I have said, we have to look at that vision and mission and pathway should address each and every part. I show you some vision and mission statements of private companies. What if I 150 volt है? बंद करिए ना, फिर से एक चालू करिए। गूगल का विजन स्टेटमेंट था, वो बहुत छोटा, just small. But just look at just one line: to provide access to world information and one. एक सिंगल क्लिक में वर्ल्ड की सारी इंफॉर्मेशन। हाउ डू दे विल प्रोवाइड दैट? पांचवें विजन में पांचवें to organize the world information and make it universally accessible and useful. तो जब पूरी ऑर्गेनाइज करेंगे, सारा डेटाबेस इकट्ठा करेंगे, सारी जो वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन है, दैट्स व्हाई आजकल हम गूगल गुरु बोलते हैं। कुछ भी चीज ढूंढना होती है तो गूगल पर जाते, क्योंकि ये स्टेट, ये इनका जो विजन स्टेटमेंट था आज नहीं, आज तो ट्रू है। दैट आई विल शो डिवाइस करता हूं, दे आर अचीव्ड इट। और अभी 2022 में इसी पर नहीं है। नेक्स्ट, in one click is in one clicker or one thing. Microsecond or maybe. But just by thinking. Maybe they can realize it also. They don't think by digital product, they are part of it. Walt Disney, a company here, to be one of the world's leading producers and providers of entertainment. They want to, because they have so many fixes. अब वो produce कैसे करेंगे सारी चीज, next step. ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपना विजन प्राप्त किया and how they have developed their pathways for it. है ना, एक क्लिक में इंफॉर्मेशन तभी जब इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज फॉर्म में, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में, डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में तो एक क्लिक में मल्टीपल क्लिक में इंफॉर्मेशन दिखते हैं। जैसे हमें यहाँ पे तो इंफॉर्मेशन मांगते हैं, मेरे पास नहीं, उनके पास है, उनके पास नहीं है, उनके पास है, क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है इंफॉर्मेशन। हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में हमेशा ही होता है। मेरे डिपार्टमेंट का काम है, अगर आप देखेंगे, अगर करीब 10 पीरियड दूर भी अगर पाने की कुछ हुआ, उससे बड़ा सा भी कुछ हुआ, वो नहीं देगा, वो मेरा जुडिक्शन है, दूसरे की जुडिक्शन। तो डिसऑर्गेनाइज है, यहाँ पे फुल्ली ऑर्गेनाइज है। कोई भी वो ये नहीं बोलते कि गूगल हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, वो सब जगह का मैप भी देते हैं, हर जगह का मैप। तो मिशन जो बोलता था कि हाउ इट विल बिकम बिगेस्ट प्रोड्यूसर by producing entertaining, inform and inspire people around the globe to the power of unparalleled storytelling, reflecting the iconic brand, creative minds, innovative technologies that make ours the world premier entertainment. ये उन्हें पता है कि हम will become the best storyteller, and जो storyteller होगा उसका सबसे बड़ा मार्केट हो जाएगा। दो चार में दिखा देता हूँ, कितने छोटे छोटे से विजन रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस का विजन है to help people and business throughout the world realize their full potential. उन्होंने उनके जो भी प्रोडक्ट देखेंगे सारे इसके सिंक में होंगे, वर्ड होगा, एक्सेल होगा, एक्सेस होगा, जो भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स होंगे, they will be basically businesses and people को to realize their potential. एक और दिखा था अमेज़न का, अमेज़न इज द लार्जेस्ट ई-कॉमर्स कंपनी। ये विजन उनका उस समय था जब वो नहीं थे, अब तो आई थिंक ये विजन भी कुछ हो चुका है। Vision is to be Earth's most consumer-centric company, where customer can find and discover anything they might want to buy online. उनका शुरुआत कहते हैं कि शुरुआत तो बुक्स से की थी उन्होंने, लेकिन कभी उनका विजन में सब सारी चीज जो भी चीज वर्ल्ड में होगी ऑनलाइन खरीदनी तो हमारी साइट पे। ऐसे बहुत सारे हैं, आई एम अपलोडिंग दिस वर्ड फाइल आल्सो। ठीक, उसमें से देखेंगे कि क्लैरिटी ऑफ विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके विजन भी डालनी है मैंने। Once you have defined your vision clearly, how are you going to achieve? Otherwise, vision will remain dream only,
It will be a fantasy only. जब तक आप पाथवेज नहीं बनाएंगे, उसके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनाएंगे, जब तक स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं बनाएंगे, the process of achieving vision will not be done. Okay. Next. There are three important roles of vision administration. They communicate the purpose of the organization to all stakeholders. Vision administration जैसे मैंने बोला ताला चाबुक से नहीं रहेगी. There will be very widely distributed to all stakeholders. आपके जो पॉलिटेक्निक में होगा, जहाँ भी कॉलेज में होगा, गेट से लेके हर जगह, वेबसाइट पे हर जगह डिस्प्ले. तो बेसिकली हर किसी को मालूम होना चाहिए हमारा ड्रीम क्या है, हम कैसे पहुंचना चाहते हैं. दूसरा, इन्फॉर्म स्ट्रेटजी डेवलप. तो मैंने बोला इसके आगे किस तरह से goals, objectives, and strategic plan. And third is develop the measurable goals and the same. These are the three basic purposes of vision and mission. Next. Next. जैसा मैंने कहा कि once you have decided about vision and mission of the institute, we have to develop vision and mission of the department also, which should be included institute vision. Okay. Next. अब आपको किसी को कोई क्वेश्चन है regarding vision and mission? Are you clear? अब ये क्वेश्चन पूछते हैं, they have any question? Otherwise we will ask. आपको तो विजन मिशन में कोई डाउट हो, क्लैरिटी नहीं हो, मैंने काफी सारे कैंपस हर जगह से लीडिंग इंस्टीट्यूशन लगाए पे आपके पॉलिटेक्निक के दिखाए, लीडिंग कंपनी जब लीडिंग नहीं थी तब क्या विजन बनाया था, तो मैंने तो उस विजन से ऑलरेडी खुद पे, और जब गूगल छोटी कंपनी तो उसको समझने लगी दैट वाज देयर प्लान. यस, पीपल आर लाइक हमें जब बुक्स सेल करती है तब वो सोच रहे थे कि हम बुक्स नहीं, एवरीथिंग वी विल बी सेलिंग एवरीथिंग, ग्रोसरीज से सब कुछ, फैशन एवरीथिंग, जो मिलना है वो मिलेगा. भाई अभी कोई बताएगा मिशन क्या है? मिशन और बताएंगे. ये विजन एक मिशन, विजन मिशन Okay. Now okay, we can bring. We have no questions. नहीं है तो we will bring for this. Now computer. So 10 minutes. Okay, but before that, what is the difference between NBA accreditation and NEC accreditation? Just check quickly. That is for institute. 240. Please. Within 10 minutes. Within 10 minutes, come back. जल्दी जाइए, जल्दी. नहीं अब तो खत्म ना. सर ये पीपीटी ऑफ कर, पीपीटी बंद. क्या गया ना? अच्छा कंटिन्यू. नहीं ये पीपीटी कह रहा था, कंटिन्यू रख ले. पीपीटी चलेगा और नहीं चलेगा. नहीं ठीक है, रहने पॉज कर, पॉज कर, पॉज कर, इसको भी पॉज कर. समझ रहा है सर. आज आप लोग क्लास लग रहा है, हम लोग को देखने बड़ा खुशी हो रहा है. आप लोग का क्लास लग रहा है, हम लोग एकदम देख रहे हैं. हम लोग कहाँ क्लास लग रहा है? लगेगा कभी बात. जैसे अब यहाँ से निकलेंगे ना सर, तो आप लोग को बैठी हम सबको बात
जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट केस फैकल्टी, उनको जितना भी क्लास है वो रियल टाइम पे उसी दिन बंद हो जाता है, वो रियल टाइम पे उस पर रिपोर्टिंग करना शुरू करते हैं और उसको मैंडेटरी कराएं। अभी थोड़ा सा उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम सिद्दीकी साहब देखते हैं, ये सिद्दीकी हैं जो EY के कंसल्टेंट है और उसी काम पे अभी लगे हैं। जो हमारा सामर्थ्य पोर्टल से रिपोर्टिंग आएगा, उसके बाद स्टूडेंट्स को हम लोग उसमें मैप करेंगे सब्जेक्ट वाइज और बाद में उस पर 360 से भी उसको दिखा जाएगा। डिफरेंट मिशन, बट अभी तत्काल में इस सेशन में जो आगे आने वाला एग्जाम है, जो आपका नवंबर में हो रहा है एग्जाम, उस नवंबर में इस सामर्थ्य पोर्टल से ही उस आदमी को उसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन सेटिंग, इवेल्युएशन और आगे का फिर जो भी प्रक्रिया है उस करियर एडवांसमेंट में और बाकी ब्ला ब्ला, उसमें उसको टैग किया जाएगा। सामर्थ्य पोर्टल में अभी ऐसा है कि जो सब्जेक्ट शुरू में जो फॉर्म भरने आया हो, टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम है उसको सिद्दीकी साहब के यहाँ नोट कराइए। आप हर इंस्टीट्यूशन से एक नोडल ऑफिसर उसमें नियुक्त है, आप अपने नोडल ऑफिसर को भेजिए और नोडल ऑफिसर सामर्थ्य पोर्टल के प्रॉब्लम को सिद्दीकी साहब से रिजॉल्व कराएगा। इनका प्रॉब्लम ले लीजिए, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। और टेक्निकल यूजर आईडी पासवर्ड है, कितने आदमी उसमें अभी रिपोर्ट कर रहे हैं? वेरी गुड, बट वो क्लास रिपोर्ट तो नहीं आ रहा है पूरा, नहीं केवल 300 आ रहा है। यही हम कह रहे हैं कि अपने अपने इंस्टीट्यूट के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको मेल लिखने बोलिए, और मेल में फिर वो जो JDT वाला मेल है उस पे भी आप उसको CC करके दे दीजिए, हम लोग भी देखेंगे कितना रिजॉल्व हो जाता है। अगर कोई दिक्कत हो कोई और आदमी को लगा देंगे साथ में, लेकिन वो बहुत विलम्ब हो रहा है। ठीक है, तो सिद्दीकी साहब आपको बताएंगे उसमें अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है ना, ही विल बी हियर ओनली, और कल से सामर्थ्य पोर्टल यहीं बैठ के वो करेंगे। आप लोगों को अगर भरने में या इंस्टीट्यूशन से कोई दिक्कत हो रही तो आप अपना क्वेश्चन लेके इनसे रिजॉल्व करा सकते हैं। ही विल बी हियर ओनली, आपके पास जा रहे हैं, जाके आपसे बात कर लेंगे। सॉरी सर। Okay, welcome back to the session on special terms related with NBA accreditation. तो आज हमने अभी पिछले सेशन में ये देखा था कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन के टॉप मोस्ट में था विजन एंड मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, उसके था विजन एंड मिशन ऑफ द डिपार्टमेंट। तीसरे लेवल पे क्या था? PEOs, प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। तो प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आपके हिसाब से? जैसे आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या रन करते हैं? सिविल। आप डिप्लोमा सिविल कर रहे हैं, सब डिप्लोमा सिविल क्यों कर रहे हैं? आपका इंस्टीट्यूट डिप्लोमा सिविल क्यों रन कर रहा है? वाई इज इट रनिंग डिप्लोमा सिविल? क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? सिविल रिलेटेड जो भी जॉब वर्क है फील्ड में, उसको अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। कौन करेगा? जो डिप्लोमा पास आउट है वो वहां जाके एग्जीक्यूशन का वर्क अच्छे से कर सकते हैं। वेरी गुड। तो बेसिकली क्या है, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर द रैशनल ऑफ दैट प्रोग्राम, व्हाई द इंस्टीट्यूट इज रनिंग दैट प्रोग्राम। अदरवाइज हम बोलेंगे कि गुड सिटीजन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो BA भी कर रहा है, वो BE भी कर रहा है, LLB वाला कर रहा है, सब कर रहे हैं। तो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स सिविल वाले की है कि वो सिविल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करेगा, इलेक्ट्रिकल वाले की इलेक्ट्रिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करेगा। तो NBA का जो जनरल मैनुअल है that defines program education objectives as PEOs are broad statement that describe the career and professional accomplishment. ये बहुत important है, career and professional accomplishment that the program is preparing the graduates to achieve. जनरल सिटीजन की बात नहीं कर रहे, गुड सिटीजन, लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं, जो कैरियर के सिविल में वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है आपका ग्रेजुएट?
जैसे आपके यहाँ से कोई ने पास आउट किया डिप्लोमा सिविल, क्या क्या कर सकता है? किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर सकता है, पीडब्ल्यूडी में काम कर सकता है, बहुत सारे इस तरीके के काम कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट का हो गया ये। और क्या कर सकता है? अपना कोई कंपनी सेटअप कर सकता है, कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता है, कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। और क्या कर सकता है? He can go for a higher education. These are some of the opportunities he can use. So ये तीनों के तीनों क्या है? Career and professional accomplishment. या तो जॉब कर रहा है सिविल रिलेटेड फील्ड्स में, या फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप में कर रहा है, या फिर हायर एजुकेशन कर रहा है. These are some of the options. तो ये प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स आर स्टेटमेंट्स ऑफ दोस. नेक्स्ट करें. अच्छा ठीक. ओ back, sorry. So POs of a diploma program are the statement that describe the expected achievement of graduates in their career and when in 3 to 5 years after passing out. Immediately हो सकता नहीं कर रहा हो, but within 3 to 5 years he will be doing those 3 6 you are saying. You are saying या तो जॉब कर रहा होगा सिविल रिलेटेड एरियाज में, या एंटरप्रेन्योरशिप में होगा, या हायर एजुकेशन कर रहा होगा. तो दीज आर द थिंग्स व्हिच ही विल बी डूइंग आफ्टर पासिंग आउट इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स, दैट इज 3 to 5 years लेटर. तो पीओस जो है कभी इंस्टीट्यूट के अंदर अचीव हो सकते हैं, दे कैन नेवर बी अचीव बिकॉज दे आर, वो तो चला गया है बाहर, he has passed out from the institution and we are talking about 3 to 5 years later what he is doing. सो पीओस कभी भी आपकी चार दीवारी के अंदर नहीं होते, कैंपस की चार दीवारी के बाहर ही अचीव होते, वो भी 3 से 5 साल के बाद. दैट इज द टाइम पीरियड एनबीए गिव्स. आर यू क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पीओस? ग्रेजुएट मीन्स जब मेट्रिकुलेट भी करता है आदमी उसको भी ग्रेजुएट कहते हैं. अभी ग्रेजुएशन सेरेमनीज होती है डीपीएस में और बहुत से स्कूल्स में. ग्रेजुएशन इज सर्टेन लेवल. अब हम इस ग्रेजुएट को बी वाले ग्रेजुएट से मत समझे कि जब बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, डीपीएस बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, ग्रेजुएशन सेरेमनी करते हैं 12th के बाद. दैट इज बेसिकली यू आर बेसिकली ग्रेजुएटिंग फ्रॉम सम लेवल. आपने वो उसमें भी देखा होगा ग्रेजुएटेड मार्क्स होते हैं. तो बेसिकली यू हैव क्रॉस सर्टेन लेवल, प्री डिफाइंड लेवल. और कोई क्वेश्चन डेफिनेशन में? यू आर क्लियर अबाउट पीईओस? नेक्स्ट कर नेक्स्ट, इसको पूरा निकाली दो. सो हाउ शुड यू डिफाइन पीईओस? ये चीज विजन मिशन के लिए भी एप्लीकेबल है, इसलिए मैंने नहीं बताया था. यू हैव टू इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स इन फ्रेमिंग द प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, जिसमें सभी का कमिटमेंट हो, उनके आइडियाज रहते हैं. हो सकता नहीं तो कुछ चीजें आप छोड़ दें पीईओस में. दूसरा, हाउ मेनी पीईओस शुड बी देयर? So NBA manual says you should have 3 to 5. I used to prefer only 2, but 3 तो हो ही सकते हैं. एक जॉब वाला हो सकता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला हो सकता है, एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाला हो सकता है, in which higher education will also come. आप लोग को इसको नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो है पावर पॉइंट पूरा का पूरा विदाउट एनी कटिंग विल बी अपलोडेड इन द वेबसाइट. नेक्स्ट, चेंज करना चाह रहा हूँ, लोग नोट कर रहे थे, नोट कर लो. अच्छा, क्योंकि क्या हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं चेंज करूंगा, फिर चेंज करने के लिए टाइम नहीं है. ठीक है, अच्छा आप लिख, जो आपको जो समझ आ रहा है लिखिए, क्योंकि हमेशा क्या है, लर्निंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है. जब आप नोट टेकिंग करते हैं, डायरेक्टली कॉपी करते हैं, तो कोई लर्निंग नहीं होती. When you actively engage yourself, you make a mind map of it, concept map of it, you make a chart, diagram, some relationship, कुछ एरो बनाया, कुछ चित्रकारी की, तो आपकी लर्निंग जरूर होगी. ठीक है, इसके अंदर काफी रिसर्च है टीचिंग लर्निंग में, और दोनों तरह की नोट टेकिंग, और थर्ड तरीके की नोट टेकिंग भी आजकल आ गई है. वो आ गई है फोटो खींचने की. उसमें 0% लर्निंग होती है, क्योंकि पर्सन नेवर रिफर्स टू दैट फोटोग्राफ नेक्स्ट अगेन. तो वाली नोट टेकिंग तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप कभी ओपन ही नहीं करेंगे उस फोटो को. तो तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, पीईओस आपके मिशन के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए. जो आपने पाथवेज बनाए, उन पाथवेज को एड्रेस करना चाहिए पीईओस. एक्चुअली एनबीए की जो एसएआर में पीईओस और मिशन की मैपिंग का भी एक
चार्ट बनाना है, आपको मैट्रिक्स बनाना है, इसलिए आपके पीओ शुड बी कंसिस्टेंट विद द मिशन ऑफ द डिपार्टमेंट। हर प्रोग्राम का एक अपना सेट ऑफ पीईओस होगा, 3 to 5 पीईओस होंगे हर प्रोग्राम के। एक डिपार्टमेंट में अगर 3 या 4 प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें बीई भी चल सकता होगा, एमई भी चल सकता होगा, मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल भी चल रहा है, ऑटोमोबाइल भी चल रहा है, एमटेक थर्मल में भी चल रहा है, एमटेक किसी डिजाइन मशीन डिजाइन में भी चल रहा है, किसी और में भी चल रहा है। तो ये 4 या 5 है, पांचों के अलग अलग प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सिमिलरली अगर पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा चल रहा है, पोस्ट डिप्लोमा चल रहा है, या 2 डिप्लोमा चल रहे हैं, रेफ्रिजरेशन का चल रहा है, इसका ऑटोमोबाइल का चल रहा है, मैकेनिकल, तो सबके अलग अलग पीईओस होंगे एंड पीओस विल बी स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो जो जॉब के अपॉर्चुनिटीज लिखेंगे उसमें आप रेफ्रिजरेशन वाली अलग होंगी और ऑटोमोबाइल वाली अलग होगी। नेक्स्ट, इसको पास करो, 2-3 लाइन निकाल दो। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट उसके बारे में, जैसे मैंने बोला कि हम स्टेक होल्डर कंसल्टेशन क्या कर रहे हैं, क्योंकि पीओ, विजन, मिशन, ये सारी चीजें हमारी स्टेक होल्डर के थ्रू आनी चाहिए। एनबीए में इसके लिए बहुत काफी सारे मार्क्स है कि वैसे कंसल्टेशन हैज बीन डन और नॉट, तो उनकी नीड्स से निकल के आने चाहिए प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकेंड थिंग इज प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीवेबल। हम ऐसा नहीं बना सकते कि जैसे हमारा प्रोग्राम है तो हमारे सारे ग्रेजुएट विल बी नोबेल प्राइज विनर्स, तो वो अनअचीवेबल है। तो वही सब होने चाहिए, या दे विल ऑल बी ऑक्यूपाइंग मल्टीनेशनल में 50 lakhs प्लस का पैकेज, तो दोज आर नॉट अचीवेबल। तो दे शुड ऑल बी अचीवेबल बाय द प्रोग्राम। ये हो सकता है कि वंस यू बिकम टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आ जाए तो पॉलिटेक्निक, तो ये भी हो सकता है 50 lakhs प्लस, कि एमआईटी की जगह पीईओस देखेंगे तो उसके इसी तरीके के पीईओस है। पीओ जैसा मैंने बोला स्पेसिफिक टू द प्रोग्राम होना चाहिए, ऑटोमोबाइल का डिफरेंट होगा, मैकेनिकल का डिफरेंट होगा, and they should not be too narrow and similar to POs. POs are only 2, 3, 4, 5. POs ज्यादा है, इंजीनियरिंग के लिए 12 है, इसके लिए 7 है, तो they should not too narrow. एबिलिटीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि POs एक अलग लेवल पे हैं, POs एक अलग लेवल पे हैं, टाइम लाइन में भी अलग है। POs ग्रेजुएशन के समय होते हैं और ये 3 to 5 years लेटर होते हैं, तो दोनों में काफी डिफरेंस होता है। So they will be much more broader compared to POs. Next, back. तो पहला चीज तो जहां पीओस बनाएंगे वो एरियाज और फील्ड इन विच ग्रेजुएट विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट। ये डिप्लोमा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डिप्लोमा के जो पास आउट्स होते हैं दे विल बी मोस्टली वर्किंग इन दोज क्लोज एरियाज। डिग्री कॉलेज के लिए उतना ट्रू नहीं होता है, बिकॉज a civil engineer may go to IS, he may go to marketing, he may go to finance, he may go to IT. तो अगर आप उनके अगर पीईओस देखेंगे अच्छी उनके, तो they will talk about careers in general because they can go anywhere. पर डिप्लोमा वाले बहुत ज्यादा उनके लिए मोबिलिटी नहीं रहती है कि वो IS में चले जाएंगे या मार्केटिंग में चले जाएंगे। अगर मेंटेनेंस में भी जाना है तो मैकेनिकल का वाला मैकेनिकल के मेंटेनेंस में जाएगा। Then statement of preparedness for higher studies, वो हमने डिस्कस कर ही लिया है। नेक्स्ट बेसिकली 5 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, उसमें से आप 2, 3, 4, 5 चूज कर लिए। एनबीए 3 to 5 कहता है, आई नॉर्मली प्रेफर 2 ओनली। तो ये 5 हैं। पहले तो प्रिपरेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड हायर स्टडीज, कि किन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट देगा, ही मे बी गोइंग फॉर हायर स्टडीज, वो बन सकता है। दूसरा कोर कॉम्पिटेंस के बारे में लिख सकते हैं उसके, कि जो हमारे ग्रेजुएट्स होंगे दे विल बी वर्किंग ऑन डिजाइन, ऑटोमेशन, व्हाटएवर, जो जिस फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन कराना चाह रहे हैं। थर्ड इज ब्रेड, कि कभी ना कभी वो आगे बढ़ेगा, मैनेजर बनेगा, तो दिस शुड हैव सम मैनेजर कैपेबिलिटीज आल्सो। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, थोड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब पीओज में आ रहे हैं आपके सारे। एथिक्स आएगा, ये सारी चीज आएंगी तो हमारा जैसे जैसे लेवल हायर होते जाएगा, जैसे वोकेशनल लेंगे ITI तो मोर डेप्थ में रहेगा, डिप्लोमा वाला डेप्थ एंड ब्रेड्थ उसकी बराबर की हो जाएगी। ग्रेजुएट में आएगा तो इट विल बी मच मोर इनटू विड्थ कंपेयर टू डेप्थ। डेप्थ में भी रहेगा तो उसके बहुत सारे काम उसके मैनेजरियल लेवल करेंगे, जहाँ इंडिविजुअल लीडरशिप, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑल दोस थिंग्स ही विल बी वर्किंग विद इन 3 to 5 years. Fourth, it could be about professionalism.
हमारे ग्रेजुएट्स होंगे, दे विल बी वर्किंग एथिकली, दे विल बी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, दे विल बी ऑनेस्ट, व्हाटएवर जो आपको लगता है कि दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू इनकलकेट इन देम। एंड फिफ्थ इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये 5 जो ब्रॉड कैटेगरीज है जिसमें पीईओ आपके बनेंगे, ठीक है। हर कैटेगरी में बनाना जरूरी नहीं है। एनबीए कहता है 3 से 5 पीईओ बनाने। मैं तो ये बताऊं जितने कम बने उतने अच्छा, मुसीबत से कम हो तो ज्यादा अच्छी रहती है क्योंकि अभी तो पीओस बनाने बोले हैं, अगले बार ये भी हो सकता है बोले पीओस को मेजर करिए कितना परसेंट अचीव किया है। एक्चुअली 2012 में फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया था, दे हैड आस्क्ड कि आप हर पीओस को मेजर करिए। आपने अगर लिखा है कि आपके जॉब में जाएंगे तो हाउ मेनी ऑफ देम हैव गॉन टू जॉब, हाउ मेनी ऑफ देम हैव गॉन टू हायर स्टडीज, हाउ मेनी हैव बिकम एंटरप्रेन्योर्स। तो मुसीबत जितनी छोटी उतना अच्छा है। पासपोर्ट स्टूडेंट से उतना कांटेक्ट कहाँ हो पाता है किसी भी कंपनी का? बहुत कमी है जो स्टूडेंट होते हैं बाद में आते बताते हैं, अदरवाइज कैसे? नहीं उनको नहीं बताना है, आप पता करना है। You have to keep the records. And अभी नहीं, 20 साल बाद भी हो सकता है, 20 साल बाद, अभी तक आप 20 साल रिकॉर्ड नहीं रखोगे और जब वो टाटा के एमडी बन गए बोलेंगे आप डोनेशन के लिए जाएंगे, तो क्यों डोनेशन रहेगा आपको? 20 साल तक तो बात नहीं की उससे। आपको हर साल का रिकॉर्ड रखना है। आपके जो एलुमनी है 3 से 5 साल का तो कंप्लीट रिकॉर्ड रखना है इसके लिए, एनबीए के लिए पूरा रिकॉर्ड रखना है। उसको अगर वो इस एलुमनी के साथ कांटेक्ट नहीं करेगा तो बाय चांस सपोज यू वांट टू अरेंज इंडस्ट्रियल विजिट, यू वांट टू अरेंज इंडस्ट्री एक्सपर्ट लेक्चर्स, फॉर एवरीथिंग दिस एलुमनी एंड दीस कॉन्टैक्ट्स आर रिक्वायर्ड। तो टीपीओ को उस समय से जो प्लेसमेंट हुआ वहां पे काम खत्म नहीं जाता, आगे तक रिकॉर्ड करना पड़ता है, वेयर दे आर मूविंग एंड वेयर दे आर जंपिंग, पूरा रिकॉर्ड रखना है। दिस इज द वर्क ऑफ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ व्हेनेवर यू नीड एनी हेल्प यू हैव टू कनेक्ट इट थ्रू टीपी। तो बच्चे आएंगे नहीं है 2 से 4 साल पहले तक आईआईटीज तक भी ना अपना प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं सो पाती। नहीं आप थोड़ा सा गलत है इस मामले में। आईआईटीज ने लेट 80s में एक एलुमनी ऑफिस बनाया था और उसका एक डीन बनाया था। दैट डीन विजिट्स यूएसए एवरी ईयर, वो रोड शो करते हैं वहां पे। मेरे को भी दिया, वहां पे जाके हम रह सकते हैं, वहां पे गेस्ट हाउस में, स्विमिंग पूल में भी जा सकते हैं वहां पे और फैसिलिटीज है ऊपर। ग्लोबलाइजेशन होने के बाद राजस्थान में नीचे आ रहा है तो सबको अपना आउटरीच बढ़ाना है। इनफैक्ट रीजन वाइज ऑफिस प्रोग्राम भी रखते हैं, जैसे मतलब मैं ऐसे हूँ तो हमारा एक ऑफिस प्रोग्राम बेंगलुरु में था, वहाँ पे उस टाइम जितने भी 5 to 10 years की अगर बनाई है तो उन्होंने प्रोग्राम रखा है कि आपको मीट करना है दिल्ली रीजन में, तो वहाँ पे कोलकाता रीजन, इनफैक्ट आउटओवर मतलब ओवरसीज में भी लोग रखते हैं। एक्चुअली ये एलुमनी कनेक्ट ना आपको बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। इसमें क्या है, हाँ यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी ग्रुप को मैंने छोड़ दी और हम भी अगर बताते हैं टीपीओ को रिस्पांसिबिलिटी है होल एंड सोल कि उसको पूरे कनेक्ट रखना है। और एनबीए टीम सबसे पहले टीपीओ को बुलाती है, इधर आता कितने प्लेसमेंट कितना एलुमनी कनेक्ट है बताओ, और हम एलुमनी से मिलते हैं क्या, बुलाओ सारे एलुमनी को हम बात करना चाहेंगे, तो उसमें से मान लीजिए 100 है तो उसमें से 20 को बुला के रखा तो प्लीज टॉक टू देम। तो अब ऐसा नहीं कि वो हमारे पास आएंगे बताते हैं तो ठीक नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता है, इज अवर टीपीओ पॉलिटेक्निक में नॉर्मली टीपीओ करता है। सभी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इट इज देयर इज एलुमनी ऑफिस, सेपरेट एलुमनी ऑफिस। मेजॉरिटी ऑल आईआईटीज हैव डीन एलुमनी व्हिच गोज ऑन। उनका मेन काम ये रहता है कि उनको कांटेक्ट करें, बिकॉज़ दे गेट लॉट्स ऑफ मनी आल्सो। वो क्या करते हैं इसके, आपके जैसे भोपाल में एक चैप्टर बना देंगे आईआईटी का, हर जगह चैप्टर्स बना देंगे, जिसमें कि बोस्टन में चैप्टर रहेगा, यूएस के हर मेजर सिटी में चैप्टर्स रहेगा, और सो मेनी आईआईटीज आर देयर एंड उनके रेगुलरली मीट कराते हैं। और दूसरा चीज क्या होता है, उससे एक बॉन्डिंग बहुत होती है। जैसे आईएएस में आप देखा होगा, एक आईएएस आप कितना भी कंपटीशन हो, दूसरे आईएएस को बहुत सपोर्ट करेगा, एक बॉन्डिंग बन जाती है। ऐसे आईआईटी में बॉन्डिंग बन जाती है। अगर मैं जस्ट ये बोलूंगा मैं आईआईटी बॉम्बे से हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे को सपोर्ट करने अपने आप आ जाते हैं। आपको याद होगा एक यूपी या बिहार में एक आईआईटीएन का पेट्रोल पंप पे डेथ हो गई थी, गोली मार दी गई थी, याद है? कहीं यूपी और बिहार में किसी उसमें हुई थी, हाँ बहुत साल 10-15 साल। होल ऑफ द आईआईटी सिस्टम स्टार्ट वर्क, ही वाज एन आईआईटीएन, एमबीए भी किया था और उसका डीलर नेटवर्क को देख रहा था, till president order a special inquiry for that because that whole network becomes active.
तो ये नेटवर्क हमारा है ही नहीं है, उसको बनाना बहुत जरूरी है। और इसको 3 से 5 साल मत रखिए, और जब 20 साल बाद है ना तो और ज्यादा वैल्यूएबल है आपके लिए, क्योंकि या दे विल बी इन टॉप पोजीशन। एंड आपके यहाँ के लेक्चर्स लेंगे, कंसल्टेंसी लेंगे, बहुत सारे, बहुत जितना फायदा इन्हें उनको नहीं होगा आपसे, आपके इंस्टीट्यूट को उनसे ज्यादा फायदा होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी मैं आपको बहुत फास्ट दिखा रहा हूँ, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं पीईओस, उसके बाद मैं डिप्लोमा के भी आपको दिखा देता हूँ। ये एक कंप्यूटर साइंस यूजी प्रोग्राम है यूसीएलए का, उनने 3 पीओस बनाए हैं। मेक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस टू, वो सारी चीज लिख दी उन्होंने कंप्यूटर के एरियाज, पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एंड एल्गोरिथम। तो ये उनका जॉब से रिलेटेड हो गया कि किस एरियाज में जॉब करेंगे। नेक्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेट अ सेंस ऑफ सोसाइटल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सेकंड वाला बताया ना 5 में से, कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल एथिक्स, वो सब आ जाएगा। तीसरा, नेक्स्ट, एंगेज इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूइंग एजुकेशन बताया था, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हायर स्टडीज, वो आ गया। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन टू परस्यू फ्लेक्सिबल कैरियर पास एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। क्योंकि ये डिग्री लेवल का है, तो ये आपको बोला कि बाद में हो सकता है ये यहाँ पे नहीं रहे, इलेक्ट्रिकल में या कंप्यूटर में नहीं रहे, दे मे गो टू मैनेजमेंट, दे मे गो टू समथिंग एल्स, दे मे बिकम एंटरप्रेन्योर, एनीथिंग। तो फ्लेक्सिबल कैरियर पाथ लिखा। तो हमें जब भी हम कोई स्टेटमेंट बनाएं, उसके बारे में अच्छे से विचार करें कि उसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, क्या क्या उनके ऑप्शन हो सकते हैं। ये ऑप्शन ग्रेजुएट के लिए, डिप्लोमा वाले के लिए इतने फ्लेक्सिबल कैरियर पाथ नहीं होंगे। नेक्स्ट, अभी एक मेरे को मिला था इंटरनेट पे, संजय गांधी पॉलिटेक्निक बेलारी, उसके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के हैं, मेरे को अच्छे लगे तो मैंने इसलिए यहाँ पे रख लिए। टू एक्सेल इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फील्ड एंड अप्लाई द नॉलेज इन डाइवर्स फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सेल करेंगे, और ये इलेक्ट्रिकल हर जगह यूज होती है, मैकेट्रॉनिक्स पता नहीं कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होती है आजकल, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक की चिप तो हर जगह रहती है। तो उसने बाकी में भी लिखा कि ये वहां पे भी कर पाएंगे डाइवर्स फील्ड में। दूसरा, promote students to pursue professional development, entrepreneurship and higher education for their career growth. तो entrepreneurship, higher education वो भी आ गया। Third, to create awareness on environmental issues, commitment toward professional ethics, so social response। आवाज नहीं आ रही, ज्यादा आ रही है? ठीक है। ये मैडम कुछ कान में करी थी, मेरे को लगा ये समझ में नहीं आएगा जी। अच्छा, मेरे को लगा कि बहुत जोर से बोल रहा हूँ। अभी आज वैसे ही बहुत ज्यादा तेज है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं पीईओस के जो पॉलिटेक्निक के लिए सूटेबल है। वो अपना फील्ड लिमिटेड रखा है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में रखा, और थोड़ा सा इसी इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन इन डाइवर्स फील्ड में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वी कम टू द फोर्थ पार्ट। इंस्टीट्यूट का विजन मिशन हो गया, डिपार्टमेंट का विजन मिशन हो गया, अब पीईओस ऑफ ए प्रोग्राम हो गए। अब उस प्रोग्राम के प्रोग्राम आउटकम्स एंड प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स। तो पहले हम जाते हैं प्रोग्राम आउटकम्स पे। तो प्रोग्राम आउटकम्स आर नैरोअर स्टेटमेंट कंपेयर टू प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, बट दे आर ब्रॉडर देन कोर्स आउटकम्स। तो ये मत सोचिए कि दे विल बी नैरोअर देन कोर्स आउटकम। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि नैरोअर लिखा हुआ है और ये नहीं लिखा किससे नैरोअर है। तो नैरोअर बताना जरूरी है कि विजन बहुत ब्रॉड होता है, मिशन पाथवेज होते हैं, पीयूज उससे भी कम होते हैं, और ये उससे भी नैरो होते हैं, और सीओज एकदम नैरो हो जाएंगे। उसके जबकि सेशन आउटकम लिखेंगे तो बिल्कुल नैरो टू दैट सेशन हो जाएंगे। ठीक है, पिन पॉइंट ये नैरो होते जाएंगे, ये पिन पॉइंटेड नहीं होते। दीज आर बेसिकली abilities. So program outcomes are narrow statement that describe what students are expected to know and be able to do upon graduation. ये NBA ने definition दी है। At the time of graduation, POs are 3 to 5 years later. तो जैसे ये अपना graduation complete करता है, and graduation का मतलब जैसे मैंने पहले बोला इसको graduate वाला मत समझिए, डिग्री वाला। डिप्लोमा भी पास कर रहा है तो डायरेक्ट डिप्लोमा ग्रेजुएट, ठीक है, वो डिग्री ग्रेजुएट, पोस्ट डिग्री ग्रेजुएट। तो डिप्लोमा जब पास कर रहा है तो वो क्या कर पाएगा, what outcomes he is going to demonstrate. Next, again these relate to all the three skills, knowledge and attitudes. Next, now I'll just list down all the 7 program outcomes for diploma engineering program. Basically these are specifications
जैसे अपन मोबाइल के स्पेसिफिकेशन होते हैं, कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशन होते हैं, ऑटोमोबाइल के, तो हमारे डिप्लोमा ग्रेजुएट के स्पेसिफिकेशन हैं कि जो मशीन से पास निकल के जाएगा ये 3 साल की मशीन से, तो उसके ये एट्रीब्यूट्स होंगे। नेक्स्ट 2-3 क्लिक कर देना, पूरा स्टेटमेंट है बस। तो फर्स्ट वन इज बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज। बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू इंजीनियरिंग नॉलेज। So apply knowledge of basic mathematics, science and engineering fundamentals and engineering specialization to solve the engineering problems. Mathematics में कोई problem नहीं है, science में कोई problem नहीं है, physics, chemistry की बात करें। Engineering fundamentals are like engineering mechanics, fluid mechanics, thermodynamics. They apply to multiple branches. ठीक? Engineering specialization क्या है? सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो ये मत सोचिए कि वहां पे नहीं आ रहा है। ये इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन जो आ रहा है तो आपका जो जिसमें डिप्लोमा कर रहे हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, व्हाटएवर, टेक्सटाइल, माइनिंग, तो दैट इज व्हाट इज इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन। तो ये आपका पूरा नॉलेज डोमेन वाला है। पर नॉलेज डोमेन पर अगर वर्ब देखेंगे क्या है? अप्लाई। तो ये हमसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि he should be able to state, he should be able to describe, he will be able to list advantages, disadvantages. He should be able to apply that knowledge, चाहे मैथमेटिक्स का हो तो सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस या जो भी टॉपिक हो उसका, साइंस का हो तो उसी लेवल पे होगा, अप्लाई लेवल पे। तो जब भी आप मैपिंग करेंगे अपने क्वेश्चंस की या कोर्स आउटकम की, स्ट्रॉन्गेस्ट मैपिंग तब होगी जब वो एप्लीकेशन लेवल पे होगा, और अदरवाइज आपकी मैपिंग वीक लेवल पे होगी जब आप रिमेंबर या अंडरस्टैंड लेवल पे लेके आएंगे। अब सब लोगों ने इंडक्शन फेज 1 एंड फेज 2 किया हुआ, तो आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मालूम है। तो रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड पे करेंगे, दैट विल ऑलवेज बी वीक। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हटाना है ये सारे क्वेश्चन, दे विल बी वीक। देयर शुड बी समथिंग व्हिच शुड डेमोंस्ट्रेट दैट ही इज एबल टू अप्लाई नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स टू सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। कई बार क्या होता है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे आज प्रधान साहब बता रहे थे को, अगर वो हमने कुछ एक बीम के उसमें दिया हुआ है उसमें हम कर नहीं पाते, तो देन ही इज नॉट एबल टू अप्लाई, ही इज एबल टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, पर टू सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट PO2 पूरा ले आना। सेकेंड इज प्रॉब्लम एनालिसिस। आप सोचो कि सब कुछ तो PO1 में आ गया, कोई चीज बची नहीं, सब कुछ सारे नॉलेज लेवल तो उसमें आ चुके हैं, तो इसमें क्या पढ़ेंगे फिर? यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज वेल डिफाइंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स यूजिंग कोडिफाइड स्टैंडर्ड मेथड। कोई भी प्रॉब्लम आपका मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं आता है। आपको पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, सल्फर डाइऑक्साइड लेवल क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड, सारे लेवल्स आपको मॉनिटर करने, एनालाइज करने पड़ेंगे। पर हम डिप्लोमा लेवल पे ये नहीं कह रहे कि बहुत बड़ी एनालिसिस करेगा। व्हाट ही विल बी डू एबल टू डू इज सॉल्व वेल डिफाइंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम इजीली डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, एंड जिनके लिए स्टैंडर्ड मेथड्स एग्जिस्ट करती है। ही विल नॉट हैव टू डिवाइस अ न्यू मेथड। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा डिप्लोमा इंजीनियर विल सॉल्व pollution problem of Delhi. That is basically for graduate engineers, because that is a complex engineering problem. पर simple problem है, ऑटोमोबाइल खराब हो गया है, उसमें आवाज आ रही है, तो now he will try to analyze कि आवाज क्यों आ रही है. There could be many reasons. I'm not a mechanical engineer, I will not be able to tell you. Pradhan will be able to tell you many reasons. Then he will be analyzed. There must be a codified procedure. आजकल तो मोस्टली कंप्यूटराइज्ड वो डायग्नोसिस आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल आ गया जिससे वो डायग्नोस कर लेते हैं। पहले तो जो अच्छे मैकेनिक होते थे आवाज सुन के बताते कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे उस तरीके की बात कि ही शुड बी एबल टू डू दोस। आजकल सारे इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स आ गए, उनके थ्रू वो कर सकता है। कोडिफाइड स्टैंडर्ड मेथड विच इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इंजीनियर्स आर बेसिकली सपोज टू डिजाइन। इंजीनियर वर्ड से इसी से बना है, इंजन से नहीं बना हुआ है, क्योंकि इंजीनियर तो बहुत पहले से थे। इंजन तो अभी 200 साल पहले आया है, तो कैसे बना होगा इंजन? इंजीनियर वर्ड, जब इंजन थे ही नहीं तो इंजीनियर कहां से बन गया? कोई आइडिया? इंजन वर्ड था ही नहीं पहले, था ही, बना ही नहीं था कोई इंजन।
प्रधान तो बोलेंगे इंजन तो अभी 200-250 साल पहले का है। हाँ, स्टीम इंजन, उसके पहले तो था ही नहीं इंजन। तो कहाँ से इंजीनियर तो बहुत पहले से थे, इंजीनियर वर्ड बहुत पुराना है। किस चीज से बना हुआ इंजन? ये बहुत व्हाट्सएप फॉरवर्ड में आता है, ये फेसबुक फॉरवर्ड में भी आता है, but it is true also. How the WhatsApp forward or Facebook forward are wrong, but this is true. एक इंजीनियरिंग INGUIN कर वर्ड होता है लैटिन में, उससे बनता है, यानी इंजीनियरिटी करके जो वर्ड सुना होगा, सम क्रिएटिविटी, सम सॉर्ट ऑफ कमिंग अप विद सॉल्यूशंस, तो उससे इंजीनियर बना। और इंजीनियर हमेशा से एग्जिस्ट करते आए। इंजीनियर इंजन वाले नहीं तो मैकेनिकल इंजीनियर बनते, सिविल वाले नहीं बनते, नहीं कि इंजीनियर, और तो इंजीनियर नहीं होता सिविल में कहीं पे। इंजीनियर गॉड विश्वकर्मा, या विश्वकर्मा, या गॉड, यस। इंजीनियर तो बस, और सिविल इंजीनियरिंग सबसे पुरानी इंजीनियरिंग है। हम लोग हमारे पास इंजीनियर बहुत पहले अभी इंजीनियर औद्योगिक क्रांति के बाद। या और आर्किटेक्ट भी बहुत पुराने थे। तो मैदानों को सुना होगा, बड़ी बड़ी वो बना, लंका बनाई थी, बहुत सारे उसने बनाए थे मैदानों में। तो आर्किटेक्ट भी बहुत पुराने, सिटी प्लानिंग और ये सब भी करते रहते। तो एक्चुअली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पुराने एग्जांपल्स को भी लाना चाहती है कि वी हैड दीज एग्जांपल्स बिफोर। एनीवे, सो डिप्लोमा में हम उतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो फुल डिजाइन खुद करेगा, बट ही शुड बी एबल टू डिजाइन सम पार्ट एंड ही शुड बी एबल टू डिजाइन हिज सुपीरियर इन डिजाइनिंग, क्योंकि इंजीनियर का काम ही है डिजाइन। तो डिजाइन सॉल्यूशंस फॉर वेल डिफाइंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स एंड असिस्ट विद डिजाइन ऑफ सिस्टम्स, कंपोनेंट एंड प्रोसेसेस टू मीट स्पेसिफाइड नीड। क्योंकि ये जो बड़े लेवल की चीजें हो गई, तो इंजीनियर या और भी पोस्ट ग्रेजुएट वाला कर रहा होगा, उनको हेल्प कर सके, बट जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स है उनके लिए सॉल्यूशन डिजाइन कर सके। और बहुत से बार कई लोग ये बोलते हैं कि डिजाइन का मतलब है बहुत हाई चीज, ऐसा नहीं है। जो वेल्डर होता है वो भी रॉड को जब डिजाइन करता है ना, उसको डिजाइन करनी पड़ती है कितनी कितनी रॉड चाहिए उसको। कारपेंटर होता है वो भी डिजाइन करता है, ये सोफे नए तरीके से डिजाइन करता है। तो कई बार हमें ये लगता है डिजाइन इज समथिंग बहुत ही हाई लेवल की चीज, ऐसी रिसर्च कर रहे हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, रिसर्च मीन समथिंग नोबेल प्राइज विनिंग, वैसा नहीं है। सिंपल कंज्यूमर रिसर्च इज ऑल्सो रिसर्च, सिंपल मार्केटिंग रिसर्च इज ऑल्सो रिसर्च। एनीवे, तो यहाँ दो चीजें, एक तो जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वेल डिफाइंड सॉल्यूशंस हैं, वो आना चाहिए, उसको करना चाहिए। जैसे कारपेंटर को डिजाइन करना चाहिए। इसलिए अगर आप ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स देखेंगे जो इंटरनेशनल इंजीनियरिंग अलायंस ने बनाए हैं, वो 3 लेवल पे बनाए। एक टेक्नीशियन लेवल बनाए, एक सुपरवाइजर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लेवल विच इज दिस वन, एंड एक इंजीनियर लेवल, तीनों लेवल बनाए। वो तीनों में मैथमेटिक्स चाहिए, वहां पे मैथमेटिक्स चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, कितनी वुड चाहिए, कितने बोल्ट चाहिए, कितने वो सब चाहिए, वो भी तो कैलकुलेट करने। तो मैथमेटिक्स उसको भी आती है। हमें लगता है कि जो ITI वाले को मैथमेटिक्स की क्या जरूरत, जो सब इंजीनियर्स वालों को चाहिए, इनको भी डिप्लोमा को मैथमेटिक्स की जरूरत है, पर डिफरेंट तरीके की। इनको फूरियर सीरीज और ये सब नहीं चाहिए। तो दो चीजें, डिजाइन सॉल्यूशन फॉर वेल डिफाइंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स एंड he should be able to assist his higher ups in designing systems, processes, component, etc. ठीक है। फोर्थ, इंजीनियरिंग टूल्स, एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा काम है उसके लिए। मेजॉरिटी काम यही होते हैं, सारी सीमेंट टेस्टिंग, जो भी टेस्टिंग है, फॉल्ट फाइंडिंग है, इंजीनियरिंग टूल्स यूज करने हैं। तो इंजीनियरिंग टूल्स, एक्सपेरिमेंटेशन, टेस्टिंग इज बहुत ज्यादा काम है डिप्लोमा इंजीनियर्स का। तो अप्लाई या सॉफ्टवेयर भी अप्लाई मॉडर्न इंजीनियरिंग टूल्स एंड एप्रोप्रिएट टेक्निक टू कंडक्ट स्टैंडर्ड टेस्ट एंड मेजरमेंट। जैसे डिप्लोमा सिविल का है, तो यू शुड बी एबल टू यूज टोटल स्टेशन सर्वेइंग के लिए जैसे टूल्स यूज होते हैं। अब हम मॉडर्न की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं सिर्फ चेन सर्वेइंग आ रही है उसको, तो टोटल स्टेशन भी आना जरूरी हो गया। डिजिटल ट्यूब लाइट भी यूज करना आना चाहिए। तो मॉडर्न इंजीनियरिंग टूल्स आने चाहिए, मॉडर्न सॉफ्टवेयर से वो भी यूज करने आने चाहिए। तो टूल्स एंड टेक्निक्स टू कंडक्ट स्टैंडर्ड टेस्ट एंड मेजरमेंट्स, ये 4 जो है आपके इंजीनियरिंग POs है, डायरेक्टली डीलिंग विद इंजीनियरिंग। रिमेनिंग 3 POs आर नॉन इंजीनियरिंग इन द सेंस, नेक्स्ट, they deal with soft skills and other things. तो इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस फॉर सोसाइटी, सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट एंड एथिक्स, इसमें पहले 4 PO सेपरेट होते थे, उन चारों को मर्ज करके ये बना दिया गया। अब पहले अभी भी इंजीनियरिंग में होते हैं, BE में ये 4 अलग अलग होते हैं, एक इंजीनियरिंग सोसाइटी, एक इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, एक एथिक्स
तो अप्लाई अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। अभी एक नोएडा में डिमोलिशन हुआ है, सभी जगह पेपर, तो वहाँ हाँ ट्विन टावर्स का डिमोलिशन हुआ, तो वहाँ पे आपको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी लगाना है, क्योंकि पास 9 मीटर दूर दूसरी बिल्डिंग है। तो आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं दैट शुड बी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, सस्टेनेबिलिटी। इसीलिए इलेक्ट्रिक कार्स पे ज्यादा जा रहे हैं, जो हमारी चीज बैटरीज हैं, जो हाइड्रोजन कार्स पे आ रहे हैं, बहुत सारी चीजों पे आ रहे हैं। तो एनवायरमेंट पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज हैज बिकम अ बिग ग्लोबल प्रॉब्लम। एंड फाइनली एथिक्स। अगर मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बोलूं किसी को एम्प्लॉय करने की, तो कौन सी होनी चाहिए? एथिक्स। क्योंकि जब हम किसी बाई को एम्प्लॉय नहीं करेंगे जो जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं होगा, एक वॉचमैन को एम्प्लॉय नहीं करेंगे जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं होगा, तो हाउ कैन वी मल्टीनेशनल एम्प्लॉय अनएथिकल इंजीनियर? तो एथिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट नेग्लेक्टेड। एंड इसके बहुत से एग्जांपल्स आने लगे, जो कि हमने बहुत सारे कॉर्पोरेट केसेस में सुने होंगे। इन्फोसिस में हुआ था, या ये फ्लिपकार्ट में जब उसने बेचा था स्टेक, उसने एक सिंगल डिस्क्लोजर नहीं किया था कि देयर वाज अ कंप्लेंट बाय वुमेन अगेंस्ट हिम, दैट वाज अ फॉल्स कंप्लेंट, इट वाज यानी उसकी इन्वेस्टिगेशन करके क्लोज कर दी गई थी, बट दैट थिंग वाज नॉट टोल्ड टू द पार्टनर्स। उसके कारण उसकी स्टेक उसको हटा दिया गया था। सो इवन स्मॉल आपका जो क्या कहना चाहिए मिस्टेक है इस तरीके की, अनएथिकल हो गई, उसमें कुछ भी गलती उसकी नहीं थी कुछ तरीके की, अनएथिकल था, छुपाना नहीं चाहिए था, उसको पता था ये सब था, but this matter has been sorted out, but because of that he lost lots of reputation. Next, now प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं, जैसे इंडिविजुअल एंड टीम वर्क जो सेपरेट भी होता था, कम्युनिकेशन एक सेपरेट भी होता था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंस एक सेपरेट भी होता था, वो तीनों को मर्ज करके एक नया पीओ बना दिया है। यूज इंजीनियरिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंडिविजुअली, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क है ना, इंडिविजुअली एज अ टीम मेंबर और लीडर टू मैनेज प्रोजेक्ट एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेट अबाउट वेल डिफाइंड इंजीनियरिंग एक्टिविटीज। अगर मैं सेकेंड मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक कहूं तो विच इज द सेकेंड मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक विच यू लुक फॉर इन इंजीनियर? एथिकल है, एथिकल है। वो एथिकल आपको सर्टिफिकेट मिल गया, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया उसका। वो हमारे यहाँ यही है, एथिक्स को वेरीफाई करने के लिए टेनेंट्स के लिए वो पुलिस वेरिफिकेशन, किसी को रखो तो पुलिस वेरिफिकेशन। हाँ वेरी गुड मैडम, कम्युनिकेशन की ही लगता है। चलिए टीम भी आ गया, लीडरशिप भी आ गया, और कोई? अब इसमें कोई विवाद हो सकता है, पर आई ट्रीट कम्युनिकेशन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आपको कम्युनिकेशन आता है देन यू कैन, कम्युनिकेशन आता है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग आता है तो यू कैन लर्न एवरीथिंग। बहुत से लोगों को फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई थी एडिसन की, बट इफ यू कुड कम्युनिकेट एंड कुड डू लाइफ लॉन्ग लर्निंग यू कैन लर्न एनीथिंग। एक्चुअली 2 केसेस होंगे, वॉरेन बफेट से पूछा गया था कि विच टाइप ऑफ पर्सन यू वुड लाइक टू एम्प्लॉय। ही सेड पर्सन शुड हैव इंटीग्रिटी, बेसिक एथिक्स, he should be hardworking. He should be hardworking. He should have intelligence. He should be hardworking, and he should have integrity. And if this third one is not there, then forget about the 2. क्योंकि अगर हमारे पास एथिक्स और इंटीग्रिटी नहीं है और इंटेलिजेंस और हार्डवर्क है, तो वी आर डेफिनेटली लाइकली टू बिकम अ न्यू नटवरलाल। बड़ा सा फ्रॉड करेंगे क्योंकि इंटेलिजेंस है, हार्डवर्क भी कर सकते हैं, पर एथिक्स है नहीं, तो बड़ा सा फ्रॉड ही करने वाले हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके इंटेलिजेंस काफी है, हार्ड वर्किंग है, एंड दे बिकम नटवरलाल। दूसरा, एक यूएस के सीनेटर से पूछा गया था कि व्हाट इज वन थिंग इफ गॉड टेक्स अवे एवरीथिंग फ्रॉम यू, व्हाट इज वन थिंग यू वुड लाइक, या जो आपके पास छोड़ दे? तो ही सेड कि माय पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, because through these public speaking I'll get back all my riches, wealth, everything, house, car, everything I'll get back. So communication is that most important. आप नरेंद्र मोदी और शशि, हाँ नहीं, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी और शशि थरूर दोनों इंजीनियर नहीं हैं। What is common in them?
वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये क्या वो डिफिकल्ट वर्ड यूज करते, पर कम्युनिकेशन स्किल्स इन जनरल वेरी गुड, पर वो डिफिकल्ट वर्ड ना यूज करते तो बहुत अच्छी रहेंगे। मोदी जी डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन most of the politicians will have very good communication skills. That's why they get so much of followers. So communication is second most important thing. Teamwork and leadership is also important, but I put them at fourth place. Third is lifelong learning. Anyway, next. And that is the last PO, which I consider after ethics, communication and lifelong learning. ये तीन है ना, तो आपको फिर कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं, you will be winner everywhere. आप इंजीनियरिंग में नहीं होगे लेकिन मार्केटिंग में होगे, कम्युनिकेशन अच्छा है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यू लर्न अबाउट ऑल प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम. सो एबिलिटी टू एनालाइज इंडिविजुअल नीड्स एंड एंगेज इन अपडेटिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सबके लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेक्नोलॉजी विल चेंज, एवरीथिंग विल चेंज. आज पाइथन है, कल कुछ दूसरा आ जाएगा, कोबरा आ जाएगा, तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही ना. तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट करो. नेक्स्ट. ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑल स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड देयर प्रोग्राम आउटकम. ऑल 7 प्रोग्राम आउटकम्स हैव बीन अचीव्ड इन एंटायरिटी. कंप्लीट पूरा का पूरा अचीव होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ कम्युनिकेशन हुआ, टीम वर्क नहीं हुआ, लीडरशिप नहीं हुई. सारे के सारे पीओज इन एंटायरिटी. एंटायरिटी का मतलब पूर्ण रूप से होने चाहिए. और एक इंटरेस्टिंग रिसर्च जो है कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने किया है कि 85% ऑफ योर फाइनल सक्सेस इज ड्यू टू योर पर्सनालिटी एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट, नेगोशिएट एंड लीड. एंड शॉकिंगली इट इज ओनली 15% ड्यू टू टेक्निकल नॉलेज. पर आई एम नॉट सेइंग कि आप पढ़ाइए मत टेक्निकल नॉलेज पढ़ाइए. इसे मैं बता रहा हूँ कि अदर थिंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. हो क्या रहा है, हम उनको मैथमेटिक्स अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रेंथ कॉम्पिटेंस अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, पर कम्युनिकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, टीम वर्क, लीडरशिप, ये सब पे पूरी एथिक्स सब पे नेग्लेक्ट करें, लाइफ नेग्लेक्ट कर देते, वो इंजीनियर तो अच्छे बन जाते पर आगे फाइनेंशियली सक्सेस नहीं होते. तो दे शुड बिकम फाइनेंशियली सक्सेसफुल आल्सो. नेक्स्ट. इस पीओ के लेवल पे और भी प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स भी होते हैं. एनबीए ने अभी जो लेटेस्ट रिवीजन है उसमें कोई जरूरी नहीं कि आपको बनाना पड़े. पहले मैंडेटरी था कि 2 से 4 आपको बनाने, इसलिए अब जो येलो में नीचे लिखा हुआ है प्रोग्राम शेल स्पेसिफाई 2 to 4 प्रोग्राम्स इफ एनी. अगर आप बनाए तो रखिए, पहले मैंडेटरी था तो आपको जरूरी नहीं है. नेक्स्ट. तो व्हाट आर प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम? प्रोग्राम आउटकम साथ बताई दी आपको, तो प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स क्या होंगे फिर? और साथ में करीब सब कुछ तो कवर हो गया. या वेरी गुड. उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसका फ्लेवर है, जो उसकी जैसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना हुआ है यहाँ पे, या उसको आपके करिकुलम में उस पर पर्टिकुलरली फोकस किया है. मैकेनिकल में भी, अपने ऑटोमोबाइल में भी फोकस किया हुआ है, जो जहाँ पे फोकस किया उस तरीके की चीजें बिकम्स द प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम. नेक्स्ट. विच आर स्पेसिफिक टू द प्रोग्राम, जो उसमें कवर नहीं की. नेक्स्ट करें. स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं, स्पेशल एम्फेसिस हो सकती है, स्पेशल फ्लेवर हो सकता है, स्पेशल एम्फेसिस इन टर्म्स ऑफ करिकुलम हो सकता है लेबोरेटरी के फॉर्म में. ओके, लेबोरेटरी बहुत अच्छी है उसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो हो सकती है. नेक्स्ट. नेक्स्ट. अब कुछ प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स हैं, ये इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही है, प्रधान साहब ने बनाए हुए. Analyze, design, evaluate mechanical components as were given specifications using engineering and design analysis of offshore tools. Operate and maintain thermal systems, including IC engines, refrigeration, air conditioning, and power generating systems. So basically, they are basically focusing on one particular area, one or few particular area, and they should be addressed by many courses. It should not be one course. Otherwise, they will become all course outcomes. They have to be addressed by many courses. Next, cousin. सर पीएसओ को भी पीओ में ये इंक्लूड क्यों नहीं किया जा सकता? हर इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम के अलग होंगे, आपके अलग हो सकते हैं, लातूर वाला अलग हो सकता है, बाहर में होगा पॉलिटेक्निक उसका अलग हो सकता है, जहानाबाद का अलग हो सकता है, पटना में 2 पॉलिटेक्निक है, दोनों के प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम फॉर द सेम प्रोग्राम कुड बी डिफरेंट. वन कुड बी सिविल में हाईवे पे ध्यान दे रहा हो
कोई इस पे हो सकता है हाई राइज बिल्डिंग पे ध्यान दे रहा हो. Depends on their strength, depends on their expertise, depends on their emphasis. डिमोलिशन में भी ध्यान दे रहा हूँ मैडम. आजकल डिमोलिशन ज्यादा है. कंस्ट्रक्शन मैनेजर का डिमोलिशन मैनेजमेंट विल बी न्यू स्पेशलाइजेशन नाउ, बिकॉज इतना सारा लोगों ने गलत सलत कंस्ट्रक्ट किया है. तो डिमोलिशन मैनेजमेंट डिप्लोमा जरूर आएगा. ये डिप्लोमा के हैं, मैंने एक लातूर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से उठाए. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिखा है मेंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ रोटेटिंग. पहले वाले वो थे इंजीनियरिंग के थे, बीई के. ये डिप्लोमा लेवल के. मेंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ रोटेटिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. मुझे मालूम नहीं है क्या होता है, पर होगा. ऐसे ही पावर सिस्टम के बारे में, मेंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम. तो बेसिकली ये फोकस करके ये दो चीजों पे हम फोकस करेंगे. नाउ वी कम टू द कोर्स आउटकम्स. कोर्स आउटकम्स के बारे में एक्सेप्ट फॉर डेफिनेशन वी विल डिस्कस एवरीथिंग टुमारो. एक सेपरेट सेशन है. कोर्स आउटकम का डेफिनेशन है कि हर कोर्स के कोर्स आउटकम्स होंगे. दे विल बी इन 3 to 6 नंबर्स. 3 से 6 हो सकते हैं. एंड they are basically what a student will be able to do at the end of the course. वो क्या क्या कर सकेगा, that is what is course outcome. And course outcome और program outcome, सारे course outcome अचीव हो जाएंगे सारे कोर्सेज के, तो प्रोग्राम आउटकम अचीव होंगे. अटेनमेंट में भी वहीं से कैलकुलेट करेंगे कोर्स आउटकम से ही प्रोग्राम आउटकम का. और इसके बारे में अभी आगे की जो स्लाइड्स में हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने शायद राणा साहब को ज्यादा ही टाइम खा लिया है. तो what I have done, just to conclude, we started with outcome based education की design and implementation की philosophy. We saw in design vision and mission of the institute was there. We discussed that. Then vision and mission of a department was there. We discussed that. Then we discussed about the program education objectives, which will be very specific to a program, not to department. Okay. हर प्रोग्राम के अलग होंगे. इसी तरीके से प्रोग्राम आउटकम्स which have been defined by NBA. There are 7 program outcomes. 4 of them are engineering outcomes and 3 of them are non-engineering program outcomes. And ये मत सोचिए non-engineering is unimportant. Non-engineering is probably more important. जैसे हमेशा बोलता हूँ कि जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम आउटकम है, दे आर फाउंडेशन. फाउंडेशन के बिना बिल्डिंग नहीं बन सकती. Unless you know those, you will not be called an engineer. But these are the superstructures जो ऊपर दिखते हैं. फाउंडेशन दिखता नहीं. ये कम्युनिकेशन दिखता है, लीडरशिप दिखती है, टीम वर्क दिखता है, इंजीनियरिंग नॉलेज दिखता नहीं किसी को. तो फाउंडेशन है, सुपरस्ट्रक्चर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. प्लीज रिमेंबर दैट. वर्क ऑन कम्युनिकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एथिक्स, टीम वर्क के 4 जो हैं उन पर वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है. हमें ऐसी लर्निंग अपॉर्चुनिटी करनी है कि ये प्रोग्राम आउटकम डेवलप हो. एंड प्रोग्राम आउटकम के सेम लेवल पे पीएसओस ऊपर या नीचे नहीं है. पीओस ऊपर है, 3 से 5 साल बाद अचीव होंगे. प्रोग्राम आउटकम एंड प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स आर द सेम लेवल. दे आर नॉट एट द लेवल ऑफ कोर्स आउटकम. ये भी मत सोचिए. दे आर एट द लेवल ऑफ प्रोग्राम आउटकम एंड प्रोग्राम आउटकम आर स्पेसिफिक आउटकम आर द सेम लेवल. आप ना भी लिखे तो चलेगा, पर अगर आपके यहाँ कोई स्पेशल एम्फेसिस है करिकुलम में या फैसिलिटीज वाइज तो लिखिए उसके बारे में, और वो आपके प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम में जाएंगे. नॉर्मली 2 to 4 बनाते हैं. And finally, every course will have its own course outcome, which is the abilities statement that describe what students are expected to know and be able to do as a result of learning experience at the end of the each course. तो हर कोर्स के सेपरेट कोर्स आउटकम्स होंगे. ठीक है. तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस पूरी प्रोसेस में, जितने टर्म्स हमने यूज किए, एक्रेडिटेशन से शुरू किया था. एक्रेडिटेशन क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस की प्रोसेस है, उसके ये सारी चीजें की थी. एनी क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी. लेकिन मैं प्रधान साहब को बोलता हूँ क्या नंबर्स फिक्स हैं कि पीओस पीएसओस इतने बनाने हैं या सीयू इतने बनाने, जैसे आपने बोला? नहीं, पीओ 7 फिक्स है, एनबीए ने बना दिया. फिक्स है वो तो. पीएसओ 0 भी बना सकते हैं, लेकिन इफ एनी 2 to 4 नॉर्मली लोग बनाते थे पहले से. तो 2 इसका मतलब 2 to 4 है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. अब तो उसने 0 भी लिख दिया, इफ एनी कर लिया है, तो 0 1 भी आ सकता है. तो 4 से ज्यादा मत बनाइए, मुसीबत छोटी छोटी रखिए. ये सब कंस्ट्रेंट है या मुसीबत होगी इसलिए नहीं बनाया या नहीं. क्या आप अगर आपके 7 पीओस हैं और आप 7 पीएसओस बनाएंगे तो एम्फेसिस कहाँ रहेगी? एम्फेसिस एक चीज में हो सकती है, 2 में हो सकती है, 3 में हो सकती है. पर अगर आप बोलोगे 10 में एम्फेसिस है तो आपकी एम्फेसिस नहीं हो, जनरल नॉलेज हो गया. स्पेशल नॉलेज किसी का इतना सारा नहीं हो सकता है. कि कोई हो सकता है ऑटोमोबाइल
आपके डिप्लोमा 3 साल में क्या ऑटोमोबाइल में भी कर सकते हो, थर्मल में भी कर सकते हो, डिजाइन में भी सब में कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते। 3 साल में आप कोई एक आध फील्ड ले सकते हो, उसमें कर सकते हो स्पेशलाइजेशन, है ना। इसलिए पीएसओ कम हो तो अच्छा है, दूसरी बात लेने अरे बनाएंगे तो आप उसको साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, ना करिकुलम में कर पाएंगे, ना टीचिंग लर्निंग में। इसलिए 2 हो तो ज्यादा अच्छा है, मैक्सिमम 2। वैसे एनबीए ने 4 तक अलाउ किए हैं। सिमिलरली कोर्स आउटकम 3 to 6 कहा गया है। नॉर्मली for the convenience we make course outcome unit wise. Normally you have 5 units in a course, 5 ही होते हैं ना, तो 5 बन जाएंगे। पर ये फिक्स नहीं है किसी भी तरीके से। बहुत से इंस्टीट्यूशन ने 3 ही बनाए और बहुत से इंस्टीट्यूशन ने 6-7 भी बनाए। तो 3 to 6 is also a guideline. 3 to 6 is not एनबीए कहीं पे भी आपको फोर्स नहीं करता कि कोर्स अटेनमेंट की यही मेथड है, यही आपको यूज करनी है, प्रोग्राम अटेनमेंट की या आपको विजन इसी मेथड से बनाना है, मिशन इसी मेथड से बना। कोई भी जगह स्टेक होल्डर कंसल्टेंसी की प्रोसेस यही होनी चाहिए या फीडबैक फॉर्म फैकल्टी का ये फिक्स्ड है। एनबीए इज कंप्लीटली फ्लेक्सिबल। ये आपको क्वालिटी एश्योरेंस करने के लिए जो जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं आप करिए, वो तो हम जज कर रहे हैं। वी आर ओनली जज, वी आर नॉट लाइक रेगुलेटर कि भाई ये रेशो चाहिए, ये सब चाहिए, ये सब नहीं बता रहे हैं आपको कि क्या करना है। आपको सब चीज़ें फ्रीडम नहीं, बस क्वालिटी की तरफ ध्यान दीजिए आप। यानी आपको फीडबैक लेना है, स्टूडेंट से लेना है, अलमनाई से लेना है, जितने तरीके के फीडबैक लेना है ले लीजिए। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज जो चीज़ फिजिबल हो, इकोनॉमिकल हो, वही करें। हम 50 तरीके के फीडबैक नहीं ले सकते। अगर प्रोग्राम आउटकम कैलकुलेट करें उससे बहुत डिफिकल्ट होगा। तो नॉर्मली 1 या 2 फीडबैक लेते हैं, ग्रेजुएट्स का फीडबैक लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अलमनाई या एम्प्लॉयर का फीडबैक ले लेते हैं। और इससे ज़्यादा लेना चाहेंगे पेरेंट्स का ले सकते हो, टीचर का भी ले सकते, बहुत तरीके से फीडबैक लिए सकते। बट देन यू आर बेसिकली वेस्टिंग योर टाइम, उससे क्वालिटी इंप्रूव नहीं होने वाली। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन किसी को है? नहीं है तो मैं प्रधान सबको विद अपॉलॉजीज बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। Nothing to apologize for any delay. Still we are unable to do it. So my session is going to be tomorrow. Tomorrow you are going to enjoy this session. Today you are not in a position to enjoy it. We are running it at 8. But before you proceed, COs का check करें. When you are going to check or assess COs, 1 महीना 2 महीना at the end of the month, जैसी कोर्स खत्म होगा करेंगे। And when you are going to assess the PO, program खत्म होने में PO check करें। Clear? पहला PO basic is and specific answer. दूसरा problem. बाकी सब सब मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, अब बिहारी में भी हिंदी होती है सब। This bench. Modern research, software equipment, that's great. 5th one, sir, society, engineering practice ethics. Society, sustainability, environment. 6th one, project management. Last one, inside project management, communication, also there are teams of